What is happening? Huh? टुंग टुंग दासा तेरे मेरा दिल विच लाउड बजदा टुंग 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 ना तेरे मेरा दिल विच लाउड बजदा टुंग 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 ना टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टुंग दा साड करदा Ladies and gentlemen, good morning to all of you. How are you people? Welcome back to the OBS and Gynae, the biggest subject, the game changer subject in the FMG sector. यही डिसाइड करता है कि आगे क्या है, आने वाला कल, जाने वाला कल। तो दोस्तों प्यार की बात ऐसी है, सुनो जरा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसला अलग अलग होता है। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आप ही लोग निखरने वाले हो 4 तारीख को, और कहने वाले हो आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। It's so good to see you all. So just a slight information I want to add today that on 29th, let me tell you, on 29th, 30 and 31, NLC Hyderabad. I am going to Hyderabad for 3 days free of cost offline chanting in NLC Hyderabad. If anyone want to join there with me for 3 days, please note this number. This is NLC Hyderabad number. So you guys can join there. Okay? Done, dana, done, dana, done, dana, done. So without any delay, because today class would be maybe from yesterday, it will be slight longer. So let's start with a menstrual cycle. So we are studying now gynecology, then we will going to the obstetrics, and then the game is done. By today evening sunset, I think we'll be done with the biggest subject of the FMG course, that is your obs and gynae, obs and gynae. Dandana, 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 dan. Let's talk about the course only now. Now, your menstrual cycle is starting from the hypothalamus. Be with me, write your notebook and everything. अब तुम्हारा menstrual cycle start कहाँ से हुआ? कहाँ से start हुआ? ऊपर से नीचे से? ना जी ना, कहाँ start हुआ? Hypothalamus. कहाँ से start हुआ? Hypothalamus. And hypothalamus ने क्या secrete करा? GnRH. GnRH ने क्या करा? GnRH acts on the anterior pituitary. तो ध्यान से सुना इस चीज को. Starting from the hypothalamus, secrete the GnRH. GnRH act on the anterior pituitary, and anterior pituitary secretes something known as hi-fi term FSH, follicular stimulating hormones. Now these hormones will act on ovarian granulosa cell, and it will secrete your estrogen,
FSH will secrete estrogen. तो 14 दिन से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या आएगा? ईस्ट्रोजन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ईस्ट्रोजन आएगा। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन? क्या करेंगे ईस्ट्रोजन का? पिएंगे इसको, क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन्स डू प्रोलिफरेशन। ईस्ट्रोजन उसके यूट्रस के अंदर क्या कराता है? प्रोलिफरेशन कराता है। क्या कराता है? प्रोलिफरेशन। और ईस्ट्रोजन आया कहां से? ईस्ट्रोजन आया तुम्हारे ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल से। किसने सिक्रीट कराया? एफएसएच ने। एफएसएच कहां से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। डंडना डंडना डंडना। नाउ देयर विल बी सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होगी। अगर ईस्ट्रोजन उसको एक्सीड करेगा तो वो निकलना बंद हो जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी पूरी लाइफ टाइम प्रोलिफरेशन होती रहेगी, वो तो कैंसर बन जाएगा। नहीं, देयर इज सर्टेन लिमिट एंड द लिमिट इज डिसाइडेड फॉर द ईस्ट्रोजन इज 150 to 200 picogram. The limit is 150 to 200 picogram. It will give dash feedback, which is very important. Sir, your positive feedback is given by estrogen. 1 marks MCQ. Menstrual cycle के अंदर who is menstrual cycle is 200% क्वेश्चन, और नीचे जो डायग्राम आएगी I will tell you what is going to come in your exam. ठीक है guys, remember estrogen level is more than 150 to 200 picogram. It will give a MCQ feedback. It will give a MCQ feedback, and the MCQ feedback is known as positive feedback. To whom? To the luteinizing hormone. Now sir, LH will come. पॉजिटिव फीडबैक टू LH की LH भैया आ जाओ, ईस्ट्रोजन बहुत हो गया। अब LH भैया वहां से आएंगे। LH and FSH both are coming from the pituitary gland. तो FSH आएगा तो ईस्ट्रोजन निकलेगा, LH आएगा तो ओवुलेशन होगा। LH आएगा तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओवुलेशन किसने करवाई? LH ने कराई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कराई। एंड ऑन विच डे? इट इज योर डे 14। इट इज योर डे 14। और डे 14 पे क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन से एक तो बन गया तुम्हारा ओवम, और साथ में बन गई क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus luteum is also known as yellow body. अब this corpus luteum plays major role in the secretion of progesterone. तो तुमने देखा ईस्ट्रोजन कहां से निकला? ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल। किसने निकलवाया? एफएसएच ने। अब की बार प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकला? कॉर्पस ल्यूटियम से। कहां से निकला? कॉर्पस ल्यूटियम। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सर? इट मेक्स द यूट्रस सिक्रीटरी। इट मेक्स द यूट्रस सिक्रीटरी। तो कौन प्रोलिफरेशन कराता है? दैट इज योर ईस्ट्रोजन। कौन जो है सिक्रेटरी बनाता है? योर आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन की भी तो कोई लिमिट होगी कि उस लिमिट के बाद प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। सो उसकी लिमिट है 3 नैनोग्राम पर ml। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन फीडबैक देता है वो है नेगेटिव फीडबैक। ईस्ट्रोजन का फीडबैक था पॉजिटिव फीडबैक, प्रोजेस्टेरॉन का फीडबैक था नेगेटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है और ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। डंडना डंडना डन। जब इसने नेगेटिव फीडबैक दिया, अब LH का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही LH का लेवल कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होता है एंडोमेट्रियल शेडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पीरियड आ गए। दुन 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 दुन। Now this image is 200% exam question. This image is 200% exam question. Please keep on answering the things. ठीक है? Please keep on answering the things in the group itself so that we can learn side by, because now just 6 days are left and we already know the topic. This is just a quick revision going on, quick chanting going on. Ki things we know, we just have to mug up them very strongly. ठीक है जी? Now this graph is being asked repeatedly. Now I told you estrogen. ईस्ट्रोजन कौन से फीडबैक से आता है? ईस्ट्रोजन आता है पॉजिटिव फीडबैक। किससे आता है? पॉजिटिव। और प्रोजेस्टेरॉन कौन से फीडबैक से आता है? नेगेटिव फीडबैक। किससे आता है? नेगेटिव फीडबैक से आता है। फिर मैंने बोला था LH की वजह से होती है ओवुलेशन, और कौन से डे पे होती है? डे 14। कौन से डे पे? डे 14। दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन। ओवुलेशन की वजह से मैंने बोला था एक ओवम बनेगा, एक बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम विच इज आल्सो नोन एज येलो बॉडी। ये रही तुम्हारी येलो बॉडी, और इसने क्या बनाया? प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाया? प्रोजेस्टेरॉन। और एफएसएच ने क्या बनाया? ईस्ट्रोजन। एफएसएच की वजह से ईस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन। डंडना 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 डन। चलो जी,
these are the already done topics, so let's start with the very first thing, that is your physiology of menstruation. Please come on to this topic directly. Physiology of menstruation, sir. सर सम फीमेल कंप्लेन ऑफ मिड साइकिल पेन ड्यू टू रप्चर ऑफ फॉलिकल. क्या होता है, जैसे ही फॉलिकल जो है डे 14th आता है तो रप्चर होता है फॉलिकल, फॉलिकल रप्चर होता है. रप्चर होने की वजह से कुछ पेन होती है. फीमेल्स नो दिस थिंग बेटर, ठीक है. एंड दैट पेन इज नोन एज मिटल स्पर्स पेन. दैट पेन इज नोन एज मिटल स्पर्स पेन, मिटल स्पर पेन, ठीक है. Some female complain of mid-cycle pain due to rupture of the follicle. Follicle rupture हुआ क्योंकि क्या था, LH सर्ज हुई. LH ने क्या कराया था, फॉलिकल को रप्चर करवाया था, ओवुलेशन करवाई थी. एंड दैट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल. वो क्या है, बड़ी नॉर्मल सी बात है अगर मिड साइकिल पे रप्चर होने की वजह पेन हो रहा है. नाउ सम फीमेल कंप्लेन ऑफ मिड साइकिल ब्लीडिंग, सर. That is also very very normal and it is known as Mittel's blood or Mittel spotting. Mittel blood or Mittel spotting, Mittel's blood or Mittel spotting. तो दर्द हुई तो Mittel Schmerz pain, अगर ब्लीडिंग हुई तो Mittel blood, Mittel spotting, ठीक है जी. Now spotting of blood in spotting of blood in per vagina due to rupture of perivascular vessel, it is also known as mitral spotting and mitral blood. Same thing है, कोई भी bleeding हो रही है mid cycle में, that is mitral blood or mitral spotting. अगर दर्द हो रहा है तो that is not a mitral Schmerz pain, that is known as mitral spur pain. Now question has been asked in your FMG exam, what is a treatment? सर व्हाट इज अ ट्रीटमेंट? स्ट्रेट वे ट्रीटमेंट इज रीअश्योरेंस. उस फीमेल को क्या बोलना है, कोई बात नहीं जी, सब ठीक है, ये होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, यू विल रिकवर, यू विल रिकवर. डन डना डन डना डन. गिव मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Dandana, 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 done. Let's talk about the natural estrogen. सर आपको पता है नेचुरल एस्ट्रोजन 4 तरीके के होते हैं. कितने होते हैं? 4 तरीके के होते हैं. सबसे पहले बड़े सिंपल है, कितना ट्रिकी नाम है, देखो ईस्ट्रा 1 E1, ईस्ट्रा 1 E1. उसके बाद ईस्ट्रा डायोल 2, डायोल 2, ट्रायोल 3, टेट्रोल 4, टेट्रोल 4, टेट्रोल 4. ये बने कहां से? ईस्ट्रा 1, डायोल, ट्रायोल, tetrol. Estra 1 is from the aromatization. Estra 1 is from the aromatization. Estradiol, sir. Estradiol कहां से बना? ईटू बोला ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल्स. याद आया तुम्हें? FSH acts on ovarian granulosa cell और वहां से ईस्ट्राडायोल निकलता था. और ईस्ट्राडायोल का कौन सा फीडबैक होता था? पॉजिटिव फीडबैक होता था. डंडना 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 डन. देन ईस्ट्रा ट्रायोल एंड टेट्रोल कहां से निकले? ट्रायोल एंड टेट्रोल प्लेसेंटा से निकले. कहां से निकले सर? प्लेसेंटा से निकले. डंडना डंडना डन. Let's talk about the disorders of the menstruation. Let's talk about the disorders of the menstruation. It's very very important. So disorder of menstruation very simple. ध्यान से सुनना. ओलिगोमेनोरिया. ओलिगो मतलब डिले, ओलिगो, ओलिगो मतलब डिलेड मेंसेस. मतलब क्या? डिलेड मेंसेस. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ जो डिसाइड हुई है वो हुई है 21 to 35 डेज. सर क्या डिसाइड हुई है? 21 to 35 days and on an average we are taking it as a 28 days. On an average we are taking it as a 28 days. So guys remember, if it is less than 21 then it is also a problem. If it is more than 35 then it is also a problem. अब बोला ओलिगो मतलब लंबा चल गया भाई मामला. Menses start after the 35 days. Menses start after the 35 days. And most common cause क्या? Oligopolycystically. PCOD, oligo PCOD, oligo PCOD, OD, 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 PCOD. ओलिगोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज PCOD, PCOD. और menstrual cycle coming after 35 days, that is ओलिगोमेनोरिया, delayed menses. डंडरा डंडरा डन. फिर है पॉली, फिर है पॉली. पहले ही आ गया पॉली मतलब पहले ही आ गया, पहले ही आ गया. पॉली 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 मतलब पहले ही आ गया, पहले ही. अर्ली फ्रीक्वेंट मेंसेस क्या है? अर्ली फ्रीक्वेंट मेंसेस. नाउ मेंसेस बिफोर 21, क्योंकि नॉर्मल ड्यूरेशन क्या सिखाई थी? 21 to 35 डेज. 21 से पहले आ गया मतलब पहले ही आ गया.
35 के बाद आया ओलिगो, लॉन्ग लॉन्ग ओलिगो पीसीओडी। अब पहले ही आ गया तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या, पहले पी से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या कॉज है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या कॉज है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उसके बाद आया मेनोरेजिया, मन भर के। तो कैसे कहा था, कैसे खाना खाया तुमने, मन भर के खाना खाया, मेनोरेजिया। एक्सेसिव मेंसेस, क्या है, एक्सेसिव मेंसेस। नाउ amount of blood loss, what is the normal amount of blood loss, it is 20 to 80 ml per episode. Per episode it is very normal. 2 to 8 days bleeding is also normal. Now what is happening here, sir, can you please relate it with here? Amount of blood loss more than 80 ml, amount of blood loss more than 80 ml, and duration of blood loss would be your 8 days, more than 8 days. 80 ml blood loss 8 दिनों से ज्यादा तक हुआ, ये है हमारा मन भर के साइकिल आया। अब की बार मेनोरेजिया, क्या बोलोगे इसको, मेनोरेजिया। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में तुमने सुना ही होगा कि जो फीमेल सिगरेट पीती हैं उनको नहीं होते क्या, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। डंडना 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 डन। ये फ्लर्ट करने का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है डॉक्टर, ये जो है टेंडर की साइट नहीं है, ये डॉक्टर पारिस की चैंटिंग चल रही है प्लीज। मैन मेट्रोरेजिया, सी मेट्रो कैसे चलती है, इरेगुलर चलती है। मेट्रो कैसे चलती है, इरेगुलर चलती है, कभी ऊपर चलती है, कभी जमीन के अंदर चलती है, कभी ऊपर चलती है, कभी जमीन के अंदर चलती है। मेट्रोरेजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। इतना ही प्यार आता है, कभी पर्सनली तो किसी ने मैसेज करा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेक आईडी बना बना के दिल खोलते रहते हैं, है ना, ये टेंडर की साइट हो रखी है ना, ये पर्सनली एक नहीं आता मैसेज, यहाँ सारा प्यार इसी लाइव चैट पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही टपकता है ना। चलो, मेट्रोरेजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। देन मेनोमेट्रोरेजिया, मन भर के इरेगुलर साइकिल आए। मेनोमेट्रोरेजिया क्या, मन भर के इरेगुलर साइकिल आए भाई। एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल, एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल, एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल। हाँ हाँ, लौंडे होते हैं ये मजे लेने वाले, मुझे पता है। मेनोमेट्रोरेजिया, एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग, एक्सेसिव इको ना इयोनिज्म की बीमारी है। इयोनिज्म होता है लड़कियों के कपड़े पहनने, उनके जैसी हरकतें करनी। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अल्सरेटेड फाइब्रॉइड पॉलिप। मोस्ट कॉमन कॉज है अल्सरेटेड फाइब्रॉइड पॉलिप, फाइब्रॉइड पॉलिप, ठीक है, अल्सरेटेड फाइब्रॉइड पॉलिप, पॉलिप 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 पॉलिप। मेनोमेट्रोरेजिया, मन भर के इरेगुलर साइकिल आए। अब सुनो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक सब क्लियर हो गया। दोस्तों, प्राइमरी डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया मींस painful menses. Dysmenorrhea mean pain during the menses. All of the female are suffering from this, almost all. Dysmenorrhea is pain during the menses without organic pelvic pathology. सर विदाउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है तो मीन्स समथिंग जेनेटिक वुड बी देयर। तो देखो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, मोस्ट कॉमन कॉज इज जेनेटिक। मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक की वजह से होता था प्राइमरी डिसमेनोरिया। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ऑल द फीमेल्स नोज दिस, मेफ्टपास, मेफ्टपास, मेफनेमिक एसिड, ठीक है, मैंने कभी खरीदा नहीं इसलिए मुझे नाम पता नहीं है। मेफनेमिक एसिड, कुछ मेफ्टपास करके आता है कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद याद रखना, डिसमेनोरिया हो गया प्राइमरी वाला खत्म। उसके बाद आया सेकेंडरी डिसमेनोरिया, क्या है, सेकेंडरी डिसमेनोरिया। नाउ ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजी इज प्रेजेंट एंड मोस्ट कॉमन वुड बी योर एंडोमेट्रियोसिस। Sir, what is endometriosis? Endometriosis mean a presence of active endometrial tissue away from the uterus. Uterus में नहीं है, कहीं और है. This is known as endometriosis, and that is a secondary dysmenorrhea cause. Most common cause of secondary dysmenorrhea. मेफ्टाल्स पास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब पता है तुम्हें। नाची बॉयज खरीद के लेके जाते थे, अच्छे बॉयफ्रेंड बनते थे वहां पे, ठीक है। सो प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब नो पेल्विक पैथोलॉजी,
पैथोलॉजी नहीं है तो जेनेटिक कॉज होगा, और इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी योर मैफनामिक एसिड. देन कमिंग सेकेंडरी, देयर इज अ पेल्विक पैथोलॉजी, एंड व्हाट इज अ पेल्विक पैथोलॉजी? दैट्स endometriosis. That is endometriosis. Individually we will be studying about the endometriosis after 1-2 hours. ना एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर एक क्लासिफिकेशन होती है, उसका नाम क्या है? पाम क्वाइन क्लासिफिकेशन. क्या नाम है? पाम क्वाइन क्लासिफिकेशन. ठीक है, पाम क्वाइन क्लासिफिकेशन, पाम क्वाइन क्लासिफिकेशन. बोनी भाई कह रहे हैं फिर भी सबका कट गया, कितनी दवाइयां ला ला के दी फिर भी सबका कट गया, क्या बात है. पाम क्वाइन क्या है? पाम क्वाइन. तो दोस्तों पाम क्वाइन याद करो. P से polyp, it's not parus, it's P for polyp. A से adenomyosis, L से leiomyoma, leiomyoma is a fibroid. Malignancy, then coming to malignancy, then coming to coagulation disorder, then coming to ovulation disorder, endometrial pathology, iatrogenic, and not yet. But just remember the palm coin classification is for what? Palm coin classification is for what? It is for the dysfunctional uterine, abnormal uterine bleeding. Done, done, done. Now coming to the Wolffian duct. देखो वॉल्फ कौन होता है? आदमी. वॉल्फ कौन होता है? आदमी. वॉल्फ कौन है? मैन. तो वॉल्फियन डक्ट किसके पार्ट बनाती है? मैन के पार्ट बनाती है. वॉल्फियन डक्ट किसके मान बनाती है? मैन के पार्ट बनाती है. तो क्या क्या बनाती है? एपिडाइडेमिस. इसको मैंने ऐसे याद कराया था. ई VS क्या है? EVS. E2 टाइम्स है, E2VS कर दो. EVS नाम का एक सब्जेक्ट आता था CBSE में. CBSE बोर्ड में जो पढ़े हुए हैं, EVS नाम का सब्जेक्ट आता था, है ना? तो याद रखना EVS क्या है? EVS. ठीक है. EVS कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो, E से एपिडाइडेमिस, फिर E से इजैकुलेटरी डक्ट, एपिडाइडेमिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, और V से वास्ट डिफरेंस, एंड S से साइमाइनल वेसिकल. S से साइमाइनल वेसिकल. ठीक है, साइमाइनल वेसिकल. वॉल्फियन डक्ट E2VS. E से एपिडाइडेमिस, E से इजैकुलेटरी डक्ट, V से वास्ट डिफरेंसेस, एंड S से साइमाइनल वेसिकल. डंडना. वॉल्फ कौन है? आदमी. तो वॉल्फ आदमियों के अंदर स्ट्रक्चर बनाता है. निमोनिक वॉस E2VS. डना. मुलेरियन डक्ट की बात करेंगे. मुलायम कौन होती है? मुलायम फीमेल. मुलायम कौन होती है? फीमेल होती है दोस्तों. फीमेल मुलायम होती है, इसीलिए ये किसके अंदर पार्ट बनाएगा? फीमेल के अंदर पार्ट बनाएगा. और फीमेल वाला क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि ऑब्सगाइनी वाला जो एग्जामिनर है वो मेल है. पक्की बात है, मेल है. दोस्तों क्या क्या बनाया मुलेरियन डक्ट ने? क्या क्या बनाया? सबसे पहले बनाया यूट्रस. यूट्रस बनाया. सर्विक्स बनाई फेलोपियन ट्यूब. यूट्रस बनाया, सर्विक्स बनाई फेलोपियन ट्यूब, और बनाना भूल गया वजाइना का ऊपर वाला लूप, नीचे वाला लूप. यूट्रस बनाया, सर्विक्स बनाया फेलोपियन ट्यूब, और बनाना भूल गया वजाइना का नीचे वाला लूप. तो याद रखना, अपर 3/4 ऑफ वजाइना इज मेड, बट लोअर 1/4 of vagina is not made by Mullerian duct. It is not made by Mullerian duct. तो किसने बनाया इसको? दिस इज योर एग्जामिनर्स क्वेश्चन. ये किसने बनाया? नीचे वाला वजाइना किसने बनाया? ये बनाया तुम्हारा यूरोजेनाइटल साइनस. किसने बनाया? यूरोजेनाइटल साइनस. तो दोस्तों देखो, यूट्रस बनाया, सर्विक्स बनाई फेलोपियन ट्यूब. यूट्रस बनाया, सर्विक्स बनाई फेलोपियन ट्यूब, और बनाना भूल गया नीचे वाला लूप. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. नाउ रेमिनेंट्स ऑफ वॉल्फियन डक्ट. वॉल्फियन डक्ट के रेमिनेंट्स क्या क्या है? क्या वो छोड़ के जाता है? दोस्तों याद रखना, गार्टनर्स डक्ट एंड पैराथ्रोन डक्ट. Gartner duct and paraothron duct. Gartner duct and parathron duct. Done. Let's talk about the next topic, that is amenorrhea. Amenorrhea means something. Bolo tararara. Amenorrhea. Amenorrhea means absence of menses. Amenorrhea means absence of बला हो. सही आता है. थैंक यू टू द यूरोजेनाइटल साइनस. अगर यूरोजेनाइटल साइनस से होता तो फिर नीचे का मामला नहीं बन पाता. तो तुम्हारे सोच लो क्या ही जिंदगी होती. जीना इसी का नाम है, हाथों की मेहनत का काम है. दोस्तों
दोस्तों दोस्तों दोस्तों वापस आओ, नॉटी नॉटी बॉयज एंड नॉटी नॉटी गर्ल्स ऑन बोर्ड राइट नाउ विद मी। एमनोरिया मींस एब्सेंट ऑफ मेंसेस। अब मेंसेस गायब हो गए भाई, जादू हो गया। ऐसा जादू डाला रे। अच्छा पारस भाई क्या करते हैं देखो, हम एक एक ना नेचुरल प्रोडक्ट होता है, उसका नाम है सिलिकॉन। तो हम सिलिकॉन की वैली जाते, वहां से सिलिकॉन की बनावट बनवा के लाते। तो एमनोरिया एक तो होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्या है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्या है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। दोस्तों फिजियोलॉजिकल एमनोरिया की बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया मतलब नेचुरली कब प्रेग्नेंट क्या कहते हैं साइकिल नहीं आता है। तुम्हें पता है क्या प्रेगनेंसी में साइकिल आते हैं? नहीं आते। तो प्रेगनेंसी नंबर 1 हो गया। लैक्टेशन में आते कि नहीं आते? नहीं आते। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना दोस्तों, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना इज वेरी नॉर्मल। लैक्टेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना ये भी वेरी नॉर्मल। बट एग्जामिनर की बुद्धि ठनकी हुई थी, उसने पूछा क्यों? क्यों आखिर क्यों? प्रेगनेंसी इज ड्यू टू एचसीजी। प्रेगनेंसी इज ड्यू टू एचसीजी एंड इट सपोर्ट कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रेगनेंसी में साइकिल क्यों नहीं आते? अगर कोई पूछे प्रेगनेंसी में साइकिल क्यों नहीं आते, सर योर आंसर इज इट इज ड्यू टू एचसीजी। इट इज ड्यू टू एचसीजी। इट इज ड्यू टू एचसीजी। नाउ व्हाट अबाउट द लैक्टेशन? In lactation it is due to prolactin. Lactation it is due to prolactin. Hmm. In lactation दोस्तों पैथोलॉजिकल एमनोरिया की बात कर लेते हैं। सो पैथोलॉजिकल एमनोरिया दो तरीके के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एमनोरिया वी आर हैविंग सर? दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज प्राइमरी एमनोरिया, मींस शी नेवर मेंस्ट्रुएटेड इन हर लाइफ। प्राइमरी एमनोरिया मतलब कभी मेंसेस आए नहीं, दैट इज नोन एज प्राइमरी एमनोरिया। और सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब है पहले मेंसेस आ रहे थे, अब आना बंद हो गए। कहां गए? सोचो सोचो, पूछेंगे अभी एक एक करके पूछेंगे, इन सबसे पूछेंगे कहां गए हमारे मेंसेस, क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या दिक्कत है क्या नहीं, सब पूछेंगे। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से। पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या सुनेंगे? पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो पैथोलॉजिकल एमनोरिया वी हैव टू स्टडी प्राइमरी एमनोरिया फर्स्ट, शी हैज नेवर menstruated, and secondary it is absence of menses for more than 3 cycles in previously normally menstruating female 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 female। चल उसके बाद है कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया मतलब शी हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड। अब हम किसकी बात करेंगे? शी हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड, शी हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड। If you will spam my chat, then I have a full right to do something very nicely. Please don't. A strict suggestion to all of you, please don't do this spamming thing. I'll feel offended and this live streaming can also be stopped. समझ में आ गई? मेरे वैसे ही गले में इतना दर्द हो रहा है, ठीक है, इतने दिन से मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, कल भी 12 घंटे ली थी, आज भी ली, अभी हैदराबाद जा रहा हूँ, फिर वहाँ चैंटिंग कराऊंगा। डोंट चैलेंज मी। कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया एट द एंडोमेट्रियल लेवल, इट इज नंबर 1। सबसे पहले हम एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे। सबसे पहले किसके पास जाएंगे? एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे, ठीक है। So we are going to talk about the
cause of primary amenorrhea at the endometrial level and endometrial level. Remember, there's a Mullerian agenesis, means Mullerian duct has never developed his parts. If parts are absent, how the periods will come? If the parts are absent, how the periods will come? Remember, absence of Mullerian duct. Absent of Mullerian duct can have her own biological baby via in vitro fertilization. Means यूट्रस वेजाइना ये सारी चीजें क्या थी? एब्सेंट थी. ये सारी चीजें क्या थी? एब्सेंट थी. ओवरीज वर फाइन. ओवरीज वर, क्योंकि मुलेरियन डक्ट ने ओवरी नहीं बनाई. मुलेरियन डक्ट ने ओवरी नहीं बनाई. सर्विक्स बनाया, यूट्रस बनाया, बनाई फेलोपियन ट्यूब, पर क्या नहीं बनाया? नीचे का लूप, वजाइना का नीचे का लूप. तो याद रखना, can have her own biological baby via in vitro fertilization and surrogacy but normal secondary sexual character. अब तुम्हें इससे शादी करनी है तो वेजाइना चाहिए कि नहीं चाहिए? वेजाइना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, वेजाइना चाहिए. एंड द ट्रीटमेंट इज वेजाइनोप्लास्टी. एंड द ट्रीटमेंट इज वेजाइनोप्लास्टी. Then coming to the Rokitansky-Kuster-Meyer-Hasse syndrome. Rokitansky-Kuster-Meyer-Hasse syndrome के अंदर याद रखना तुम्हारा क्या आता है? रीनल एनोमली मोस्ट कॉमन कौन सी है? हॉर्सशू किडनी. एंड स्पाइनल एनोमली वुड बी योर मोस्ट कॉमन सर्विकल स्पाइन, वुड बी योर सर्विकल स्पाइन. सर, देन कमिंग टू द एंड्रोजन insensitivity. This is very important. This is very, very important. Remember, androgen insensitivity tumor or testicular feminization tumor. Testicular feminization tumor. Remember guys, this testicular feminization syndrome, female genitalia, external genitalia कैसा है? फीमेल, बट अंदर के सारे कैरेक्टर कैसे हैं? मेल वाले. At the time of birth, it is mistaken as a female child. It is mistaken as a female child and testosterone levels are high. Pubic hairs are absent. देखो होता क्या है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में धोखा होता है. तो क्या बोलता है? धोखा 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 धोखा. कैसे धोखा हुआ? धोखा कैसे हुआ? बाहर से दिखता था फीमेल वाला, पर जैसे ही अंदर घुसे तो मेल था. तो 2 in 1 कॉम्बो हो गया. ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? दिस धोखा इज नोन एज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. इसके अंदर हाउ यू विल लाइक क्लिनिकली डिफरेंशिएट between the Mullerian agenesis and testicular feminization syndrome, sir. Sir, Mullerian genesis means that is female only, but testicular feminization syndrome means that is male. That is male. So best method of clinical differentiation would be your absence of axillary hairs and pubic hair. तो कैसे अगर कोई पेशेंट आएगा तो क्या कराओगे? कोई पेशेंट आएगा तो क्या कराओगे भाई? पेशेंट आएगा तो क्या कराओगे? पेशेंट आएगा तो क्या करोगे? बोला ये उठाओ और वो दिखाओ. क्या कर रहा है? ये उठाओ और वो दिखाओ. अगर दोनों जगह हेयर एब्सेंट हुए तो मतलब क्या है? ये दिस इज अ केस ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम और इट इज आल्सो नोन एज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. इट इज आल्सो नोन एज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. टेस्टिकुलर ठीक है, फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. देन कमिंग टू द best method. Now clinical method तो I told you, ठीक है, we are studying primary amenorrhea at endometrium level. And remember the best method of differentiation between the Mullerian agenesis and testicular feminization syndrome is a karyotyping. अब मैंने तुम्हें बता दिया कि मुलेरियन एजेनेसिस में वो लड़की थी, इसीलिए कैरियोटाइपिंग क्या होगी? 46XX 46XX. और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन में बाहर से तो लड़की लगती थी पर अंदर से क्या था? लड़का. तो कैरियोटाइपिंग तो अंदर वाली होगी ना दोस्तों, इसीलिए उसकी कैरियोटाइपिंग क्या? 46XY 46XY. डंडना 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 डन. समझ आ गया भाई? क्लियर हो गया सबको? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन एंड एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी के बारे बीच में डिफरेंस क्लियर चल गया. Mullerian agenesis and testicular feminization syndrome के बीच में difference is clear to all of you. डंडना डंडना डन. ऐसे और ऐसे देखना है. एब्सेंट मतलब समझ जाओ ना. एंडोमेट्री लेवल इज डंडना डंडना डन. नाउ कमिंग टू सर ओवेरियन लेवल. नाउ प्राइमरी एमेनोरिया मींस शी नेवर मेंस्ट्रुएटेड. उसके कभी मेंसेस नहीं आए. तो मैं ओवरीज के पास चला गया. मैंने कहा ओवरी मेरी बात सुनो. उसने बोला क्या डॉक्टर साहब? मैंने कहा ये मेंसेस क्यों नहीं आ रहे भाई इसमें कन्या में? उसने कहा जी डॉक्टर साहब पहली बात तो सुनो, टर्नर सिंड्रोम.
मैंने कहा है टर्नर सिंड्रोम। फिर उसने बोला डॉक्टर साहब दूसरी बात सुनो, प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस। मैंने कहा है। उसके बाद उसने बोला तीसरी भी सुनो। मैंने कहा बाय बाय बाय, स्वेयर सिंड्रोम। तो कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। तो दोस्तों ओवेरियन लेवल पे क्या क्या है? ओवेरियन लेवल पे क्या है दोस्तों? देखो एक एक बार और मैं अगर बताने लगूं, इफ आई टेल यू रिपीटेड टाइम्स ना, दिस इज जस्ट 6 days लेफ्ट फॉर एग्जाम। To understand properly concept you have to go through at least 50-60 hours class। मैं इसको 6-7-8 घंटे में कंप्लीट कराऊंगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। जो चीज नहीं आती है ना उसको छोड़ देना होता है। इस टाइम धक्का मुक्की नहीं करनी। जो चीज नहीं आती, तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम था इसको अच्छे से पढ़ने का, ठीक है? अभी 6 दिन में जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, उसको याद करते रहो बस। कैसे हुआ नहीं मतलब। मैंने बोला टर्नर सिंड्रोम में 45 एक्सो होता है तो होता, खत्म बात। कैसे होता, क्यों होता, नहीं पता और नहीं जानना, बस इतना होता है। इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, चलो। ठीक है जी। तो क्या है ओवेरियन लेवल? In NLC app, I have taken all chanting in English. Now it is my comfort. Hindi English is my comfort. I will take in that only. ठीक है? No point of discussion. Even some guys abused on like wall. ठीक है? If you can't respect, doesn't matter. I don't care. At ovarian level, Turner syndrome 45XO. It is your 45XO. Turner syndrome 45XO. Streaky ovaries and very thin endometrium. Sticky ovaries and very thin endometrium, and height is reduced। height is reduced and management क्या दोगे? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि ओवरीज के ऊपर दिक्कत है, ओवरीज के ऊपर यू हैव टू गिव अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज योर ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। मैंने हिंदी में, इट इज हिंदी इंग्लिश ओनली। वन गाय वाज देयर, ही अब्यूज ऑन लाइक माय चैनल, है ना? मैं शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। मेरे को इतनी खुंदक चढ़ी वो देखते ही, मतलब ठीक है, इट्स मी हु विल डिसाइड। ओवेरियन लेवल, टर्नर सिंड्रोम, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश ओनली। 45 एक्सो को मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्या? 45 एक्सो, स्ट्रीकी ओवरीज, थिन एंडोमेट्रियम, reduce height, management is estrogen plus progesterone, pure gonadal genesis 46XX, hypoplastic thin uterus and endometrium, hypoplastic thin uterus and endometrium, and the height is normal, and the height is very normal, height is very normal। ठीक है, height is very normal in the pure gonadal dysgenesis 46XX, hypoplastic thin uterus and इसकी हाइट क्या है? नॉर्मल हाइट है। प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस की हाइट कैसी है? नॉर्मल। बट टर्नर सिंड्रोम में हाइट छोटी है। दोनों की कैरियोटाइपिंग अलग अलग। प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस इट इज 46XX, बट योर टर्नर सिंड्रोम इट इज 45XO। देन कमिंग टू द स्वेयर सिंड्रोम, ठीक है, स्वेयर सिंड्रोम इट इज 46XY, Swyer syndrome it is 46XY, testes are streaky। Now XY is there, management now you have to decide to make it boy or a girl। Making a boy is something a difficult job, so let's make her girl। So you will do a vaginoplasty at marriage and orchidectomy as soon, because you have to cut the testes, then only you are able to make her female, then only you are able to make her female। And why you have to do the orchidectomy, sir? Just because there is a risk of development of germ cell layer tumor, there is a risk of development of germ cell layer tumor। Management Swyer syndrome 46XY, testis streaky, vaginoplasty at the marriage, orchidectomy as soon as diagnosed, because the risk factor of germ cell would be layer tumor। Estrogen progesterone is required because the problem is happening at the ovarian level। Now I am going to the pituitary and asking pituitary why the period has never happened। Now pituitary replied me, there is a craniopharyngioma, this is a tumor of pituitary which secretes the prolactin। And remember what is happening here? Here is happening headache, diminished weaken and bitemporal heminopia।
Bitemporal hemianopia we have discussed just in the last class only. It is happening mostly because there is a lesion on the optic chiasma. There is a lesion on the optic chiasma, and for the diagnosis of the craniopharyngioma, we are going with the investigation known as MRI. And management, the drug of choice would be your cabergoline. The drug of choice would be your cabergoline. If cabergoline is not giving you any response, sir, you will go for the surgery. Done, 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 done. Now at the hypothalamus level, I went to hypothalamus to ask why never periods are coming, because I'm talking about the pathological primary amenorrhea. He said there is a defect in CAL1 gene. He said there is a defect in CAL1 gene. Because of defect in CAL1 gene, in ENT we have studied Kallman syndrome. We have studied what? Kallman syndrome. We have studied Kallman syndrome. Because of Kallman syndrome, there is a primary amenorrhea plus anosmia. Now what management you will give at the hypothalamus? In the beginning of lecture only, I have taught you hypothalamus is secreting GnRH. Now in the management you will give what? GnRH. Now you have to make your hypothalamus active. There are two ways how you can give GnRH. One is pulsatile, one is continuous. If you give pulsatile, it will become active. If you give continuous, it will be suppressed. It will be suppressed. Continuous GnRH will suppress the activity, and pulsatile GnRH will increase the activity. Now, cause of secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea means she was previously menstruating, but now menstruation is not happening. So for this, I went to endometrium first. I asked endometrium, what is the problem, guy? What is happening? Why the periods are not coming from the last 3 times? So endometrium replied me, Dr. Saab, there is a Ashervan syndrome. Dr. Saab, there is a Ashervan syndrome. What is Ashervan syndrome? Fibrous band which inhibit the proliferation of the endometrium. There are fibrous band which inhibit the proliferation of the endometrium, which inhibit the endometrium for the proliferation, and there is no menses. There is no menses because of the endometrium proliferation. ठीक है जी? Most common cause of hypomenorrhea is your Asherman syndrome. Most common cause of hypomenorrhea. What is hypomenorrhea? Hypomenorrhea means less cycles. Hypomenorrhea means less cycle, and that is your Asherman syndrome. And the treatment is hysteroscopic adisholysis. Treatment is hysteroscopic adisholysis. Now I went to ovary to ask what is the problem, why the menses are not coming now. Ovary replied me, Dr. Saab, she is suffering from PCOD, polycystic ovarian disease, which we are going to study today in brief detail, which is your exam question 110%. Now I went to the pituitary and asked pituitary, what is the problem? Why the period is not coming? And the pituitary replied me, sir, there is a pituitary tumor. Sir, there is a pituitary tumor and there is a Sheehan syndrome. There is a Sheehan syndrome. What is Sheehan syndrome? Postpartum necrosis of the anterior pituitary due to severe postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage, because of postpartum hemorrhage, there is a postpartum necrosis. That is why now periods are not coming. Now pituitary level, you will give what treatment, sir? You will give the substitution of all hormones like estrogen and progesterone. Done, done, done. Now I went to the hypothalamus. Now I went to the hypothalamus and I asked hypothalamus, sir, what is the problem? Hypothalamus replied me, I am in stress and there is an excessive weight loss. Because of excessive weight loss and because of excessive stress, now my periods are not coming. Now what treatment I will give to that patient? Gain the weight and release the stress. Stress releasing exercise like yoga se hoga. Now the next topic is congenital malformation of the uterus. Recent NEET PG exam question. See, if the uterine, see all these x-rays all like on the internet itself, I've just drawn. Just do favor to yourself. Uterine didelphys or double uterus. Why this double uterus is forming? Sir, if Mullerian duct do not fuse at all, these two Mullerian duct, if they do not fuse at all, there will be double uterus, double vagina. Two uterus, two vagina, uterine didelphys or double uterus. Then coming to the bicornuate uterus or heart-shaped uterus. Bicornuate uterus or heart-shaped uterus. Most commonly क्या होता है, तुम्हारा upper lobe is not fused. Mullerian duct fuse partially. Mullerian duct fuse partially, and for this you have to do hysteroscopic meteroplasty.
Septate uterus is the most common type of uterus, and recent NEET PG exam question, there is a septum present, and that septum is a pathological septum, and the treatment is hysteroscopic resection of the septum. Hysteroscopic resection of the septum, pathological septum present, and the treatment is hysteroscopy. You have to put the hysteroscope and you have to resect the septum from there. Now coming to the unicornuate uterus or banana or a penis shaped uterus. Why this banana shape or penis shape is coming from? It is coming when only one Mullerian duct develops. It is coming when only one Mullerian duct develops. Then only this banana shape or penis shaped uterus is coming. Fifth type of uterus would be arcuate uterus or flat top uterus. Dome of uterus do not develop. Dome of uterus is not developed. That is why that uterus is very much flat. And diagnosis of congenital malformation of uterus. If you have to know that uterus is perfect or not perfect, sir, the best investigation would be your laparoscopy plus hysteroscopy, then the MRI. MRI is superior. Who is MRI is superior? It is your laparoscopy and hysteroscopy. But the most commonly used one, which is cost effective, that is your transvaginal sonogram. That is your transvaginal sonogram. Please leave this cornification index. And the next topic we are going to discuss is polycystic ovarian disease or Stevens-Leventhal syndrome. What is happening in PCOD, sir? Insulin resistance is there. Because of insulin resistance, there is an increase in insulin. There is an increase in insulin, and because of increase in insulin, there is an increase in free androgen. There is an increase in free androgen, and because of free androgen, there will be follicular growth which is less. Follicular growth is less, and what will be the size of follicles in the PCOD, sir? Remember, the size of PCOD follicle would be 2 to 9 mm. The size would be 2 to 9 mm. And what about the symptoms, sir? Sir, what about the symptom? Tendency toward the obesity. This PCOD woman will be obese. There will be acne hirsutism. There will be acne on the face, and there will be androgenic alopecia. Means there will be hair fall. Androgenic alopecia, already I have discussed in the dermatology chanting. Oligomenorrhea means less menses. Amenorrhea, menses are gone. Menses are gone. And this PCOD can also lead to infertility. Now, what is a long-term complication? What is a long-term complication, sir? Sir, remember, let me teach you something. Long-term complication क्या क्या हो सकता है? Recent NEET PG exam question, metabolic X syndrome. Metabolic X syndrome, what is happening? PCOD, diabetes, obesity and hypertension. Metabolic X syndrome highly important. इसके अंदर जो NEET PG का question था, that was asked that acanthosis nigricans is seen in which disease? That is seen in PCOD, and PCOD comes under metabolic X syndrome. So metabolic X syndrome, PCOD, diabetes, obesity, hypertension. Also long-term complication is your diabetic mellitus and stroke. Now there is one criteria which is used for the diagnosis of your PCOD, sir. That is your Rotterdam criteria. That is your Rotterdam criteria. Rotterdam criteria, menstrual dysfunction is there, hyperandrogenism is there, USG feature plays major role, and number of follicle is more than 12. Number of follicle is more than 10, and size of follicle is 2 to 9 mm. Size of follicle is 2 to 9 mm, and ovarian volume is more than 10 cc. Ovarian volume is more than 10 cc, and appearance which you are going to see would be question on 4th of June. That is necklace or string of pearl sign on USG. Necklace or string of pearl sign on USG you are going to see on 4th of June. This is 1 marks question of yours. If we talk about the E2, E1, estradiol and estra-1 ratio, what say it is a normal ratio, sir? E2, E1 ratio normal, it is 2:1. But in PCOD patient, this will be reverse, and E2, E1 ratio will become your 1:2. E2, E1 ratio will become 1:2. What about the FSH and LH ratio, sir? FSH ratio and LH ratio, normally it is 2:1, but in PCOD it will become 1:2. In PCOD it will become what? 1:2. 1:2. Now coming to the normal androgen levels. What is the normal androgen level? It is up to 70 nanogram per ml. Normal androgen level would be 17 nanogram per ml, but PCOD, as we already discussed, because of insulin resistance, there is an increase in androgen levels. And what is the normal androgen? What is the increased androgen level in the PCOD? That will be your 70 to 150 nanogram per ml. Now coming to the treatment part.
First thing is you have to decrease the obesity and you have to decrease the stress. If still no response is coming, you will give the drug of choice metformin. You will give the metformin. For the androgenic features, like there is a hair fall and everything, you have to give OCPs, oral combined pills. You have to go for the OCPs, and that is your oral combined pill. Management of oligo or amenorrhea. अगर बिल्कुल periods are not coming, then you will go for the progesterone withdrawal bleeding followed by OCPs for the 3 cycle. Sir, progesterone, when the level is less, the menses will come. That is how artificially from the outside you are giving the progesterone, and because of this progesterone, now bleeding will happen, and then you have to give OCPs for at least 3 cycle. What is the management of infertility? This drug of choice was recent exam question and would be question on your exam on 4th of June. The drug of choice would be letrozole. The drug of choice would be letrozole. If letrozole is not given in the option, the second option you will mark would be clomiphene citrate. Let's talk about the puberty. Puberty, remember the stage of appearance of secondary sexual characteristics. There are 2 types. Precautious puberty means puberty is coming earlier, and precocious menarche is also mean now your secondary sexual characteristics are coming little earlier. It is very simple. Precautious puberty means secondary sexual characteristics develop before 8 years. If your secondary sexual characteristics are coming before 8 years, this is known as precocious puberty, and the most common cause is idiopathic. That means I don't know, idiopathic. What you have to give, sir? I have told you 2 types of GnRH therapy you can give. One is continuous, one is pulsal type. Now you have to suppress, because it is coming earlier, you don't want it earlier, and you will suppress this. And to suppress this, you will give a continuous GnRH. You will give what? Continuous GnRH. This is a treatment of precocious puberty. Sir, your next topic would be your precocious menarche. That means your menses are beginning before 10 years. Most common cause would be idiopathic. इसका भी idiopathic है, and the management is again continuous GnRH, because you have to suppress the hypothalamus pituitary ovarian axis. Now coming to the delayed puberty. Delayed puberty means something if your secondary sexual characteristics do not develop till 13 years. Now 13-year age has been passed and still secondary sexual characteristics are not coming. This is a point to worry. In this case, I will do what? Most common cause. It is your idiopathic constitutional delay. But remember, the treatment is pulsatile. Pulsatile, if you are giving, means you are making your HPO axis active, and you need to activate it because you need the menses now. You need menses. That is why you will give a pulsatile GnRH. You will give what? Pulsatile GnRH. Done. Then coming to the vaginitis. Vaginitis, number 1 is trichomonal vaginitis. Number 1 vaginitis is trichomonal vaginitis. It is caused by a bacteria known as Trichomonas vaginalis. It is caused by bacteria known as Trichomonas vaginalis, and the symptom is greenish and yellow vaginal discharge. Symptom is greenish yellow vaginal discharge, itching plus dysuria. Now greenish yellow discharge. Guys, remember greenish discharge. Yesterday in the STD kit, we have studied green color kit is given. Now coming to the signs are strawberry vagina or the angry looking vagina. Strawberry looking vagina or angry looking vagina. It is also known by a term known as colpitis macularis. It is also known by a term known as colpitis macularis. Investigation of choice would be saline microscopy. Investigation of choice will be saline microscopy, and the management would be metronidazole. Now, sir, your male partner need to be treated or not need to be treated? Yes, it need to be treated in the case of trichomonal vaginitis. Why it need to be treated? Because it is a sexually transmitted disease. So number 1 topic, trichomonal vaginitis. Done. Candidal vaginitis. Candidal vaginitis is caused by Candida albicans. It is caused by Candida albicans. And what is happening now from the vagina? Already in the microbiology chanting we have discussed. Symptom is curdy white cottage cheese like vaginal discharge. Curdy white cottage cheese like vaginal discharge, plus there is an intense itching plus dysuria. Investigation of choice is again same, sir. It is your saline microscopy. What the management you are giving over here is fluconazole. The management you are giving here is fluconazole. And what about the male treatment? You need to treat or not? Yes, you need to treat if your male partner is symptomatic. Then coming chlamydial vaginitis. Chlamydial vaginitis is most deadly vaginitis, most deadly STD, and chlamydial vaginitis is caused by Chlamydia trachomatis. It is caused by Chlamydia trachomatis, and remember the diagnosis will be PCR. PCR NAT, you can give nucleic acid amplification test.
Gold standard would be McCoy or HeLa cell culture. Gold standard would be McCoy or HeLa cell culture. Management would be azithromycin plus contact tracing because it is deadly STD. It is deadly STD. Bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis. No Doderlin bacilli. There is no Doderlin bacilli. Because of no Doderlin bacilli, the pH of vagina will increase. Increase vaginal pH, if I say, means now your vaginal pH is basic. The vaginal pH is basic. And remember, microorganisms start entering the vagina. Microorganisms start entering the vagina. And which microorganism will come to the vagina? Garden vagina. Gardnerella vagina. It is your Gardnerella vagina. So bacterial vaginosis, most common organism would be your Gardnerella vagina. And remember Amsel's criteria. Which criteria? Amsel's criteria. The pH is more than 4.5. The pH is more than 4.5 and there is a thin grayish white discharge. This test is highly important. Whiff test or amine test. In the Amsel's criteria, remember there is a whiff test or amine test. What is happening? 10% QH mount. 10% QH mount mein you have to put the vaginal discharge. You have to put what? Vaginal discharge. You have to put the vaginal discharge. Plus, if you will put, you will feel what? Fishy odor. Machli jaisi badbu aati hai. And the clue cells, remember, it is more than 20%. Clue cells are more than 20%. Clue cells are more than 20%. And the gold standard would be Nugent score. Gold standard would be Nugent score, and Nugent score is more than 7%. More than 7. Nugent score more than 7. Nugent score more than 7, and the management is metronidazole. Management is metronidazole. In this bacterial vaginosis, remember, male partner treatment is not required because it is not a STD. It is not a STD. Done, done. The next topic we are going to start is pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease, inflammation of the uterus, fallopian tube, ovaries and peritoneum. Inflammation of the uterus, fallopian tube, ovaries and peritoneum. Most common route of pelvic inflammatory disease would be your sexual intercourse. And organism, if I talk about, that is your chlamydia and Neisseria, which enters along the sperm. Chlamydia and Neisseria, which enters along the sperm. So guys, remember, organism would be chlamydia and Neisseria, which enters inside along the sperm. This is ascending infection. Pelvic inflammatory disease is a ascending infection. Remember, endometriosis and endosalpingitis. End part you have to remember in the acute PID. I'm talking about the acute PID. In acute PID, you will see pyosalpinx. What you will see? Pyosalpinx. What we will see? Pyosalpinx is seen in acute PID, and most common causes intercourse. And most common organism would be chlamydia and Neisseria. Most common symptom would be lower abdominal pain. And investigation of choice would be laparoscope. For the treatment of acute PID, there is a treatment that is minimum criteria, additional criteria, and definitive criteria. Minimum criteria is cervical tenderness, cervical motion tenderness, uterine tenderness, adnexal tenderness is coming under minimum criteria. Additional criteria, temperature bhi बढ़ रहा है, WBC is also increasing, CRP is also increasing, and there is a mucopurulent discharge. Temperature more than 101.6 degree Fahrenheit. WBC is increased, your C-reactive proteins are increased, your mucopurulent discharge is increased. Then coming to the definitive criteria. In the definitive criteria of PID, you will go for the endometrial biopsy. Then you will go to the USG, then you will go to the laparoscopy. In the case of PID, laparoscopy is a gold standard investigation. And on laparoscopy, what you will see? You will see a trickling of pus via fimbrial end on the fallopian tube. Guys, remember, trickling of the pus by fimbrial ends of the fallopian tube.
Management, if I talk about the acute PID management, as person, if it is coming to you on the OPD basis treatment is different, and inpatient emergency someone is coming, then the treatment is different. Sir, your OPD patient, injection ceftriaxone plus tab doxy and metronidazole. Remember, doxy and metronidazole is a tablet and injection is ceftriaxone. The injection is ceftriaxone. And remember, in the inpatient department, IV clindamycin plus IV gentamicin. Clinda and genta you have to give in the emergency. Chronic PID. Now we'll talk about the chronic PID. Guys, remember, chronic PID, most common symptom would be pain in abdomen on the movements due to stretching of the fibrous band. Because it is a chronic condition now, and because of inflammation, there is a fibrosis. There is very famous syndrome known as Fitz-Hugh-Curtis syndrome. Sir, Fitz-Hugh-Curtis syndrome, remember, this syndrome is coming under chronic PID, not acute PID. Acute PID में था पायोसाल्फिंग, यहाँ पे है क्या कहते हैं, Fitz-Hugh-Curtis syndrome. क्या है? Fitz-Hugh-Curtis, pain in the right hypochondrium due to stretching of the perihepatic adhesion. Pain in the right hypochondrium due to the stretching of perihepatic adhesion, and the USG feature would be hydrosalpinx. Sir, in the chronic PID you will see hydrosalpinx, but in the acute PID you will see the pyosalpinx, your pyosalpinx. Also important thing, cogwheel sign or spoke of wheel or bead on string appearance is also seen in chronic PID. Fitz-Hugh-Curtis syndrome, chronic PID. Investigation of choice would be laparoscopy, violent string sign. That is your violent string sign. Image-based question has been asked in the exam. Complication of PID, if I talk about, if fallopian tube is partially blocked, then there will be ectopic pregnancy. If it is completely blocked, then it is infertility. I need some break for 10-15 minutes, please. See you at 10:15. 1:15. 1:15, I'll be back.
So see who is with me right now. Hello, bhai. Hello, Our hello. mentor. Yes. क्या बात है? So everything is fine now. So I think today is a very big day. हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, तो ऐसे छोटे Yes. मोटे शायद कांटों को हमें इग्नोर करना चाहिए. Love you all, love you all, love you all. So I was taking my class offline revision in NLC. Okay. So whatever we do it 100%. Okay. So from the first day we started classes. Yeah. And it's just the Continue last as it week is happening. we are working hard. Okay. And yes, we are given everyone everything they wanted. People who are in Telegram, they got. People who are coming for YouTube, they got. People who enrolled NLC, they are also getting. So we do our level best. Okay. And yes, there'll always be ups and downs, so we have to be ready for that. Okay, clear. And I'm again telling you that if you're coming to a session, okay, like when you go to temple, so don't keep anything in your heart, or maybe a mosque or maybe a church. ठीक है, तो वहां आप जा रहे हो, तो वैसे when you enter a classroom, whether it's online, you should always have positivity, nothing negative. If negative, don't go. Just one line. Okay, like I am going to watch one, I am going to study, one I am just going to criticize. If I'm going to criticize, then obviously there's no point going. Okay, and if I'm there to study, just study. All teachers, they give something useful. Even a clock which is not working stop tells right time 2 times a day. So even the worst of teacher will at least teach you something, and he is one of the best, right now, academic person who's giving the कहते हैं ना content in such a precise, concise and easy to remember way. मतलब डिलीवरी में तो मतलब there is nobody who's above डॉक्टर पारस राय. ठीक है, कंटेंट डिलीवरी के अंदर. सो आई थिंक कि इससे अच्छी क्लास तो हो नहीं सकती. सो दैट इज व्हाई आई रियली विश ऑल ऑफ यू कम, अटेंड, learn, and that will be the best possible thing. Okay, and if there's some issue, obviously, like you go to some place, the chair is not comfortable, maybe the mic is not hearing, so that we have to ignore. We are Indians. You ignore the pollution, the cows on the road, the dung, you ignore the corruption. तो ये भी इग्नोर करो अगर कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है. ठीक है, सो ट्राई टू इग्नोर एंड लुक एट पॉजिटिव. इंडियंस का क्या है, दे आर नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी फुल, दे आर 99% ग्लास फुल, 1% एम्प्टी. दे स्टिल 1% नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. सो डोंट बी पैसिमिस्टिक. ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक. द एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स स्टडी एंड मेक इट our best possible attempt and clear it with best possible marks. Okay, चलो भाई पारा शुरू कर दो. चलो, let's start guys. It's very important time right now for us, very crucial, and we all want you all will pass, and next time you come to Delhi to us, शील्ड एंड सर्टिफिकेट्स आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बड़े सेक्सी से हमने शील्ड और सर्टिफिकेट बनाए तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे इंतजार में हम दिल्ली में वी आर सिटिंग हियर जस्ट टू वेलकम यू गाइस. जस्ट गेट पास एंड इवन इफ पॉसिबल ब्रिंग योर पेरेंट्स. वी वुड लव टू मीट देम एंड ग्रीट देम कि फाइनली डॉक्टर आपने दे दिया कंट्री को. यू हैव गिवन अ डॉक्टर. एक्चुअली दे आल्सो प्लेड वेरी मेजर रोल इन योर डिग्री. Yes. Their sacrifices, your sacrifices, and little bit of our effort is making that journey possible actually. So this is the biggest happiness for all of us. So without any delay, chalo, let's start with the endometriosis. Sir has session offline NLC pharmacology session is taking. So he'll be coming in between, joining us, motivating us, our mentor. So guys, remember, this is how we have to start right now. So everything is fine now, under control. I'm back. Endometriosis. What is endometriosis? It is presence of active endometrial tissue, a glands outside, active glands outside the uterus. Sir, कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो अब यूट्रस में नहीं है, तो कहां गया, कहीं और चला गया. कहां जा सकता है, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट. But risk factor would be, sir, your risk factor would be genetics. Risk factor would be genetic KRAS gene mutation. That is your KRAS gene mutation. ठीक है, KRAS gene mutation. And reproductive age would be 30 to 40 years. Reproductive age would be 30 to 40 years. And also for the endometriosis, risk factor would be your obesity. The main thing what you have to remember, sir, here is your genetics. Is here your genetic, that is your KRAS gene mutation. That is your KRAS gene mutation. Love you all. KRAS gene mutation.
Most accepted theory, if someone have listened to that, the most accepted theory would be your Samson's theory of retrograde menstruation. Would be your Samson's theory of retrograde menstruation. Samson's theory of retrograde menstruation. What about the symptoms, sir? The most common symptom would be dysmenorrhea, mean painful menses. Most common symptom would be dysmenorrhea. In the case of endometriosis, the most common symptom would be dysmenorrhea. And remember, dyspareunia means pain during the intercourse. You know, in the initial days of intercourse, whenever you are performing, they are painful actually, but they are natural pain. But if it is painful after performance of 1 year, 2 year, then there is a matter of worry, and that matter of worry may be that female is presenting with a case of endometriosis. Is presenting with a case of endometriosis. Endometriosis. Dandana, 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 dan. Then coming to the most common side. अब एंडोमेट्रियोसिस को सबसे प्यारी हनीमून की डेस्टिनेशन कौन सी, विच डेस्टिनेशन एंडोमेट्रियम लाइक्स द मोस्ट? एंडोमेट्रियम लव्स टू गो ऑन ओवरी. Endometrium loves to go on ovary, and second most common site where endometrium wants to go, it is your pouch of Douglas. It is your pouch of Douglas. Now sir, coming to the per vaginal exam. Sir, coming to the per vaginal exam, remember cobblestone field of uterosacral ligament. Can you tell me, one question has been asked from this? One question is asked from this: uterosacral ligament is true support or false support? Sir, uterosacral ligament is true support or false support? Can you tell me it is true support or false support? Just answer my question, sir. Sir, no, it is false support. It is a false support to the uterus. This question has been asked. Then who is a true support, sir? Who is a true support to the uterus? Sir, your answer is round ligament. This is a trick. Sir, your answer is round ligament. This is where examiner want to confuse you, but you are attending the chanting sessions, and I'll make sure that you guys will learn the maximum. Done. Then endometriosis, you will see a tubo-ovarian mass and fixed retroverted uterus. Okay? Fixed retroverted uterus. Now endometriosis, guys, it is repeatedly asked question, and USG, what you are going to see? Ground glass appearance. On USG, what you are going to see, sir? It is your ground glass appearance. And investigation of choice on laparoscopy. On laparoscopy, your favorite question of the examiner, because maybe examiner's wife loves chocolate. That is your chocolate cyst. This is your chocolate cyst, and this image, same image has been asked in the Fmge exam. Moment you see this image, you have to click answer endometriosis. Means your endometriums is now present on the ovaries. It is now present on the ovaries. Chocolate cyst. This is your chocolate cyst. Also there would be fibrous bands, and also there is gunshot or powder burn appearance. Also there would be gunshot or powder burn appearance. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Sir, then coming to the gold standard investigation, it is histopathology. Why it is histopathology? Let me tell you. Sir, you have to check whether on the ovary there is a endometrial tissue or there is something else. To check there is endometrial tissue or something else, you will go for the histopath examination. Once you do the histopath, you will come to know that this is your endometrial tissue. This actually confirms your diagnosis that this is a case of endometriosis. Sir, now coming to the treatment part of endometriosis, let me make it very simple for you guys. If there is ovarian cyst, sir, if there is ovarian cyst, remember ovarian cyst size matters. What matters in life? लाइफ में क्या मैटर करता है दोस्तों? साइज मैटर्स. ठीक है, मैटर करता है कि नहीं करता है? जल्दी से, साइज मैटर्स और नॉट मैटर्स? साइज मैटर्स और नॉट मैटर्स? जल्दी से, साइज मैटर्स और नॉट मैटर्स? So my dear friends, in the endometriosis case, size actually matters, and less than 3 centimeter if size is there, just do aspiration. हिंदी में बोलो तो चूस लो.
और अगर more than 3 centimeter is there, sir, your treatment is cystectomy. Just you have to cut the cyst. Just you have to cut the cyst. For the endometriotic deposit, sir, for the endometriotic deposit, what you have to do? You have to curettage it. That is curetization and cauterization and fulguration of the deposit. It is cauterization and fulguration. You just have to remove that deposit from the ovaries. And what if adhesions are formed there, sir? You have to put a laparoscope and you have to break those adhesions. You have to break those adhesions. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Sir, coming to the medical management, we are giving continuous GnRH. Why we are giving continuous GnRH? Because you have to suppress this menstruation. Because you have to suppress this menstruation. किसी भी चीज को कम करना हो तो क्या दोगे? Continuous GnRH. और किसी चीज को बढ़ाना हो, अगर हाइपोथैलेमस को बढ़ाना हो, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना हो, तो क्या दोगे? Pulsatile GnRH. Dandana, 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 done. Then coming to the adenomyosis. Then coming to the adenomyosis, sir. Adenomyosis means now your endometrium is present in the myometrium. Sir, adenomyosis means your endometrium is present in the myometrium due to break in something MCQ, endomyometrial junction. Now, can you see this? A very beautiful uterus. This uterus is actually black spot. What is present here? This is an endometrial tissue. This is an endometrial tissue. Endometrial tissue normally should be in the uterus. Now it is coming in the myometrium. Now it is coming in the myometrium, and it is something looking like salt pepper appearance. ऐसा लग रहा है ना, काले मिर्च से डाल दिया ऊपर. Salt pepper appearance is seen in the case of myometrium. It is seen in adenomyosis. It is seen in the case of adenomyosis. It is seen in the case of adenomyosis. In adenomyosis, your endometrium is present in the myometrium. Endometrium is present in the myometrium. Dandana, 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 tin. ठीक है, चलो. Then coming to the most common, it is present in the multipara woman. Multiparity means multiple times she has given birth to a baby, and the sir most common symptom would be menorrhagia. Menorrhagia पता क्या है? मन भर के. तो क्या बोलते हैं? ओ मैं तो तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा कि तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा. दोस्तों, मेनोरेजिया, दैट इज योर मेनोरेजिया. ठीक है. एक्चुअली थिंग इज कि आई एम टेकिंग क्लास फॉर 7-8 आवर्स. आई शुड ऑल्सो एंजॉय यार थोड़ा सा. आई ऑल्सो हैव राइट टू एंजॉय ना. ठीक है. इफ आई विल नॉट एंजॉय, आई विल नॉट एबल टू टेक द क्लास. सीधा सा फंडा है. ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन इज यूएसजी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राम, एंड देयर इज अ सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड. There is a symmetrical enlargement of the gland, and right now I have told you salt pepper appearance. These hi-fi words are the keyword punch words you should remember. Case solve करने के लिए just you need a keywords salt pepper appearance. Straight away diagnosis would be adenomyosis. Then Venetian wall blind appearance, adenomyosis. Myometriosis is adenomyosis. Done, 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 done. Now sir, to check the thickness of junctional zone, to check the thickness of the junctional zone, what you will do, sir? You will perform a MRI. For the local staging in the uterine cancer, remember you will go for the MRI. And what if I ask you gold standard investigation? It's always histopath examination. And how you will do that? Hysteroscopic curettage. You have to put the hysteroscope. You have to just fulgurate from there. Why you need to fulgurate? Just to confirm that the tissue which is present in the myometrium, whether it is endometrium or not endometrium. So you will come to know with the help of histopath examination. Now sir, management, if I told you total abdominal hysterectomy, no matter it is primipara, no matter it is multipara, but the adenomyosis where your endometrium is present in the myometrium, your direct treatment would be, sir, your total abdominal hysterectomy. Everything is clear to all of you? Are you guys understanding it or not, learning it or not? पहले सुना है कि नहीं सुना? Just tell me honestly कि ये सारी की सारी चीजें, have you ever heard these things in your life? क्या सुना है कि सुना है? अगर सुना है, अगर पहले सुना है तो क्या बोलोगे? सुना है ये कसम वफा है,
अगर सुना सुना है मतलब कभी नहीं सुना तो क्या बोलोगे? चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। तो अभी 6 दिन रह गए हैं तो सुना सुना होना चाहिए, ठीक है। डन डना डन, क्लियर एंड क्रिस्प। सर देन कमिंग टू द फाइब्रॉइड्स, excessive uterine bleeding fibroid, excessive uterine bleeding fibroid, 100% MCQ. Sir, it is your 100% 100% MCQ है ना। और फिर मैं चला गया अगर तो क्या बोलोगे? चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। Fibroid, it is a smooth muscle tumor. Fibroid is a smooth muscle tumor. It is a smooth muscle tumor. Originate from the where, sir? Myometrium. It is originating from the myometrium. And let me tell you about the three basic important uterine fibroids. Number one is uterine fibroids. Sir, if it is present in the center middle of the myometrium, then it is known as intramural. And sir, this is most common. Intramural is most common. If it is more near the uterine lining, it is known as submucosal. And if it is away from the uterine lining, then it is subserous. So three type of fibroids I'm going to teach you right now, sir. Most common fibroid, sir, your answer should be in the chat box. Most common fibroid would be your intramural fibroids. ये दिख रहा है तुम्हें बीचों बीच है. More near to the uterus, sir, it is submucosal. Away from the uterine inner lining, it will be the subserous fibroid. Subserous fibroid. Dun dana dun dana dun dana da. Ah ah ah. दोस्तों, then coming to the most common benign solid pelvic tumor in the female. If I ask you, your direct answer would be fibroids. Most common benign solid tumor in the female, fibroid. Most common benign solid tumor in the female would be your fibroids. Most common benign solid tumor in the female would be your fibroid. Now, sir, risk factor is something which plays very major role in solving the question of fibroids. Location you already know, most common you already know, done, done, and done. Sir, risk factor would be reproductive age from 30 to 40 years. Number one, nulliparity. The female who never become pregnant is a risk factor of fibroids. Is telling you the fibroids, ठीक है. Then coming to the adenomyosis. Adenomyosis में what was the risk factor? Adenomyosis में what was the risk factor, sir? If I remind you, it was multiparity. अभी जो हमने एडिनोमाइसिस पढ़ा, सॉल्ट पेपर पेरिस पढ़ी, उसके अंदर रिस्क फैक्टर था मल्टीपैरिटी, बट फाइब्रॉइड्स के अंदर रिस्क फैक्टर इज नल्लीपैरिटी. यू गॉट द डिफरेंस. ओबेसिटी आल्सो हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास. सर ये जो फाइब्रॉइड है ये किसकी बीमारी है? अमीरों की बीमारी है. किसकी बीमारी है? अमीरों की बीमारी. ये हम जैसे गरीबों को नहीं होने वाली. ये हम जैसे गरीबों को नहीं होने वाली. एंड व्हाट इज हैपनिंग? नल्लीपैरिटी, अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज. Because of overexposure of estrogen and progesterone, there can be a chances of development of fibroids. And sir, genetic, if I ask you genetic about the fibroids, translocation between chromosome number 12 and 14 बोले तो 12-14. क्या है? 12-14. 12-14 क्या है? 12-14. The protective factor, as I already told you about the fibroids, the female who smokes are the protective factors. The smoking is a protective factor. The smoking is a protective factor. Smoking is a protective factor, sir. ठीक है? Smoking protective and physical exercise. तो फाइब्रॉइड किसको नहीं होंगे? जो महिलाएं सिगरेट पीती हैं उनको नहीं होगा फाइब्रॉइड. So congratulations all the cats who smoke. They'll never get fibroids. Congratulations to all of you. And I know that अभी जितनी भी चैट में इनमें से तो एक ने भी नहीं पिया कभी, है ना? सही बात है ना? Give me thumbs up. आना 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 आना. क्या बात है. नल्ली पैरिटी की फिगर खराब हो जाती है, खराब हो जाए हाई सोशल इकोनॉमी का, और फिर ये हो गया. वाह 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 वाह. है ना? है ना? है ना? ने कैसी देखो देखो, इन्होंने सबने बोला नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना? सारे सिगरेट जहान के लड़के ही पीते हैं, लड़की ने एक भी नहीं पिया. अर्चना कह रही जॉइंट वाला है वो, उसका थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है.
अब ये कह रहे FMG स्मोक्स ए लॉट। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड्स। एंड इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड्स मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड वाज योर इंट्राम्यूरल। मोस्ट कॉमन वाज योर इंट्राम्यूरल, ये वाला मोस्ट कॉमन कौन सा था? इंट्राम्यूरल, ये वाला जो सेंटर में प्रेजेंट था, ये वाला फाइब्रॉइड। ठीक है जी। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद मोस्ट कॉमन सिम्टम वुड बी मेनोरेजिया। एंड मन भर के साइकिल का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? इन द मॉर्निंग ओनली वी हैव स्टडीड मेनोरेजिया का कॉज क्या था? यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो रिमेंबर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इज अ इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज मेनोरेजिया। मन भर के साइकिल आए। Here you have to remember something, the consistency of the fibroid. Fibroid है कैसा इसके अंदर? Please remember, we can see a pinkish white rubbery consistency. We will see what? Pinkish white rubbery consistency. We will see what? Pinkish white rubbery consistency. Done, 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 done. Now sir, most common presentation of fibroid would be asymptomatic. If anyhow there is a symptom they are asking, most common presentation of fibroid is asymptomatic. But if symptom they ask, then your answer is menorrhagia. Menorrhagia. Now there are some fibroids which are extrauterine, and the most common extrauterine fibroid would be your cervical fibroids. Cervical fibroids. ठीक है जी। तो remember cervical fibroid was your previous year question. You have to remember cervical fibroid. How? There are two positions of cervical fibroids. या तो वो अगली wall पे होगा या पिछली wall पे होगा. If it is present at anterior wall, sir, what will happen? In the anterior wall, there is an increase in frequency of micturition. There is increase in frequency of micturition. तुम्हारी micturiation की frequency बढ़ जाएगी. If it is present on the posterior wall, then there is a retention of urine. This is exam question. Then there is a retention of urine, sir, and there will be a constipation. So anterior wall cervical fibroids, there will be increase in frequency of micturition. Posterior wall cervical fibroids, sir, there will be retention of urine and constipation. Done. Sir, most common fibroids. Now MCQ number 1 for all of you. Most common fibroids. The most common fibroids, remember, most common fibroids to go under calcification would be subserous fibroid. The most common fibroid would be subserous fibroid, and the uterine inversion is most common with the fundal. See what is happening in the fundal fibroid. ये जो fundal fibroids है ना, वो अगर ऊपर से नीचे की तरफ झुक जाता है, फंडल फाइब्रॉइड और ऊपर से नीचे की तरफ को झुक जाता है, तो वहां पे क्या होता है? डिम्पलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? डिम्पलिंग आ जाती है। यूट्राइन इन्वर्जन इज मोस्ट कॉमनली सीन विद द फंडल सबम्यूकस। नाउ द मालिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट कॉमनली विद द सबम्यूकस। मालिग्नेंट किसके साथ है? सबम्यूकस। तो 3 MCQs here which is most commonly asked, sir. Number 1 MCQ would be your most common fibroid to go under calcification. What is your answer? Most common fibroids to go under calcification would be your subserous fibroid. Uterine inversion is most commonly seen with fundal submucus. Malignant transformation is most commonly seen with the submucous fibroid. And cervical fibroid, if you remember, if it is present on the anterior side, there was increase in the frequency of maturation. If it is present on the posterior side, there is a retention of urine and the constipation. Investigation of choice would be your ultrasound, and definitive investigation for the fibroid would be your MRI. Now sir, complication of fibroids, just remember 2 complication. Calcareous degeneration is wormstone appearance. Calcareous degeneration में wormstone पहली complication. दूसरा red degeneration is most commonly asked. Treatment is conservative management, and when you will see this red degeneration, sir, you will see it at second trimester of the pregnancy. रेड डिजनरेशन, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। तो दोस्तों कुछ अच्छी सी बात कहना चाहूंगा, होके मायूस ना तू, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए,
होके मायूस ना तू ये शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक बोरे है, जिंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरेंगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर पढ़ते रहिए, आप जरूर पास हो जाएंगे, आप जरूर पास होंगे, यू विल पास, यू विल पास, यू विल पास, है ना। यार मेरा तो नारा भी इंग्लिश में है, आई विल पास, इंग्लिश का नारा बनाया मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी वाला भी बनाया, आपकी बात दोस्तों पास। आई एम सो मच इंग्लिश मैन यार, मतलब मैं चेहरे पे इंग्लिश नहीं दिखती, देखो माय माय फेस इज नॉट इंग्लिश मैन, इट लुक्स लाइक बीसी बिफोर क्राइस्ट, है हिंदी फेस है, इसमें हिंदी फिलहाल फेस है कि इंग्लिश फेस है, इंग्लिश फेस से थोड़ा जेंटलमैन लगता हूँ यार मैं। है ना दोस्तों। सो इट्स प्योर इंग्लिश, यू नो, ड्रेसअप भी इंग्लिश ही है, कोई इंग्लिश ब्रांड की ही शर्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या लिवाइस बुइस, पता है मुझे नाम लेने में नहीं आता, है ना, बस ऐसे ही है थोड़ा बहुत, है ना। फोन भी इंग्लिश वाली कंपनी का ही है, आईफोन। पानी भी इंग्लिश वाली कंपनी का पी रहा हूँ, इंडोर वाटर, ओ माय गॉड। इंग्लिश इंग्लिश बॉय हूँ मैं, इंग्लिश विलिंग्स, है ना, है ना। और फोन चार्ज भी मैं इंग्लिश वाले वर्ड से ही करता हूँ, चार्जर, क्या है चार्जर। और पढ़ा भी इंग्लिश प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, क्या है यूट्यूब। है ना। चल, अरे दोस्तों सुनो यार, अरे मजाक कर रहा था। इफ एसिम्प्टोमेटिक, sir, if your fibroid is asymptomatic and if it is less than 10 centimeter, just observe, just you have to do what, observe, just you have to do the observation. What if your fibroid is more than 10 centimeter, then it is a matter of worry. Matter of worry is divided into two. Multiparous means she become pregnant many times. Nulliparous means she never become pregnant. Now, who is multiparous? In that case, always in the obs and gynae, remember the golden rule, the treatment is total abdominal hysterectomy. Sir, your treatment is total abdominal hysterectomy. If she is nulliparous, means now you have to wait for the children's. Maybe you can remove the uterus, but ovary is fine na, you can take ova from there, you can क्या कहते हैं do the in vitro fertilization, you can go for the surrogacy, still you can have baby. So remember, if nulliparous is there, myomectomy, sir, you have to do what, myomectomy, removal of the myoma. This is how you are going to treat the fibroids. This is how you have to treat the fibroids. Dandana, 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 done. So fibroid is clear to all of you. फाइब्रॉइड्स पता चल गए, इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन, ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई होती है। ट्रीटमेंट में एसिम्प्टोमेटिक होगा तो ऑब्जर्व करना है, सिम्प्टोमेटिक होगा तो देखना है मल्टीपेरस है कि नल्ली पेरस है। अगर मल्टीपेरस होगी तो पूरा का पूरा यूट्रस सुपड़ा साफ कर दो, अगर नल्ली पेरस है तो ओनली रिमूव द मायोमा, ओनली रिमूव द मायोमा। डंडना 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 डन, ठीक है जी। चलो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नोन एज फिस्टुलास। fistula is very 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 important. Fistula is very 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 important. So guys, as you see anatomy, as you can see the anatomy, three simple fistulas I want to show you. Number one fistula is between the ureter and the vagina. Number two is between the urinary bladder and the vagina. Number three is urethra and vagina. What will happen? Let me show you something. This is your kidney. सर दिस इज योर किडनी, आई नो अच्छी नहीं बनाई है पर है किडनी है, ठीक है। किडनी क्या कर रही है, बेगम बहुत रोमांस कर रही हो, ओपन में खुल्लम खुल्ला शुरू हो रही हो, थोड़ी भी शर्मा नहीं रही हो बेगम, बेगम फॉर्म में चल रही, देख रहे हो, है ना। तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है यहाँ पे, है ना। सो सी गाइस, फिस्टुलास, सी गाइस क्या है यहाँ पे, फिस्टुला। भाई ब्लश करने लग जाता हूँ, ऐसी हरकतें मत करा करो यार, शर्म आ जाती है मेरे को, खुले खुले में लग जाते हो। टिंडर की साइट बना दी मेरी क्लास तो रोमांस करने के लिए, है ना। ये तो अच्छी बात है कि यूट्यूब पे यू कैन टेक्स्ट अदर पर्सन, अदरवाइज लड़कों ने तो मतलब
काम ही खराब कर दिया होता, अभी तक पढ़ाई छोड़ छोड़ के वो डीपी देख देख के अभी मैसेज करते, हाय आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मैं समझा दूंगा, इसकी छोड़ो आप। Oh my God, oh my God. So guys, remember one thing from my side. ठीक है, तो गाइज रिमेंबर फ्रॉम माई साइड, यूरिटर एंड वेजाइना के बीच में अगर फिस्टुला होगा, सी फ्रॉम हेयर द यूरिन इज कमिंग, फ्रॉम हेयर द यूरिन इज कमिंग and urine will go into vagina also. Yes or no? The urine will go into vagina also. So in this type of fistula, which is fistula number 1 between the ureter and the vagina, there will be continuous dribbling of the urine. There will be continuous dribbling of the urine. Number 1. Also, this urine is going into the urinary bladder. Again, in the urinary bladder, there will be a continuous dribbling of the urine. There will be a continuous dribbling of the urine through the vagina. ठीक है, here in the type 1 fistula the flow is normal, in the type 2 fistula the flow is abnormal, the flow is abnormal, the flow is abnormal. ठीक है, अच्छा कल कर भी रहा था एक मैसेज, ओ माय गॉड, लड़कियां हमारी डिमांड में चल रही हैं, बॉयज आर लाइक, बॉयज आर कलर ब्लाइंड, गर्ल्स आर नॉट, ठीक है. So guys, remember, third type of fistula, it is between your urethra to the vagina. Now, I want to show you something. This is your sphincter. This is your sphincter. So now, will urine go to vagina all the time, or it will only go once we are micturating? Yes, sir. The correct answer is now in the type 3rd fistula, the urine will only come from the vagina once you are micturating. Once you are micturating, because sphincter तभी खुलेंगे जब तुम चाहोगे. Yes or no? Dun dana, dun dana, dun dana, done. So clear, all 3 types of fistulas are clear to all of you. One by one I will show you and I will explain you very clearly. पहले type 1 fistula ureter और vagina के बीच में, फिर यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में, फिर हमारा यूरिथ्रा और वेजाइना के बीच में. टाइप 1 एंड टाइप 2 में कॉन्टिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन. टाइप 3 में यूरिन इज ड्रिबलिंग ओनली एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन. ठीक है, सुसु के टाइम ओनली. यूरिट्रोवेजाइनल टाइप 1 फिस्टुला की बात कर लेते हैं, थ्योरी की बात कर लेते हैं. वी नो ऑलरेडी, जस्ट टू गो थ्रू द थ्योरी. कॉन्टिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन and normal micturition, already we know. Continuous dribbling of the urine through the vagina and normal micturition, number 1 gone. Vesicovaginal means your fistula is between the urinary bladder and the vagina. Number 2 fistula जो था हमारा, there is a continuously dribbling of the urine. As I already told you, there is a continuously dribbling of the urine, but there is no normal micturition. Continuously dribbling of urine through the vagina, but no normal micturition, as I already told you. Now urethrovaginal fistula, dribbling only at the time of micturition. So 3 fistulas are very much clear to all of you. ठीक है, 3 fistulas are, मैं फैन हूं आपका सर. रेशमा बेगम, मैं फैन हूं आपका सर. भाई ये क्या हो रहा है यार, मतलब तुमको नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ती है ना. तुम रेशम बेगम नाम रखते अपना, रेशमा क्यों कर दिया मेरे भाई. मेरे भाई ऐसा मत करो यार, गलत फीलिंग हो जाती है यार. मतलब मेरे को सारी लड़की मतलब लव लव करी जा रही है, गलत बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है ना. स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट गलत बात है, धोखा भाई. मुझे लगा बेगम लड़की है और मतलब वो लड़का निकला, फिर से वही बात हुई है ना. रेशमा बेगम क्या है नाम रखा हुआ. दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करेंगे. मिथिलीन ब्लू स्वैब टेस्ट क्या है, मिथिलीन ब्लू स्वैब टेस्ट. तुम क्या डालोगे, स्वैब डालोगे, चेक करोगे कौन सा वाला स्वैब जो है कलर चेंज कर रहा है, वहीं पे फिस्टुला होगा. बट definitive test for 2 fistulas, number 2 and number 3 fistula would be your vesicovaginal fistula and urethrovaginal fistula. Vesicovaginal fistula number 2 fistula and urethrovaginal fistula would be number 3 fistula. इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिस्टोस्कोपी. बट जो अपर 1/3 है ना,
जो नंबर 1 फिस्टुला है यूरिटेरोवेजाइनल फिस्टुला, वहां तक सिस्टोस्कोप नहीं जाता है, तो वहां के लिए भी यूज IV indigo carmine dye. We will put a dye and we will fistula there. We will put the swabs there, and you will see the topmost swab would be wet. Topmost swab would be wet. This is for the ureterovaginal fistula. IV indigo carmine, topmost cotton swab is wet. Topmost cotton swab is wet. Most common cause of vesicovaginal fistula means a fistula between the urinary bladder and the vagina is a obstructed labor, sir. It is your obstructed labor. पूरे मजे लेते हो तुम भी, हैं क्लास के पूरे आनंद ले रहे हो, हैं बेगम ना बेबू ना बाबू ना शोना, तुम तो पूरे मजे लो ना। मैनेजमेंट क्या है प्री अप्रोटिक में? देखो what is happening, your urine is coming from the vagina, so pre-operate, before operation you have to make sure that there is no bacteria left, yes or no? For that, before operation you will go for the antibiotics, sir. Antibiotics is done, now everything is clear, now you will go for the operation, sir. In operation there are 3 approaches you can go for. Number 1 is Chaser-Muir operation. Number 2 is let's go repair, and sir number 3 is robotic surgery. Number 3 is robotic surgery. It is your robotic surgery. Okay. Then post op management, what you will do? Now you have treated a fistula. Will you keep that fistula as it is so that more urine can come? There will be infection. There will be like sepsis. You don't want that. To ignore that, you will allow some time to the wound to heal. While that time you will put something inside, though that urine should not actually touch that site of intervention. For that you will do continuous catheterization of urinary bladder for 2 weeks at least. After 2 weeks you will see now your wound is healed. Now your wound is healed. Continuous catheter. So how you will treat the fistula, sir? Remember, pre-operation it is antibiotic, फिर operative management, then post-operative में you have to put a continuous catheterization of the urinary bladder for at least 2 weeks, sir. Sir, management of urethrovaginal fistula. Urethrovaginal, you have to go for the Bori repair. क्या है? Bori repair. Urethrovaginal. Urethra के ऊपर fistula होगा तो Bori repair करनी है. Also in the surgery you have learned, if there is a posterior urethral valve, in that case also you have to go for the Bori repair. So urethra में कोई भी दिक्कत होगी, in the MCQ remember Bori repair is a answer. Bori's repair is a answer. Now coming to the very famous rectovaginal fistula. Sir, now your fistula is between the rectum and the vaginal. Earlier your urine was coming from the vagina, this time feces are coming from the vagina. तो vagina के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है. Can you please see this? Something is happening here. Please look into this image very deeply. If you can see something, please do let me know. If fistula is here, let me tell you where is fistula. This is fistula. Sir, this is fistula. ध्यान से देखना, this is fistula. ठीक है सर, अगर समझ में आ रहा हो, this is fistula. ठीक है, this is fistula. ठीक है, and this is like a standing guy. And this is like a oh yeah, this is rectovaginal fistula. This is rectovaginal fistula. This is a image based question, important image based question of the exam. भाई साहब आर्टिस्ट, कलाकारी पूरी है, पूरे मजे आने चाहिए क्लास के बीच में. Oh my God, this is something. नॉटी अमेरिका की जगह नई साइट आ रही है, नॉटी इंडिया.
ठीक है, उसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डॉक्टर पारस। सिम्टम वुड बी पैसेज ऑफ फीसिस थ्रू द वेजाइना। ठीक है, symptom is passage of feces through the vagina, and most common position would be occipito posterior position, OPP। क्या है OPP? OPP, 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 and the management would be initially you have to do the colostomy followed by repair after 6 weeks. Now what you have to do, sir, you have to actually change the passage of the this feces. So you will develop one stoma। तो क्या करते हो, फीसिस को रेक्टम के थ्रू पास नहीं होना, अब इसको पेट के थ्रू पास होना है। तुमने सुना होगा ना, दैट इज नोन एज कोलोस्टमी, that is known as colostomy. Now you will see, now your rectum and vagina is sterile, everything is fine, you have given antibiotics, everything is clear, then you can treat after 6 weeks। Until that you have to do the potty through the थैली लटक रही होती है, पता ना थैली लटक रही होती है, तो वो थैली इसीलिए लटकाई जाती ताकि तुम रेक्टम या फिर इस जगहों पे ऑपरेट कर सको, यू कैन ऑपरेट हियर। ठीक है, डन डन डन। नाउ सर देयर इज समथिंग नोन एज uretrovesical fistula or vesico-uterine fistula, that is Yusuf syndrome। What is Yusuf syndrome? Yusuf syndrome is a fistula between urinary bladder and the uterus, urinary bladder and the uterus, and the most common cause is cesarean section। While doing the cesarean section you can overcut the uterus, that is known as your cesarean section की वजह से कौन सा वाला होगा, Yusuf syndrome, that is your Yusuf syndrome। Image of the day, नॉटी इंडिया फीड डॉक्टर पारस। और मेरी हीरोइन कौन होगा भाई, मेरी हीरोइन कौन होगी पहले ये बताओ, अकेले तो बन नहीं पाएगी वो। नॉटी इंडिया, इनफर्टिलिटी। ठीक है, ऑडिशन शुरू कर रहा हूं मैं, इनफर्टिलिटी। ठीक है, auditions available, show your best talent and you will be the biggest celebrity in the world। infertility, failure to conceive even after। अब भाई ऐसा हुआ, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे लाड़ दुलारे भाई। कल मैंने देखो सारे लड़कों को फॉलो बैक करा कल, अब कोई एक बोल गया मेरे को कि नहीं करते हैं लड़कों को फॉलो बैक, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है, यस्टरडे मैंने सबको फॉलो बैक करा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। ठीक है, मेल फीमेल, नो जेंडर प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, चल देन 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 कमिंग इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी सर? ऐसा हुआ 1 साल से घपाघप चल रहा है और फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, 1 साल से घपाघप चल रहा है फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, दिस इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फेलियर, failure guys, remember, failure to conceive even after 1 year of unprotected or regular intercourse। 1 साल से बिना छतरी पहने हुए, बिना कोई प्रोटेक्शन यूज करे हुए रोज घपाघप करा फिर भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो वो बंदा आया डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज की डेट में मेल एंड फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। सो नाउ वन बाय वन वी विल लुक फॉर द ओवेरियन फैक्टर्स, देन वी विल लुक फॉर द जो क्या कहते हैं मेल फैक्टर्स, देन वी लुक फॉर द फीमेल फैक्टर्स। सो लेट मी स्टार्ट विद द फीमेल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, फीमेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी। डन डन। Number one is ovarian factor। Sir, what is happening at ovaries? The most common cause of anovulation at the level of ovaries would be PCOD। At the level of ovaries would be PCOD। It is PCOD। नहीं, जिंदा लड़की नहीं हूं, आपने पीछे बोला ना यार कि मैं मतलब सर मैं आपसे प्यार करता हूं, भाई वो चैट में लिखा हुआ था, मुझे थोड़ी पता, मैं आई डोंट नो एनीवन, मेरे लिए तो सब बराबर हो यार, नॉट पर्सनल एनीथिंग। ठीक है, ओवेरियन फैक्टर इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनोवल। और मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ये जो चैट में देख रहे हो नटोरियस डॉक्टर्स, हमारे रंगीन एफएमजीज, ये सारी हरकतें इन्हीं की करी हुई है। ठीक है दोस्तों, ओवेरियन, ovarian factor most common cause is anovulation। Most common cause of anovulation in the ovarian factor would be PCOD। Best test to diagnose the anovulation would be serum progesterone।
सर आपको याद होगा अगर कि 14th डे पे एलएच सर्ज होता था, एलएच क्या कराता था, ओवुलेशन कराता था, ओवुलेशन की वजह से ओवम बनता था, कॉर्पस ल्यूटियम बनता था, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन बनता था। अब प्रोजेस्टेरॉन तभी तो बनेगा जब ओवुलेशन होगी, तो याद रखना बेस्ट टेस्ट इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन। इफ प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट मीन ओवुलेशन हैपेंड, if progesterone is absent mean there is no ovulation, there is no ovulation. Rectovaginal fistula is rectovaginal fistula image. Have did I created something there? That was natural image. That is a call of God, not call of Paras. It's not from my side. I have created that rectum and the vagina is looking like that. In reality, they look like that only. It's not me who is making something. ये कहते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई रामा, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाया रेक्टम और वेजाइना। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। मोस्ट कॉमन कॉज मोस्ट, अब फैमिली के सामने तुम खोल के बैठो है ना चैंटिंग को, तो गलती मेरी हो इसमें नहीं, गलत गलत बात, गलत बात। मैंने पहले ही समझाया, ईयरफोन लगा के देखनी है, अकेले में देखनी होती है ना। पता नहीं कब आकाशवाणी हो जाए, यहाँ से कौन सी वाली हो जाए, मेरे को खुद नहीं पता चलता, ठीक है। बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज द एनोवुलेशन इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन। Management of anovulation, sir, if it is due to PCOD, then drug of choice would be latrozole. Drug of choice would be latrozole. If your anovulation is happening due to dysfunction of hypothalamus pituitary ovarian axis, then you will give GnRH. Now you have to activate the hypothalamus. For activation of hypothalamus, you will give पल्सेल्टाइल जीएनआरएच। अगर तुम्हें दबाना होता अपने हाइपोथैलेमस को तो तुम कॉन्टिन्यूस देते, पर अभी तो तुम्हें क्या करना है, उसको जगाना है, इसलिए कौन सा दोगे, पल्सेल्टाइल जीएनआरएच। क्या दोगे, पल्सेल्टाइल जीएनआरएच, ठीक है। देन कमिंग टू द ट्यूबल फैक्टर्स, ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ एन ओवुलेशन, मोस्ट कॉमन कॉज वुड बी योर पीआईडी। सर मोस्ट कॉमन कॉज वुड बी योर पीआईडी, पीआईडी इज द मोस्ट कॉमन कॉज देन एंडोमेट्रियोसिस। ट्यूबल फैक्टर का कॉज एनोवुलेशन के लिए पीआईडी। यू ऑल नो पार्शियल ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज होगा अगर पीआईडी में, देन इट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इफ देर इज कंप्लीट ब्लॉकेज देन देर इज अ एनोवुलेशन और इनफर्टिलिटी, दैट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। गाइस ट्यूबल फैक्टर मोस्ट कॉमन कॉज है। भाई ये घर वालों को सुनाने की चीज है ये चैंटिंग, मतलब गलत बात है यार, मतलब या तो तुम मेरी इमेज को बहुत बढ़ा रहे हो या तो बहुत नीचे ला रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पास हो जाओ तुम लोग, ठीक है। ट्यूबल फैक्टर्स द मोस्ट कॉमन कॉजेज पीआईडी। आंसर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल ब्लॉक ऑन डे 9th to day 11th, but the best day to check, this is an exam question, seriously I'm telling you, this is exam question. The best day to check the tubal blockage would be, sir, your day 10th. What is the best day to check the tubal blockage, sir? It is your day 10th of the ovulation, day 10th, ठीक है। and diagnosis is by the x-ray and USG. On x-ray, sir, if I am putting the dye, you can see here, if there is right side, this is left side, you will see a dye is going on the left side very much fine, but it is not going on the right side. That means there is a blockage, that means there is a blockage on the right side. And sir, this is how you will diagnose the tubal factor, tubal blockage. This is how बाबा बना दिया तुमने, जपना मत करने लग जाना। बेस्ट टेस्ट इज लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन। सर टू चेक द ट्यूबल ब्लॉकेज, योर बेस्ट टेस्ट initially diagnosis with the help of x-ray dye, but if I ask you what is the best test, best test is
laparoscopic chromopertubation. The best test would be laparoscopic chromopertubation. And which day is the best day to check the tubal blockage? Sir, your answer is 10th day. Your answer is 10th day. Let's talk about the levels of block. Tubal blocks के level check करते हैं. Number one block would be your cornual block. Number one block would be your yes, today is 35 marks plus session. Cornel and obs-gynae, my notes are more than 90% of the original content what you read for 60 hours. Obs-gynae, surgery and some other topics of like medicine and ENT also, micro also, they are like 80-90% content is there. So you can rely on these notes and you can follow the questions. Okay? Level of block is tubal. Cornual block is a number one block. Remember, most common physiological cause of cornual block would be physiological spasm. And how you will treat the physiological spasm, sir? You will treat with the help of laparoscopic chromoperturbations. You will treat with the help of, sir, laparoscopic chromoperturbation. Most common pathological cause of the cornual block would be your genital TB. 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 And remember, what is a management, sir, in the genital TB and a cornual block and a pathological cause, sir? The answer is in vitro fertilization. The answer is इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दोबारा से सुनो, कॉर्नुअल ब्लॉक में फिजियोलॉजिकल कॉजेस, फिजियोलॉजिकल स्पैज्म एंड द ट्रीटमेंट इज लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन. मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज वुड बी जेनाइटल टीवी एंड द मैनेजमेंट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्योंकि ट्यूब इज ब्लॉक्ड, यू विल गेट द ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड यू विल गेट द स्पर्म एंड दोनों को लैब में जाके मिला देना है एंड यूट्रस में जाके इम्प्लांट करा देना है जाइगोट को. दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. Let's talk about something known as your fimbrial block. Fimbrial block, remember, fimbrial कर लो इसको. Fimbrial block, most common causes Neisseria gonorrhoeae. As you already know, acute PID and chronic PID cases के अंदर there was trickling of, on laparoscopy in the chronic PID there was trickling of pus from the fimbrial end, and PID was happening because of Neisseria. Because of Neisseria, here it is Neisseria only, and the management of mild block would be tuboplasty, but management of severe block would be in vitro fertilization. Sir, your management of severe block would be in vitro fertilization, would be in vitro fertilization. Now I'll talk about the cervical factor. Tubal blocks are clear, ovarian factors are clear, tubal में physiological भी पढ़ लिया, pathological भी पढ़ लिया, फिर फिम्ब्रियल एंड्स पे क्या होता है वो भी पढ़ लिया. अब सर्विकल फैक्टर्स की तरफ आएंगे. सर्विक्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. कैसे हो सकती है? पुअर सर्विकल म्यूकोसा. सर, व्हाट कैन हैपन देयर? पुअर सर्विकल म्यूकोसा. Sir, there is an anti-sperm antibodies in the cervix. What is happening? Whenever your sperm is going from there, there is an antibody, or you can say guards are standing there who are hitting your sperm very badly. वो क्या कर रहे हैं? जैसे तुम्हारी स्पर्म अंदर जाने की कोशिश करती है, स्पर्म को दे थप्पड़ लगा के मार देती है. तो ये क्या है? एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज. एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज. हाउ यू विल चेक दैट देयर आर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर नॉट? देयर इज अ टेस्ट नोन एज हुहनर्स टेस्ट, नोन एज हुहनर टेस्ट और सिम्स टेस्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड व्हाट यू विल सी, सर देखो ध्यान से सुनना, स्पर्म बाहर आती भी कैसे है? जर्की मूवमेंट की वजह से. और अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो जब तुम स्पर्म को चेक करोगे यू विल सी जर्की मूवमेंट. यू विल सी जर्की मूवमेंट. दैट मीन दैट जर्की मूवमेंट मीन योर सिम टेस्ट इज पॉजिटिव. सिम टेस्ट पॉजिटिव मीन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सर्विक्स हु आर नॉट अलाउइंग दैट स्पर्म टू क्रॉस थ्रू द सर्विक्स अलाइव. क्लियर हो गया जी फंडा? सो जर्की, यू ऑल नो जर्की मूवमेंट्स हाउ इट इज लाइक परफॉर्म्ड, है ना? यू ऑल नो ना जर्की मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म होती है. कभी अब ऐसा मत बोलना सर डोंट नो करके दिखा दो. And sir, what is the management of this anti-sperm antibodies? If there is a cervical factor present over there, what is the management? एक काम करना है, इसे दिमाग लगाओ कि दरवाजा खराब है
और दरवाजे में आग लगी हुई है, तो तुम्हें अगर उसके पार जाना है तो तुम क्या करो, खुद को रैप करोगे किसको, कपड़े में, और दरवाजे से निकल जाओ। सेम वे स्पर्म के साथ करना है। स्पर्म को किसी बोतल में डालना है, बोतल का वर्ड यूज कर रहा हूं बट देयर इज सम इंस्ट्रूमेंट, you have to put sperm in that instrument and then you have to put inside। पेनिस की जगह, पेनिस में बिठा के नहीं लेके जाना है तुमको, एक इंस्ट्रूमेंट में स्पर्म डाल ली और सीधा तुम्हारा इन यूट्राइन इंसेमिनेशन करा देनी। क्या करानी है, इन यूट्राइन इंसेमिनेशन करा देनी है। क्लियर हो गया जी फंडा। उसके बाद बात है इंडिकेशन ऑफ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इन विच केसेस यू कैन गो फॉर द इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब क्या, डायरेक्टली स्पर्म उठाई और तुम्हारे यूट्रस में डाल दी। एक तो भाई अगर तुम्हारी गोली खराब हुई, एक तुम्हारी बंदूक अगर ढीली हुई, मतलब इंपोर्टेंस, क्या है, इंपोर्टेंस। दूसरा है अगर वेजाइना तुमको अंदर नहीं जाने दे रहा, वेजाइना में क्या होता है, वेजिनिस्मस, ऐसे वेजाइना इतनी जोर से बंद हो जाता है कि तुम्हारा पेनिस उसको खोल नहीं पाता, दैट इज नोन एज वेजिनिस्मस। देन अगर गोली का छेद अपनी जगह नहीं हुआ, लेट सपोज गोली, ये रही गोली, गोली का छेद होना चाहिए था यहां, अब गोली का छेद है यहां पे, तो जाएगा, बढ़िया निशाना लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। उसने कहा डैश की डैश, निशाना गया चूक, बाकी निशाना गया चूक, हाइपोस्पेडियस। क्या है, हाइपोस्पेडियस। एंड सोचो तुमने गोली चलाई आगे, गोली चलेगी पीछे, क्या है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। क्या है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और दोस्तों अगर गोलियां कम हो तो सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि हर जगह फायर मारने हैं, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, हर जगह नहीं मारने, सोच समझ के मारने। माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, इट इज योर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, सबसे पहले क्या, इंपोर्टेंस, सबसे पहले क्या, इंपोर्टेंस। उसके बाद है वेजिनिस्मस, उसके बाद क्या है, हाइपोस्पेडियस, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, एंड उसके बाद क्या है, माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। डन डना डन डना डन। तो मेल फैक्टर्स की बात करेंगे अब, हमारे प्यारे मेल्स की तरफ को आ जाओ। फीमेल फैक्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल पैरामीटर क्या क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन यू आर हैविंग, सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन यू आर हैविंग, इट इज मोर देन 1.5 ml, amount of semen more than 1.5 ml per ejaculation। इतना जो है सीमेन बाहर आता है, ठीक है, मोर देन 1.5 ml बाहर आता है, यू ऑल नो, ठीक है। वो जो पॉर्न मूवीज में दिखाते हैं ना, एक एक लीटर बाहर निकल रहा होता है, वो फेक है, वो दैट नेवर हैपेंड। लाइक मैंने तो कभी एक्सपीरियंस करा नहीं, तुमने करा हो तो बता सकते हो। देन स्पर्म काउंट, इफ आई आस्क यू, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द WHO सर, इट इज 20 million, it is your 20 million, 20 million, 20 million। We'll take a lunch break shortly, ठीक है, let's complete something and then we'll take the lunch break, don't worry about that। Then total sperm count is more than 39 million per ejaculation। Sir, do you know you are millionaire? I guess you are billionaires। तुमने आज तक अगर मैं काउंट करूं बचपन से, कई बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स तुमने खर्च कर दिए। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है कि तुमने आज तक बिलियंस ट्रिलियंस, मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं होगी इतनी तुमने स्पर्म खर्च कर दी। उसको खर्च करने के लिए बड़ा दिल चाहिए साहब, पैसे का तो पता नहीं, स्पर्म के मालने में अपना दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है हमारा। तो याद रखना, स्पर्म काउंट पर इजैकुलेशन इज मोर देन 39 मिलियन, इट इज मोर देन 39 मिलियन। और कईयों ने सुबह भी दान करा होगा, सुबह भी खर्चा करा होगा, और कहीं रात को करके सोते हैं, है ना। खर्चा रोज करते हो, पर तुम लोग चाहे सुबह करते हो चाहे रात को करते हो, है ना। ठीक है दोस्तों, total mortality is more than 40%, total mortality is more than 40, total viable जिंदी sperm कितनी, जिंदा 58%, more than 58%, more than 58%, done done done। Now let's talk about the abnormalities, sir। If your semen is less than 1.5 ml, it is hypospermia, less than 1.5 ml, it is hypospermia, more than 5.5 it is hyperspermia। अब तुमने ejaculation करी और पता चले 10 ml sperm निकल गया, इतना सारा, इतना भर गया उसमें, है ना, वो फिर एबनॉर्मलिटी। वो क्या है, नॉर्मली, नॉर्मली क्या है, इतना सा ही भरता है, ठीक है। तो इट इज योर 5.5 ml से ऊपर होता है हाइपरस्पर्मिया, और अगर 1.5 से नीचे होता है हाइपोस्पर्मिया। इफ सीमेन इज एब्सेंट इन द इजैकुलेशन, इट इज नोन एज एस्पर्मिया। if semen is absent, is known as aspermia। if sperm count is less, it is known as oligospermia। and morphologically normal sperm, it is less than 48%, 40% would be
it is less than 40% would be your teratospermia, and if viable sperm are less than 58%, this is known as acrozoospermia. It is known as acrozoospermia. And if sperm is absent in the semen, semen, it is known as azoospermia. Now, sir, disorder at different levels. It can be pretesticular, it can be testicular. December exam question: pretesticular, testicular, and post-testicular disorder. Pretesticular, testicular, and post-testicular disorder, sir. Sir, how you have to remember these? See, if I'm talking about the pre-testicular, that means something problem is happening at the hypothalamus level. The problem is happening at the hypothalamus level or the pituitary level. And if it is happening at the hypothalamus or pituitary level, you will see all the hormones are less. FSH, LH, testosterone, everything is less. This is PYQ. FSH, LH, testosterone, everything is less. That means you will suggest that this is pre-testicular disorder. The problem is at hypothalamus or the problem is at pituitary. Done. If the problem is at testis, it is known as testicular. Okay. Now, how you will come to know that problem is in? चला गया अब स्ट्रीम ब्रेक हो जाएगी. आगे 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 came back. It came back. Just now it came back. Lunch break I'll give na. Test well complete to karne do ek topic here. Then we'll have a lunch break. Even I am not having lunch. I'm also hungry with you guys. है ना? Yesterday only I told you ना कि sacrifice करना मांगता है ना? तुम तो मतलब मेरे को सुनते सुनते भी खा सकते हो, पर मैं बोलते बोलते खा नहीं सकता. ठीक है? So I'll also have lunch. Don't worry. Just let's study first. So what is the treatment, sir? Pre-testicular disorder, you will give what? GnRH, sir. GnRH, and which type of GnRH? Can you tell me? Pulsatile or continuous GnRH? If a problem is at hypothalamus or pituitary and there is a problem in the testes, problem in the ejaculation, everything is because of this is your pulsatile. You will give pulsatile GnRH. Testicular disorder treatment is accordingly. Testicular disorder, the treatment is accordingly, but the post-testicular disorder, if I talk about, that is your TISA and MISA. तो दो लड़कियां हैं, कौन कौन है? TISA और MISA. Post-testicular disorder, but the problem is at vast differences. Now, TISA and MISA are the two important things FMG exam question. Guys, remember, TISA is a testicular sperm aspiration and MISA is a microsurgical epididymal aspiration. Now, TISA is a OPD procedure and done under local anesthesia. So TISA can be done easily, but TISA is not best. TISA is not best, but TISA can be done easily. Who is best? MISA is best. So best method is MISA. The only drawback is it is done under the general anesthesia. Why MISA is best? Because MISA में हमें मिलती है ताजी ताजी स्पर्म. तो MISA हमें लाके देती है ताजी ताजी स्पर्म. क्या लाके देती है? ताजी ताजी स्पर्म. और टीसा हमें लाके देती है तीसरे दिन की बासी पुरानी सड़ी हुई स्पर्म. इसीलिए हु इज बेस्ट? MISA इज बेस्ट. हु इज बेस्ट? MISA is best. Now, management of unexplained infertility. Now, unexplained infertility, sir, your management would be clomiphene citrate. Your management would be clomiphene citrate or intrauterine insemination. Intrauterine insemination. Unexplained. If it is explained fertility, drug of choice would be letrozole. Drug of choice would be letrozole. Sir, now thing is you need to remember, this is your previous year MCQ. ART. Who all are techniques that are coming under ART? ART means you are directly handling with the gametes. Directly handling with the gametes. Which all techniques are there in which you are directly handling with the gametes. Sir, number one is in vitro fertilization. In vitro fertilization also, please remember, in vitro fertilization also you will do what? Direct handling.
ICSI, intracytoplasmic sperm injection, means you are directly handling with the gametes, and ZIFT and GIFT also comes under ART. Sir, if you remember intrauterine insemination, we were handling with all of the sperm together. All of the sperm together, not handling with the single sperm. That is why intrauterine insemination is not a ART. Intrauterine insemination is not at all a ART. This is your previous year question. This is your previous year question. Assisted reproductive technique, procedure involving direct handling of the gamete. Four things comes under this: IVF, ICSI, ZIFT and GIFT. Who don't comes under ART? That is your intrauterine insemination. This is your FMG exam question. Now you deserve a break, sir. After break, in 10-15 minutes, we are going to finish all of the gynecology. Then we will going to the next part, that is obstetrics. Obstetrics is 60% of the total obs and gynae. So how long you want break, sir? If you can tell me how long break you want. It is 2:23. It is 2:23 till 15 minutes only you want. मुझे भी तो खाना है. Let's come back at 3 o'clock. 3 o'clock is fine for all of you. 3 o'clock is fine to all of you, है ना? Let's meet back at 3 o'clock. Okay? Let's meet back at 3 o'clock. Yes, sir. Yes, chalo. 3 p.m. Let's meet all of you. See you all. Bye-bye. Till then. Okay? Yeah. Courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st. Welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor, Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app.
Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given numbers, choose the best. Keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image-based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best. Keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and
hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the Team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best. Keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is an introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results.
So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image-based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q Bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q Bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image-based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q Bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best,
keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer
cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best. Keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is an introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience.
So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the Team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar.
A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline class, let's start. Voice is coming. Hello. Hello to all the people over here. If everything is fine. Hi over there people with me live now. I hope you all are back. मैं तो मस्त बिरयानी खा के आया हूँ. तुम लोगों ने क्या क्या खाया है? What you guys had in the lunch? क्या खा के हो भाई? जल्दी से बताओ, फिर पढ़ाई करते हैं. मस्त वाली पढ़ाई करेंगे आज. ऑब्स गाई नहीं खत्म कर डालेंगे और रात को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मस्त सोएंगे प्रोन पोजीशन में. हेलो ऑल परफेक्ट, ऑल गुड. मनप्रिया, ड्रीमर, चौधरी, विपुल, रुपेश, अनिल, प्रिंसी, रेशमा, साबू, नितेश, मयंक,
गाड़ी धो के आया राहुल। राहुल टोंगर से जो है घर वाले चाइल्ड लेबर का काम करवा रहे हैं, इनसे गाड़ी धुलवाई जा रही है। इस तपती हुई धूप में इस बेचारे से गाड़ी धुलवाई है। मे गॉड ब्लेस योर स्किन, योर एपिडर्मिस एंड डर्मिस। So my dear friends who all are back right now after the heavy meals, ये क्या लैंग्वेज लिख दी भाई अनोनिमस पर्सन ने, गाली वाली दे रहे हो क्या? ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं ये कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। सफरनामा ख्यालों का सफरनामा। क्या बात है। मैंने क्या खाया? मैंने खाई बिरयानी। दिन 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 दिन। खाई 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 बिरयानी खाई। नाइस 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 नाइस। यस, एक्चुअली वन ऑफ आवर फ्रेंड मेट देयर, ठीक है। सो ही लाइक ऑफर्ड मी बिरयानी, गिफ्टेड मी कि सर आप इतनी चैंटिंग कराते हो, आई वांट टू लाइक थोड़ा सा मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो उस भाई ने मेरे को बिरयानी खिलाई, ठीक है। मैंने खुद से नहीं खाई, उसने मेरे को बिरयानी खिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि सर आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू प्लीज़, टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। तो ऐसा प्यार मिलता रहे तो मैं तो 24 घंटे भी चैंटिंग कराता रहूंगा, है ना। कितनी मोटिवेशन वाली बात है कि नहीं, है कि नहीं? गूगली गूगली मूच। Then menopause, the last topic of gynecology which we are studying right now would be your menopause, would be your menopause. uh Hyderabad, what all chanting I'm going to do, let me see if I'm having the poster for all the Telangana people. Yeah, so these are the subject which is going to happen in the Telangana: pathology, FMT, ophthalmology, PSF and pharmacology. 3 days session is there, sir, and please contact on this number for the seats for the NLC Telangana, free of cost from my side to all the FMGs. Please come there, join our center at NLC Hyderabad, ठीक है। कल के बाद बिल्कुल, कल के बाद बिल्कुल आराम से, है ना, ठीक है। चलो, हाँ सर, शायरियों के फोटो भाई रखे होते हैं मैंने, बोलनी कहाँ से इतनी सारी, है ना। यूट्यूब में टुमारो यूट्यूब में डॉक्टर देवेश मिश्रा वुड बी देयर फॉर द पैथोलॉजी सीरीज, देन PYQ by डॉक्टर सारा on 30th and 31. From first on first we are having medicine TND, and second and third Maha chanting. Again I will be coming from the Maha chanting. Quick recap of all the subjects, ठीक है, ठीक है दोस्तों। So I'll be doing work and you also study in this time. So cessation of menses, matlab menopause, matlab now menses has been stopped. Cessation of menses for more than 1 year in menopause age. Sir, menopause age in India is 47 years. If now the age is 48 years and the periods are not coming from last 1 year, that means now it is menopause. It is now menopause. Okay. Please, if you want me to come, what I suggest you, if you want me to come Ahmedabad, if you want me to come Punjab, just a request that I don't charge anything, nothing like that. Just यार थोड़ा सा अगर space arrange कर दोगे, just की place arrange हो, I can come anytime for 2 days session. 6 subjects I will take in 2 days and job would be done. If you guys have volunteer 50, 60, 80 students, just you can little bit from yourself also contribute and arrange one hall. Just I need hall. कुर्सी भी नहीं दोगे ना बैठने के लिए, वो भी चल जाए, मैं खड़े खड़े ही 2 दिन लेता रहूंगा, no problem. But you have to also make some effort. I am available free of cost. I'll arrange my ticket myself only. I can come anywhere you want me to come, ठीक है जी। This is from my side, ठीक है। Then coming sir, cessation, ठीक है। Cessation of menses for more than 1 year, and India menopause age would be your 47 year, would be your 47 year. Sir, at menopause what will be happen? There is a cessation of HPO axis. Sir, there is a cessation of HPO axis, HPO axis, ठीक है। देखो मैं सबको खुश नहीं कर सकता प्लीज, वरना मेरे को सब खुश कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हमेशा रहती है।
At menopause, cessation of HPO axis, estrogen would be less and progesterone also would be less. So sir, now the symptom of menopause, the question has been asked from the examination hall. So remember, earliest and the most common would be hot flushes. Earliest and most common would be your hot flushes, and remember the management is tibolone. This is your previous year question. Hot flushes is the earliest symptom you will see in the menopause. And what is menopause? It's the cessation of the HPO axis more in the menopause age for more than 1 year. Now, osteoporosis mein drug of choice would be bisphosphonates. For the osteoporosis patient in the menopause, your drug of choice will be bisphosphonates, would be बिस्फोट। ये एचपीओ एक्सिस क्या होती है? ये बहुत गंदा सवाल था। एच मन हाइपोथैलेमस, ओ मैंने ओवरी, है ना, और पी मैंने पिट्यूटरी, ठीक है जी। और ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी बिस्फॉस्फोनेट। वेजाइनल ड्राइनेस, अगर वेजाइना ड्राई हो जाएगा बुढ़ापे में, और क्या करोगे? लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन तुम्हारी स्किन को, फीमेल्स के अंदर देयर इज मोर ईस्ट्रोजन, और फीमेल की स्किन कैसी होती है? गुगली मुगली, सॉफ्ट सॉफ्ट, क्यूट क्यूट, है ना। फीमेल की स्किन कैसी? बड़ी नाजुक सी होती है, बड़ी ऐसे चमकीली सी होती है, बड़ी क्यूट सी स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन होती है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। अगर वेजाइना सूख जाता है, उसमें भी क्या लगाते हो? ईस्ट्रोजन लगाते हो। और अगर अगर बुढ़ापे में तुम्हारा मन करता है माहौल बनाने का, लिबिडो कम हो जाती है, तो मैनेजमेंट में क्या दोगे? एंड्रोजन्स। क्या दोगे? एंड्रोजन। सर व्हाट यू विल गिव इन द मैनेजमेंट? यू विल गिव व्हाट? एंड्रोजन। डन डना डन डना डन। Premature menopause. Sir, what is premature menopause? Means now there is a cessation before 40 years. Sir, this is normal or abnormal? Cessation of ovarian axis before 40 years is normal or not normal? Sir, this is not normal, but most commonly it is happening because of genetic cause. It is happening because of genetic cause. ठीक है, चलो उसके बाद ओवेरियन एक्टिविटी का असेसमेंट कैसे करना है? सी, if antral follicle count is more than 6, it is abnormal. Day 3 serum FSH याद रखना है तुम्हें, FSH should not be there. If it is menopause, FSH should not be there. If more than 20 means FSH coming, more than 40 means confirm FSH coming. Now it is not menopause. Now it is not menopause. Best test would be anti-Mullerian hormone for the assessment of cessation of menses. You have to check anti-Mullerian hormone, and the normal anti-Mullerian hormone would be, sir, 2 to 6.8 nanogram per ml. Nanogram per ml. Now, if it is less than 0.5 nanogram per ml, then it is confirmed that now HPO excess is stopped. What about a delayed menopause? Now it should happen at 47 years of age. Now it is happening after 55 years of age, and the most common cause would be your uterine fibroids. Uterine fibroid is the most common cause of menorrhagia, मन भर के bleeding, menorrhagia. तो guys, इसी के साथ हमारा gynecology is done, dana, done, dana, done. Gynec is over. Let's start with the obstetrics. Clear हो गया जी? Gynae part is clear to all of you? Are you able to recall what you have studied from last many days? Are you able to recall the things you have studied? जोश ठंडा हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? सो से गए खाना खाने के बाद, कैसी निद्रा सी आ गई? कुछ लोग लौट के ही नहीं आए क्या? बिरयानी बनाने लग गए क्या? क्या हो गया भाई? What happened? डन है? बहुत पुअर रिस्पॉन्स आया है। ये दोबारा से कराऊं क्या? दोबारा से सारी गाय नहीं कराऊं है? और लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। सो गए, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, मुन्ना करे तमाशा। या फिर क्या है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। आहा 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 हा। Guys, the number one topic in the obstetrics would be our placenta, favorite placenta. It is formed by MCQ decidua bacillus.
Placenta is formed by deciduobacilis plus chorion frondosum plus chorion, ठीक है, प्लस कोरियन फ्रंडोसम, कोरियन फ्रंडोसम, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आ चुके हैं, ठीक है। Dalo. Chorion frondosum plus decidua basalis. Most common site of placenta. Sir, this is your previous year MCQ. Most common site of placenta would be upper posterior or fundo posterior. Most common site of placenta would be your upper posterior or fundo posterior. Upper posterior or fundo posterior. Sir, now coming to the weight of placenta. What is your weight of your placenta? Sir, it is your 500 grams. आधे किलो का placenta. The weight of placenta would be your 500 gram, would be your 500 gram. Now coming to the volume of placenta, sir. Sir, volume of placenta is 500 cc. Weight is 500 gram, volume is 500 cc. 500 cc is further divided into two, fetal component and the maternal component. Maternal component is less as compared to the fetal component, and remember, fetal it is 350 cc and maternal it is 150 cc. Done. Weight of placenta 500 gram, volume 500 cc, and out of that 350 cc is maternal fetal part and 150 cc is maternal part. It is maternal part. Done. Now let's talk about the hormones secreted by placenta. Sir, hormone secreted by placenta would be your HCG. And if you recall from the morning, I told you what? HCG is responsible for the what? Amenorrhea. Primary amenorrhea. HCG is responsible for the primary amenorrhea. You remember na? From the morning I told you in the pregnancy physiological amenorrhea के अंदर हमने पढ़ा था, physiological amenorrhea के अंदर क्या पढ़ा था? HCG is responsible in the pregnancy, and in lactation who is responsible? Prolactin. In lactation who is responsible? Prolactin. Done. Chalo, let's talk about the hormone secreted by placenta. Human placental lactogen HPL, then estrogen, progesterone, sir. Then coming to the HCG, human chorionic thyrotropic hormone. Human chorionic thyrotropic hormone. Then coming papa. पापा मेरे पापा जी, पापा कहते, पापा का भी बहुत बड़ा रोल है भाई, पिताजी का भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम डॉक्टर बन रहे हैं, पिताजी का सैक्रिफाइस भी ऑल्सो, इसलिए राइट इन द चैट बॉक्स आई लव माई पापा, आई लव माई डैड, आई लव माई पापा, आई लव माई पिताजी। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बस लिख डालो आज, क्योंकि पापा कहते हैं, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, ला 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 रा 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 रा। तो पापा कहते थे दोस्तों, बस नाम करना है, बस क्या करना है? नाम करना है। पिताजी का सैक्रिफाइस भी अनमैच्ड है, माताजी का सैक्रिफाइस भी अनमैच्ड है। अब जो तुम उनको गिफ्ट देने वाले हो 4 तारीख को, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसकी कोई मुकाबला नहीं है दोस्त, वो मतलब अल्टीमेट गिफ्ट होने वाला है। एंड यू ऑल आर रेडी टू गिफ्ट योर पेरेंट्स दैट पासिंग सर्टिफिकेट। भाई डॉक्टर के पापा जा रहे हैं, डॉक्टर की मम्मी जा रही है, ये जो 2 लफ्ज है ना, ये आपके पेरेंट्स की उम्र भर की कमाई है, ये उनकी जिंदगी भर की कमाई है कि डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर के पापा, डॉक्टर की मम्मी, या डॉक्टर के भाई, डॉक्टर की बहन, डॉक्टर का अंकल, डॉक्टर का फूफा, ये लफ्ज, ये पहचान अब चेंज होने वाली है उनकी। पहले तुम जाने जाते थे फलाने का बेटा, टिंके का बेटा, पर अब नहीं, अब उनको तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। एंड दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट योर पेरेंट्स हैज डन फॉर यू गाइज इन देयर लाइफ बाय सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग। ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ पे लगा के हमें बचपन से अभी तक पढ़ाया ना, इस 1-2 करोड़ से वो वर्ल्ड टूर पे जा सकते थे, इस 1-2 करोड़ से वो अपनी सारी फैंटेसी लिस्ट पूरी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं करी, उन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट करा, हमने सारे खुशियां ली। अब हमारा टाइम आ चुका है अपने पेरेंट्स की खुशियों को वापस से उनको वापस लौटाने का, उनको खुश करने का, और बोलना है मम्मी पापा अब आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी, अब आप घर बैठो, कहीं ट्रिप्स बनाओ, फुल ट्रिप आई विल स्पॉन्सर। मम्मी पापा आप चलो शॉपिंग के लिए, मम्मी कौन से जेवर लेना है मेरे को बताओ, ये लो पैसे, चलो चलो चलते हैं, क्या लेना है, सोचना नहीं आपको, रेट नहीं पूछना, आपने रेट नहीं पूछना, आज आपका बेटा दिला रहा है, बेटी दिला रही है, आज आपने बस खरीद लेना है। ये जो फीलिंग है ना मित्रों, इस फीलिंग का मतलब कैसे भी कोई मतलब
अलग तरीके का सुख है यार, इसको फील करोगे ना, यू विल लिटरली कांट स्लीप एट नाइट, यू जस्ट हैव टू मेक देम, वो दे आर वेटिंग कि कब मेरे बच्चे आके बस मेरे को बोलें कि हाँ पास हो गए, पापा पास हो गए, मम्मी पास हो गए, डन डना डन। चलो जी, let's talk about something known as a distance between the lower edge of placenta and the internal os. Sir, normal distance between the lower edge of placenta and the internal os, ये रहा तुम्हारा lower end of placenta और ये रही तुम्हारी क्या internal os, ये क्या है तुम्हारी internal os है, ये क्या है इंटरनल ऑस है, ठीक है, और ये क्या है लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा, इनके बीच का डिस्टेंस शुड बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, it should be more than 2 centimeter. If distance is less than 2 centimeter, it is known by a term known as low lying placenta. This is known as low lying placenta. This is known as, sir, low lying placenta. Now let's talk about the umbilical cord. Umbilical cord length is 3200 centimeter. Sir, what is the length of umbilical cord? If someone asks you, sir, the length of umbilical cord is 3200 centimeter. And there is a fold of Hobocan present in the umbilical cord. So my question to all of my friends on board right now with me, what are the folds present on the umbilical cord is known as? Sir, your correct answer is folds of Hobocan, the fold of Hobocan. And these fold of Hobocans are filled with a MCQ jelly, and the name of MCQ jelly, previous year question, is your Wharton's jelly. It is your Wharton's jelly. It is your Wharton's jelly. Now, remember anatomy question. Umbilical cord is supplied by 2 arteries and 1 vein. 2 arteries and 1 vein. Which vein? Left or right? How you will remember? Left is left. Left वाली ही रह गई है, तो left vein is supplying. Now umbilical cord, baby की बात हो रही है. Remember, in the normal human being, artery is supplying the oxygenated blood and the vein is supplying the deoxygenated blood. But what is happening in the baby? In the baby, remember, in the fetus, your artery is supplying the deoxygenated blood and your vein is supplying the oxygenated blood. So what is the blood supply of the umbilical cord, sir? There are 2 arteries, 1 vein. Which vein? I am talking about left vein is left. It is your left vein is left. Done, done, done. Then let's talk about the abnormalities related to the placenta. Let's talk about the abnormalities related to the placenta. Number 1, placenta is low-lying placenta. It is your low-lying placenta. And I also told you what? Low-lying placenta is a distance less than 2 centimeter. If distance between the margin of placenta and the internal os is less than 2 centimeter, that is known as low-lying placenta. What if your placenta is fully covering the internal os, that is known as placenta previa? With the help of diagram, I want to explain you. Allow me to do so. If you see this normal placenta, you can see the distance between the side of placenta and the internal os is more than 2 centimeters. Can you appreciate this diagram? It is more than 2 centimeter. What is happening, sir? Low-lying placenta. This is the placental margin. This is internal os. As you can see from this diagram, the distance is less than 2 centimeter. Less than 2 centimeter distance is known as low-lying placenta. And sir, if your placenta is fully covering the internal os, you can see here, it is fully covering the internal os. This is known as placenta previa. Sir, what you will say if your whole of the vessel is covering the internal os? If vessel is covering internal os, then what you will say? Vessel covers internal os. What you will say, sir? Can you tell me? What you will say? The vessel is, this is known as Vasa Previa. This is known as Vasa Previa. Perfect answer, perfect preparation you guys had, and you all are going to pass this exam. Done, 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 ji. बहुत बढ़िया, शानदार. Then let's talk about something that is known as accessory lobes. There is only one lobe. Normally, there is only one lobe of placenta. But if there are 2 lobes present, that means that is a pathology, that is not something which is normal. So let's learn about those lobes. And remember, the most common complication of accessory lobe would be your postpartum hemorrhage. Because one of the reason in the postpartum hemorrhage, we will be studying today only, that there is retained content of placenta. Retained content of placenta is a cause of
postpartum hemorrhage. It is cause of postpartum hemorrhage, PPH. Now, accessory lobes, which complication is PPH, we are going to study one by one. Number one accessory lobe is your suction churiate placenta. Number one accessory lobe would be your suction churiate placenta. Remember, smaller accessory lobe connected to the main lobe by blood vessel. स्मॉलर एसेसरी लोब कनेक्टेड टू द, एक छोटा लोब है एक बड़ा लोब है, छोटा और बड़ा आपस में कनेक्टेड है ब्लड वेसल से. दिस इज नोन एज सक्शन चूरिएट प्लेसेंटा. दिस इज नोन एज सक्शन चूरिएट प्लेसेंटा. ये देखो, बिगर लोब इज कनेक्टेड टू स्मॉल लोब विद द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई. दिस इज नोन एज सक्शन चूरिएट प्लेसेंटा. दिस इज नोन एज सक्शन चूरिएट प्लेसेंटा. सक्शन चूरिएट प्लेसेंटा. डन डना डन डना डन. Then coming to placenta spuria. Now what is happening? One bigger lobe is there, one smaller lobe is there. Sir, now they are not connected with the blood supply. They are not connected with the blood supply. This is very much known as your placenta spuria. Placenta spuria. If they are connected to blood supply, it is known as suction churiate placenta. If bigger and small lobe are not connected to each other, this is known as placenta spuria. So then coming to the placenta bilobata. Bilobata means two equal size lobes are there and they both are connected to blood supply. Placenta bilobata means two equal size lobes are there and they both are connected to the blood supply. They both are connected to the blood supply. ठीक है जी. उसके बाद क्या है? Battledore placenta. Now the umbilical cord, normally the umbilical cord should be inserted in the center of the placenta. Normally it should be inserted. अगर ये placenta है तो umbilical cord ये है तो ये center में होनी चाहिए. This is very normal. But in battledore placenta, it is inserted at the margin. It is inserted at the margin. So umbilical cord is inserted at the placenta margin. And complication of battledore placenta, which is repeatedly asked in the exam, would be your postpartum hemorrhage. Would be your postpartum hemorrhage. Then filamentous insertion of the umbilical cord. Filamentous insertion of the umbilical cord. Remember how you will remember this. You will remember with the help of, now your umbilical cord is inserted on the placenta itself, but it is not normal insertion. There is rotation from the head or there where then it is coming to the placenta. This is known as filamentous insertion of the umbilical cord. Umbilical cord. And if the umbilical cord is inserted on fetal membrane, then traveling toward the placenta, this is known as placenta previa. This is not Vasa Previa. Please correct it. This is not a Vasa Previa. Please erase it. Okay. Filamentous insertion means something which is not normally inserted on the umbilical, on the placenta. Okay. Chalo. Then coming to the Vasa Previa. This is Vasa Previa. If vessels are, देखो, see, with the help of diagram, you can see now your vessels are covering the internal os. Sir, your vessels are covering the internal os. This is known as Vasa Previa. This is known as Vasa Previa. What if placenta is covering the internal os? This is known as Placenta Previa. This is known as Placenta Previa. Done, done. Vasa Previa की complication भी किया है bleeding per vagina. The complication is bleeding per vagina. Now coming to the differentiation of fetal and maternal blood. Sir, how you will come to know? This is your exam question. How you will come to know that fetal blood is coming or maternal blood is coming out? Let's suppose a female came to you and a female said कि डॉक्टर साहब मेरे वजाइना से खून आ रहा है. Now डॉक्टर साहब, as a doctor साहब, you have to see that it is fetal blood or maternal blood. To check that fetal or maternal blood, sir, you have to perform a test and the name of test is Singer alkali denaturation test or APT test. Singer alkali denaturation test, and sir, it is also known as APT test. What you will do, you will put this blood in the mount and you will check one blood, the blood got denatured. The denatured blood would be of maternal origin and blood which is unaffected, that is your fetal blood. That is your fetal blood. ठीक है जी. तो APT test or Singer alkali denaturation test is done to differentiate between the maternal blood or the fetal blood.
अगर वो डिनेचुरेट हो जाता है देन इट इज योर मैटरनल ब्लड, देन इट इज योर मैटरनल ब्लड. अगर वो अनचेंज रहता है देन इट इज फीटल ब्लड, देन इट इज फीटल ब्लड. डन डना डन डना डन. Now let's talk about the next topic, and the next topic is your amniotic fluid. 100% MCQ. 100% MCQ. Amniotic fluid. Amniotic fluid. See, in obs and gynae, total 40 to 45 questions are asked. Today in this chanting session, we are going to cover 80 to 90 topics. So means we are covering 90% of the topics in the obs and gynae. So there is a chances कि हर एक टॉपिक छोड़ के एक क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में. And this is very positive and good news for all of you that big subject you are going to cover today itself. Just solve the question after this session and you will feel a immense change in your life. More confidence would be coming. मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट करवाया है only 6 hours के अंदर. More than 20 marks you can get while watching those videos. FMT का concise class I have already taken long back and today only I have pasted a link. Just give 5 hours. I guarantee you last time 8 questions came from that FMT notes. From that FMT note 8 questions came. So in this way you can approach more near to the exam. What is needed from your side is dedication, trust and a confidence. If you have confidence you can do very well in your exam. If you don't have confidence, even I can stand on my one leg na, you will not be able to perform better. Anxiety makes our marks less. What do you think? What thing you have to remember that never lose your confidence. You are much more prepared according to this exam. ये एग्जाम छोटी चीज है, तुम्हारी तैयारी बड़े ऊंचे लेवल की हो चुकी है आज की डेट में. समझ रहे हो बात को? विश यू ऑल द बेस्ट. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एमनियोटिक फ्लूइड. दैट इज योर एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है जी. सोर्स क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. अप टू 7 वीक व्हाट इज सोर्स? नंबर 1 टॉपिक. नंबर 2 क्वेश्चन वुड बी अप टू 7 to 20 वीक अप टू. ठीक है. देन कमिंग टू थर्ड वीक इट इज मोर देन 30, मोर देन 30. ठीक है जी. ठीक है दोस्तों, अप टू 7 वीक इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा. So who is making your amniotic fluid in the first 7 weeks? Remember that is a ultra filtrate of the maternal plasma. That is a ultra filtrate of the maternal plasma. Done. Number 1 is over. What about 7 to 20 weeks? It is diffused from the fetal skin. पहले मैटरनल प्लाज्मा फिर फीटल स्किन, उसके बाद 20 वीक्स के बाद कौन बनाएगा amniotic fluid? तुम्हारा फीटल का यूरिन. Fetal urine. Who will make the amniotic fluid? Fetal urine. Along with me, please learn, all of my friends on board with me. Up to 7 weeks, it is an ultra filtrate of maternal plasma. Up to 7 weeks, it is an ultra filtrate of maternal plasma. 7 to 20 weeks, it is a diffusion from the fetal skin, and more than 20 weeks, it would be your fetal urine. Fetal urine. Sir, what is the pH of the amniotic fluid? If I ask you, your pH of amniotic fluid would be 7 to 7.75. Normal turnover time. Now it is highly important. Turnover time of amniotic fluid would be 50 cc per hour. Would be 50 cc per hour, and it get completely replaced in 3 hours. Sir, can you tell me something about the skin? What is the normal turnover time of the skin? What is a normal turnover time of the skin? Thank you so much from the Kerala, Sugamanu. चलो जल्दी से बताओ. What is a normal turn? Yes, Dr. Tanya is absolutely correct. It is 56 days. But in psoriasis, sir, what is happening? In psoriasis, what is happening, sir? Can you answer me? In psoriasis, how many days is your answer? In psoriasis, yes, PC is always correct. 4 days. It is your 4 days. Done, done. Sir, now how you will assess this amniotic fluid? This is highly important topic and I'll make simple for you guys. एक होता है single deepest pocket, एक होता है amniotic fluid index. One is single deepest pocket, as you already know, and it is your amniotic fluid index. Single deepest pocket and amniotic fluid index. And amniotic fluid index, guys, remember 2 types are there: oligohydramnions and poly. Oligo means less. Oligo means less and poly means more. Oligo means less and poly means more. So what about the single deepest pocket?
single deepest pocket in the oligohydramnions would be 2 centimeter, less than 2 centimeter, and amniotic fluid index in the oligohydramnions would be less than 5 centimeter. What about the amount, sir? Amount of amniotic fluid in the oligohydramnions would be your less than 200. तो क्या निमोनिक पॉइंट में हमारा less than 2, less than 5, 200, less than 2, less than 5, 2, 5, 200, 2, 5, 2, 5, 200 oligohydramnion. Single deepest pocket, amniotic fluid index and amount less than 2 centimeter, less than 5 centimeter, and less than 200 ml. Now coming to the polyhydramnions. Polyhydramnions, the single deepest pocket would be more than 8 centimeter. Polyhydramnions, the single deepest pocket would be more than 8 centimeter, and amniotic fluid index would be more than 25 centimeter. तो ये क्या बन गया 8-25, क्या बन गया 8-25, और वॉल्यूम कितनी है पॉलीहाइड्रोमनियॉन्स में? इट इज मोर देन 2000 ml, it is more than 2000 ml. Now oligohydramnions, what is the most common cause for the mild oligohydramnions, sir? For the mild oligohydramnions, remember the most common cause would be idiopathic. पता नहीं क्या नहीं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से अब नहीं वफा करता है, चुप चुप के अब तन्हाइयों वाले दिन चले गए, डैश डैश डैश, जो भी है. मोस्ट कॉमन कॉज इज माइल्ड, मोस्ट कॉमन कॉज इज माइल्ड इज idiopathic, and most common cause of severe is your MCQ, previous year question. Most common cause of severe oligohydramnions and mnemonic is MDH, MDH. तीखी लाल छूकी लाल, मिर्ची खाओ तो MDH तीखा लाल. मैटरनल डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, क्या है मैटरनल डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. Now, most common complication, late complication would be meconium aspiration, and the early complication would be your pulmonary hypoplasia, would be pulmonary hypoplasia. So most common complication, early wala complication is pulmonary hypoplasia, and most common late complication would be your meconium aspiration syndrome, would be your meconium aspiration syndrome. And if remember, it is simple, oligohydramnions means less amniotic fluid. So what you will do, by intrauterine amnio infusion at normal saline at body temperature, नॉर्मल सलाइन यू हैव टू पुट इनसाइड. अब पानी नहीं अंदर तो क्या डालो, बाहर से पानी डालोगे. सो नॉर्मल सलाइन यू हैव टू पुट इनसाइड एट बॉडी टेम्परेचर. ऑलिगोहाइड्रोमनियन इज डन, डना, डन, डना, डन. लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीहाइड्रोमनियंस. Most common cause of mild and severe both now is idiopathic, but the second most common cause would be neural tube defect, and third most common would be your cleft lip, duodenal atresia, annular pancreas. Sir, in duodenal atresia and annular pancreas, remember double bubble sign is still, double bubble sign is seen. ठीक है, डन, डना, डन. एंड ट्रीटमेंट इज एमनियोसिंथेसिस. अब पानी ज्यादा हुआ है तो क्या करोगे, निकाल लोगे. एमनियोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, एमनियोसिंथेसिस. डन, डना, डन, डना, डन. सो ओलिगोहाइड्रोमनियन एंड पॉलीहाइड्रोमनियन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Is it clear to all of you? SDP 25 200, poly 825 2000. फिर तुम्हारा सीवियर कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियन वुड बी MDH. डन, डना, डन. लेट्स टॉक अबाउट द amniotic fluid colors. Let's talk about the amniotic fluid color. The color of amniotic fluid is colorless. Normal color of amniotic fluid would be colorless. At term it is of straw color. At term it is of straw color. And sir, RH incompatibility, the color would be golden yellow. Previous year question, the color would be golden yellow, golden yellow. So guys, remember what? RH incompatibility, it is golden yellow, and post term baby green yellow, would be greenish yellow. If there is a intrauterine fetal demise, not discharge, it is demise, मतलब बच्चा मर गया, तो कैसा होगा, blackish brown. कैसा होगा, blackish brown. And if it is antepartum hemorrhage, that is dark brown, that is your dark brown. तो color कैसा है, नॉर्मली कलरलेस. कैसा कलर है, कलरलेस. कैसा कलर है, कलरलेस. देन
एट टर्म इट इज स्ट्रॉ, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी गोल्डन येलो, पोस्ट टर्म पे ग्रीनिश येलो, इंट्रा यूट्राइन फीटल में ब्लैकिश ब्राउन एंड एंटीपार्टम हेमोरेज में डार्क, अतुल्य डार्क ब्राउन, dark brown, that is dark brown. Now let's talk about the pregnancy. What is the duration of pregnancy? Pregnancy कितनी लंबी होती है? प्रेगनेंसी कितनी लंबी होती है? प्रेगनेंसी कितनी लंबी होती है? ड्यूरेशन इज 40 वीक, ड्यूरेशन इज 40 वीक, दैट इज 280 days, that is 280 days. And guys remember, let's talk about the early term, term and late term. Early term, early term, then late term. 37 week, 37 week to 38 week, 37 to 38 weeks, ठीक है, would be your early term. 37 to 38 weeks 6 days would be your early term. 39 to 40 weeks 6 days would be your term baby, would be your टर्म बेबी. ये देखो, बिन बुलाए बराती थर्ड क्लास लोग आ चुके हैं चैट के अंदर, बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ आके शोर मचाने वाले थर्ड क्लास पीपल आर हेयर. आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू प्लीज थ्रो देम आउट फ्रॉम हेयर, दे आर नो मोर वेलकम हेयर, प्लीज गो अवे. ठीक है, कूड़ा मेरे को चाहिए नहीं यहाँ पे अपने ग्रुप में. ठीक है, 37 week to 38 weeks 6 days it is early term. 39 to 40 weeks 6 days would be term. And 41 weeks to 41 weeks 6 days it is your late term, it is your late term. ठीक है, it is your late term. It is your late term. इट इज लेट टर्म. देखो कूड़ा आ चुका है, कूड़ा, कूड़े की सफाई करी जाए, कूड़े को साफ किया जाए जल्दी से. कूड़े आ चुके हैं, जलने वाले आ चुके हैं, जलू पीपल आर हेयर, जिनकी बहुत ज्यादा जल रही है बेचारे. वाह, हेटर्स हमेशा होने चाहिए. हेटर्स जो है मोटिवेशन देते हैं, ऐसे कूड़ा का कचड़ा जो है आपको साफ रहने की मोटिवेशन देता है. वेरी गुड, शाबाश, कीप ऑन सेइंग, नो प्रॉब्लम. ये देखो इतना सारा प्यार है, देख प्यार दिख रहा है चैट बॉक्स में, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे सिपाही बहुत है तुम्हारे लिए. तो दोस्तों 37 to 38 weeks 6 days would be early term. 37 weeks to 38 weeks 6 days would be early term. 39 week to 40 weeks 6 days would be your term baby. And remember, ठीक है, कैसे कैसे बंदे यार, मतलब इनको चैन नहीं पड़ता, इनको नींद नहीं आती कि ये बेचारा छोटा सा लड़का कैसे पढ़ा रहा है. मतलब इनके, मतलब यही तो मोटिवेशन है ना, यही तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है ना. क्या बात है, क्या बात है. थर्टी सेवन वीक टू 38 वीक 6 डेज इट इज अर्ली टर्म. ऐसा पता होता है, जब मैंने नई नई चैंटिंग कराना शुरू करी थी ना, तो अभी तो ये 2-3 ही कूड़े रह गए हैं, उस टाइम पे 10-15 कूड़े आते थे, बट आई नेवर स्टॉप्ड. और मतलब मैंने स्टॉप नहीं करा, इस वजह से कितने लोग पास हुए और उनका फीडबैक एक ही था कि सर इनको छोड़ो आप, ये जो मतलब कूड़ा आता है ना, इनको सच में छोड़ दो, वी एक्चुअली नीड यू. तो वही मेरी मोटिवेशन थी सबसे बड़ी लाइफ की, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. ठीक है, शाम तक रात तक जब तक होएगा अपना काम करते रहना. ये कूड़े आके सुनाते रहेंगे, इनको ना भेजा जाता है पैसे देके, इनको दल्ला बनाया जाता है ताकि किसी की चैट पे जाओ, उनको जाके कुछ कुछ बोल के आओ. तो ये दल्ले हैं, सच में दल्ले हैं, ये किसी के दल्ले हैं, वरना नॉर्मल पीपल शुड नॉट बॉदर कि क्या हो रहा है. एंड फ्री में कर रहे हैं, एंड दे शुड अप्रिशिएट कि कोई अपना एफर्ट लगा रहा है, कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, बट दे आर पेड, दे आर दलाल दल्ला, सो दे कम हेयर मॉक अस. चैनल भी हम पे ही आते हैं, मतलब हमारे घर आएंगे, हमें सुना के जाएंगे, अबे तेरे घर के पेंट बढ़िया नहीं है, अबे आया क्यों मेरे घर में, निकल यहां से पहली फुर्सत में, बट यहां से, है ना. ठीक है, चलो
ये दल्ले आते रहेंगे, इनको हम दल्ला दल्ला बोल के भगा देंगे यहाँ से। 39 वीक टू 40 वीक 6 days would be term baby, and 41 weeks to 41 week 6 days would be late term, and sir more than 42 weeks it would be your post term। ठीक है, मान नहीं रहा ये दल्ला, देखो जा नहीं रहा बिल्कुल, इसको कूड़ा कह दिया, इसको दल्ला कह दिया, बड़ा बेशर्म आदमी, बड़ा ट्रेंड है यार ये तो, है ये बड़ा ट्रेंड है भाई, है ना। चलो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है दोस्तों? अप टू 12 वीक्स वी से व्हाट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 13 to 28 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज second to 13 to 28 weeks, and third trimester it is more than 29 weeks। ठीक है, तो तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। तो ऐसे बुरे लोग जो है, इवन लोग जो है सचिन तेंदुलकर को गाली दे देते हैं, लोग भगवान को गाली देते हैं, मैं तो बिल्कुल बीपीएल आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, है ना। डन डना डन डना डन, चलो हाँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, चलो जी, हा गया 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 गया, ठीक है। चलो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू 12 वीक्स, इट इज अप टू 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 13 to 28 वीक्स, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वुड बी योर मोर देन 29 वीक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्टिमेटेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी। आज कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, पहली बात तो मुझे एमएस बनना नहीं है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी नेगलेस फॉर्मूला क्या है? नेगलेस फॉर्मूला होते बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा कब पैदा होगा? दैट इज एक्चुअली टोल्ड बाय द हेल्प ऑफ एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड plus 9 month plus 7 days, just remember this formula। for example, last menstrual period आज कितनी डेट है? 28 मई, 28 मई। can you calculate the estimated date of delivery? Estimated date of delivery, can you tell me? Can you tell me what is the estimated date of delivery? Last menstrual cycle, some female came to you and she has given a history of 28 May। Sir, remember what is your estimated date of delivery? बच्चा कब पैदा होगा? बच्चा कब पैदा होगा? जल्दी बताओ, बच्चा कब पैदा होगा तुम्हारा? When is your child going to born? Tell me, जल्दी। 28 मई 2022 से लेके 28 मई 2023, ठीक है, उसमें माइनस कर दो 3 महीने, कब बच्चा पैदा होगा? गलत 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 आंसर दे रहे हो भाई। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी होगी 28, अब इसमें 7 दिन ऐड कर दो 28 फरवरी में, तो इट इज ऑलमोस्ट 7 मार्च। इट इज योर 7 मार्च, यस इट इज योर 7 मार्च, ठीक है। इट इज योर, बिकॉज फरवरी में 28 ही दिन तो होते हैं ना। इट इज योर 7 मार्च, इट इज योर 7 मार्च, ठीक है। चलो, नाउ one other method is also there। what is that method? count back, just add 1 year and count back 3 months, add 1 year and count back 3 months and add 7 days। एक साल प्लस कर दो सीधा, जैसे मैंने बोला 28 मई है तो 28 मई 2020, 28 मई 2023 कर दो इसको, इसमें से माइनस करने 3 महीने, तो मई महीने में से 3 महीने माइनस करना, कौन सा महीना बनता है? मई महीने से 3 महीने माइनस कर दो, कौन सा महीना बना बचा? जल्दी से बताओ कौन सा महीना बचा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई, फिर तुम्हारा क्या था? अप्रैल, और फिर मार्च। मार्च आ गया, 28 मार्च आ गया, क्या आ गया? 28 मार्च आ गया। 28 मार्च में से तुम्हें क्या माइनस करने हैं? 7 दिन माइनस करने हैं, और सॉरी ऐड करने हैं। नहीं, फरवरी आना चाहिए, फरवरी में 7 दिन प्लस कर दिए तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा? 7 मार्च। क्या आंसर आएगा? 7 मार्च। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। याद हो गया जी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। आई नो मेरी तरह मैथ बहुत सारों का खराब है, मैंने मेडिकल ही इसीलिए लिया था क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत खराब है, ठीक है। बट एनी हाउ,
चल रहा है काम बढ़िया, है ना, मजे आ रहे हैं, है ना दोस्तों। चलो डन डना डन। Remember the true conceptional period. This is asked in the exam. What is true conceptional period? अब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री दी थी उसमें 14 डे तो मेंस्ट्रुएशन क्या है हुआ है, उसमें क्या ना ओवुलेशन तो होने वाला, पहले 14 डे में क्या प्रेगनेंसी हुई कि 14 डे के बाद प्रेगनेंसी होती है। सोचो मैंने बोला 280 डेज का एमनोरिया हुआ, बट 280 डेज में से जो पहले 14 डे थे उसमें तो क्या ओवुलेशन हो रही थी ना, उसमें अभी बेबी फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, उसमें जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई ना। इसीलिए whenever someone is deliberately asking you true conceptional period, that is period of amenorrhea, sir your answer is period of amenorrhea minus 14 days, 266 days, that will be your 266 days। तो क्या होता है तुम्हारा ट्रू कॉन्सेप्शनल पीरियड, 14 दिन को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज में तो ओवुलेशन हो रहा था ना, उसमें बच्चे स्पर्म चला भी जाएगा तो किसी काम का नहीं है, बट मेंसेस तो शुरू से ही बंद हो रखे हैं। दैट इज व्हाई रिमेंबर ट्रू कॉन्सेप्शनल पीरियड इज पीरियड ऑफ एमनोरिया माइनस 14 डेज, पीरियड ऑफ एमनोरिया माइनस 14 डेज। देन कमिंग टू द ओवुलर पीरियड, देन कमिंग टू द ओवुलर पीरियड, इट इज अप टू 2 वीक्स। अभी अभी बताया 2 वीक्स इज इक्वल टू 14 डेज, ओवुलर पीरियड था इसीलिए वो ट्रू पीरियड ऑफ एमनोरिया नहीं गिना जाएगा। देन एम्ब्रियोनल पीरियड आया 3 to 8 वीक्स तक एम्ब्रियो बना रहा, फिर 9th वीक ऑनवर्ड सर वो क्या बन गया, फीटल बन गया। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज फीटल पीरियड, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज फीटल पीरियड। डन डना डन। Let's talk about the symptoms in the first trimester. Sir, the earliest symptom a female would be telling you in the first trimester would be amenorrhea. And you remember in pregnancy why amenorrhea is there? It is because of HCG. It is because of HCG. It is because of HCG. ठीक है जी। चलो उसके बाद अदर्स की बात करेंगे तो क्या है, मॉर्निंग सिकनेस। अदर्स की बात करेंगे तो क्या है, मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल्सो increase frequency of micturition, or also increase frequency of micturition, also lethargy and breast discomfort, that is known as mammogenesis। तो जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट होती है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच वाज अप टू 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज अप टू 12 weeks, up to 12 weeks, remember the earliest a female would be telling you कि डॉक्टर साहब पीरियड नहीं आ रहे, that is amenorrhea, that is known as amenorrhea। and others would be morning sickness, कि सुबह सुबह मुझे क्या, can you tell me a drug of choice for morning sickness? Drug of choice for morning sickness, can anyone tell me a drug of choice for morning sickness? Sir, you are very much correct and the answer is doxylamine. Answer is doxylamine. Doxylamine. Done, 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 done. This is important previous year question of the exam. Doxy. Yes, yes, yes. Perfect. Then there will be increase in micturition. Then there will be lethargy and breast discomfort. First trimester signs are clear to all of you. Second trimester sign, if I tell you, sir, it is your quickening. Second trimester sign would be quickening, that is perception of fetal movement, that is perception of fetal movement। so एक होता है मल्टी ग्रेविडा, एक होता है प्राइमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मतलब पहले भी गर्भवती हो चुकी है, प्राइमी ग्रेविडा मतलब पहली बार गर्भवती हो रही है। तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर जो फीटल मूवमेंट है वो पहले ही तुम क्या कर सकते हो, अस्कल्टेट कर सकते हो, पालपेट कर सकते हो, ठीक है। बट प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इट विल टेक स्लाइट लॉन्गर एज कंपेयर टू द मल्टी ग्रेविडा। नाउ क्विकनिंग मूवमेंट इज अ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, पैर वैर मारता है बच्चा। मल्टी ग्रेविडा के अंदर इट इज फ्रॉम 16 वीक ऑनवर्ड्स एंड प्राइमरी ग्रेविडा इट इज फ्रॉम 18 वीक ऑनवर्ड, इट इज 18 वीक ऑनवर्ड। तो क्विकनिंग इज अ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट। मल्टी ग्रेविडा 16 वीक, प्राइमी ग्रेविडा 18 वीक, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में थोड़ा पहले पता चल जाता है एंड प्राइमी ग्रेविडा में थोड़ा सा बाद में पता चल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर। Symptom in the third trimester and the name of symptom is lightening or the welcome sign। welcome everybody, body 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 welcome। तो ट्राइमेस्टर थर्ड का क्या है, लाइटनिंग। क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, इट इज अ सेंस ऑफ रिलीफ कि अब बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला, दैट इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है दोस्तों। इन प्राइमी ग्रेविडा दिस लाइटनिंग साइन और वेलकम साइन इज फेल्ट स्लाइट अर्लियर एज कंपेयर टू द मल्टी ग्रेविडा, एज कंपेयर टू द मल्टी ग्रेविडा, एज कंपेयर टू द मल्टी ग्रेविडा, ठीक है जी। तो दोस्तों याद रखना
प्राइमरी के अंदर क्या है 38 वीक एंड मल्टी के अंदर एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ लेबर. सो माय डियर फ्रेंड्स, lightning sign or the welcome sign, remember primary gravida it is felt slight earlier, that is 38 weeks. Multi gravida who become pregnant many times, who delivered baby many times, in those cases the sign would be felt at, it would be felt at your, at the time of labor, it is your time of labor. डन डना डन डना डन. तो क्या क्या पढ़ा हमने सिम्टम्स के अंदर? अर्लीस्ट वॉश या मॉर्निंग सिकनेस वगैरह हो गया हमारा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन हो गया हमारा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेकंड ट्राइमेस्टर. सेकंड ट्राइमेस्टर में एक साइन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? फीटल मूवमेंट की, क्या कहते हैं वो पढ़ा था. फीटल मूवमेंट के लिए आस्कल्टेट करते हो कि नहीं करते हो, वो पता चलता है कि नहीं पता. तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर कैसे पता चलेगा? 16 वीक में. एंड प्राइमरी ग्रेविडा में पता चलेगा 18 वीक में. बट द थर्ड ट्राइमेस्टर में लाइटनिंग साइन और वेलकम साइन तुम्हारा जो प्राइमरी ग्रेविडा उसमें 38 वीक में पता चल जाता है, बट जो तुम्हारी मल्टी ग्रेविडा उसमें एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, लेबर, एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ लेबर. डन डना डन डना डन. चलो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द साइन. लेट्स टॉक अबाउट द साइन. सर साइन की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रिमेंबर द अर्लीस्ट वुड बी गुडल साइन. सो सर अगर तुम्हारा सर्विक्स गुड मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है तो गुड बात है कि बैड बात है? इफ cervix is very very soft, it is good or bad thing? Sir, it is very good thing. And remember the name of sign is Goodell sign. The name of sign is Goodell sign. और Goodell sign सबसे पहले आता है भाई more than 6 weeks. Rest each and every sign what we are going to discuss now is coming above 8 weeks. It's coming above the 8 weeks. Other signs में number one sign is Jacquemer और Chadwick sign. जैकमर और चैडविक साइन. जैकमर और चैडविक साइन. जैकमर और चैडविक साइन कब आता है? मोर देन 8 वीक्स. जैकमर चैडविक साइन आता किस वजह से? ब्लूइश वायलेट डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑफ द वेजाइना, ऑफ द वेस्टिब्यूल ड्यू टू वीनस कंजेशन. तो वीनस कंजेशन की वजह से क्या होता है? जैकमर और चैडविक साइन इज देयर. जैकमर और चैडविक साइन इज देयर. ठीक है, नंबर वन साइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, गुडल साइन था, फिर हमारा जैकमर था, या फिर उसको क्या बोला? चैडविक साइन. तीसरा नंबर है ऑसिएंडर साइन. व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड साइन? सर इट इज योर ऑसिएंडर साइन. It is more than 8 weeks. Osiander sign is more than 8 weeks. And remember, pulsation of the uterine vessels on per vaginal examination. This is known as Osiander sign. Pulsation of uterine vessels on the per vaginal examination. Then coming Pisaki sign. Pisaki sign क्या होता है? पिसाकी, पिसाच है, फैल गया. पिसाच क्या है? फैल गया. एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. कैसे याद करोगे? पिसाच मतलब फैल गया. एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस. फिर है पाल्मर साइन. palm on her abdomen. जैसे तुमने पाम रखा उसके एब्डोमेन में, you will sense some tone due to uterine contraction. अब वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है? ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. तो पाल्मर साइन के अंदर कौन सी कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगी? ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. क्या देखने मिलेगा? ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. एंड दोस्तों याद रखना, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कितनी है? less than 8 mmHg. It is less than 8 mmHg. Less than 8 mmHg. This is known as Palmer sign. This is known as Palmer sign. Done, done, done. Then coming to the Hager sign. What is Hager sign? You have to put one finger from the abdomen and one finger from the vagina, and you will see the two fingers are approximating each other. The two fingers are approximating each other. This is known as Hager sign. This is known as Hager sign. This is known as Hager sign. Done, 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 done. Second trimester, which sign you will see, sir? Palpation. Palpation of the fetal parts and auscultation of the fetal heart sound. Second trimester is 13 week to 28 weeks, and in this period guys remember palpation of fetal parts and auscultation of fetal heart sound. पालपेट कर सकते हो फीटल पार्ट को. याद है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम पढ़ा था, सेकंड ट्राइमेस्टर में सिम्टम पढ़ा था हमने. क्या सिम्टम पढ़ा था हमने?
कि जो मल्टी ग्रेविडा है उसके अंदर 16 वीक में तुम पार्ट फेल्ट कर सकते हो, बट इन द प्राइमरी ग्रेविडा 18 वीक में पार्ट कर सकते हो, ठीक है आज का टेक। पर here in the second trimester signs, if I talk about palpation of fetal parts and auscultation of fetal heart sound, you can do 18 week onwards. Which week onward? 18 week onward। और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसमें भी क्या लाइट गिर रही है, बच्चा गिरने वाला है। It is a best clinical sign of pregnancy. Lightning sign is felt at in primary gravida. It is felt at the time of labor. Primary gravida it is felt at the 38 weeks, and at multi gravida it is felt at the time of labor. At the time of labor. Done, dana, done, dana, done, dana, done. Then coming to the investigation. Sir, then coming to the investigation, the earliest investigation you all know, that is the earliest investigation would be urine pregnancy test. Best time to check the ये क्या कहते हैं प्रेगनेंसी थ्रू द यूपीटी किट। तुम्हें पता है ना सबको, एफएमजीज ऑल नो यूपीटी किट है ना। जब घर वाले लड्डू वगैरह सब डाल रहे होते थे बैग में, तो वहां पे एक चोरी वाली जिप में तुम क्या रख के लेके जाते थे? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। यस और नो? हाँ, मुस्कुरा दिए, याद आ गया वो सारी हरकतें जो तुमने करी हुई है कि नहीं? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। बेस्ट इज अर्ली मॉर्निंग। सर बेस्ट इज अर्ली मॉर्निंग। यूपीटी पॉजिटिव इज ओनली व्हेन एटलीस्ट शी इज 1 डे ओवरव्यू, मतलब पीरियड स्टॉप हुए कम से कम भी एक दिन हुआ होना चाहिए। लेट सपोज 4 तारीख को पीरियड आने थे, 4 को नहीं आए, 5 तारीख से तुम क्या कर सकते, देख सकते हो यूपीटी के थ्रू कि हाँ वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, हाँ वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के लिए क्या, एक फिया होती है, एक रिया होती है। ब्लड टेस्ट में फिया और रिया ये क्या चेक करती है? एचसीजी के लेवल चेक करती है। और प्रेगनेंसी हो तो एचसीजी लेवल प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर एमेनोरिया का कॉज क्या पढ़ा था हमने? एचसीजी। तो कैसे चेक करोगे, फिया या रिया? हु इज बेटर, फिया और रिया? फिया फिया ओ फिया फिया, फिया फिया ओ फिया, फिया इज बेटर देन रिया, फिया इज बेटर देन रिया। तो गाइस याद रखना, ब्लड टेस्ट कैन डायग्नोस प्रेगनेंसी अप्रॉक्स 1 वीक बिफोर ओवरड्यू, यानी कि पीरियड रुकने के एक हफ्ता पहले भी डायग्नोस कर सकता है प्रेगनेंसी है कि नहीं है। कौन? फिया रिया टेस्ट, दैट इज ब्लड टेस्ट, दैट इज व्हाई दिस इज बेस्ट टेस्ट। बट इफ आई आस्क यू मोस्ट कॉमनली व्हाट वी यूज, most commonly which test we use, that is urine pregnancy test kit, that is UPT, that is UPT। done dana done dana done। गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली, दुख ही दुख है जिंदगी में। डॉक्टर लोकान कह रहे हैं इनको गर्लफ्रेंड नहीं मिली। यहाँ मैंने कहा मंडी लगा रखी है गर्लफ्रेंड की, पढ़ा रहा हूँ भाई, कैसी कैसी बातें करते हो बहकी बहकी। Then HCG, who secretes the HCG? सर प्लेसेंटा से तो आ रहा है। If I ask you which cells of placenta, this question has been asked in the exam. It is secreted by syncytiotrophoblasts, previous year MCQ, ठीक है? It is your इट इज योर सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, इट इज योर। और मास्टर राहुल कह रहे हैं कि कलंक को आपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, गलत बात है ना? तो दोस्तों HCG secreted by syncytiotrophoblasts, HCG secreted by syncytiotrophoblasts। नाउ HCG का स्टेटस क्या है? पहली बात तो सुनो, HCG doubles every 48 hours। Now if I ask you to perform a blood test, will you perform it 1 time or you have to perform 2 times? Sir, you have to perform 2 times. 1 day you will do, after 48 days again you will do. You have to compare the value. If the value is double, that means that lady is pregnant, that means that lady is pregnant। ये बॉबी जी जो है अपनी सारी बातें बताने लग गए हैं। भाई भाई यहाँ क्या चल रहा है? कोंडम कांडम जैसी बातें हो रही है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्लास चल रही है कि यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट खोल दी मैंने, कि डेटिंग साइट टिंडर खोला हुआ है यहाँ पे? नहीं तो चाइना वालों के टन टन खोल दिया मैंने, और रशिया यूक्रेन वालों के यहाँ क्या था, वीकंग तत्ते, क्या था, वीकंग तत्ते बायदू। तोबा तोबा तोबा, ये कैसे अश्लील लड़के और लड़कियां हैं, ये कैसी कैसी बातें करें बहकी बहकी। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? मतलब तुम्हें इतना अच्छा वेजाइना पढ़ाया, इतने अच्छे यूट्रस पढ़ाए, इतने अच्छे प्रेगनेंसी सिखा रहा हूँ, तुमको वहां मन नहीं लग रहा, तुमको वहीं जाना है तुम, मतलब हद है यार।
HCG doubles every 48 hours, peak at 10 weeks. Peak is at 10 weeks and start declining now. And after that, plateau is at 16 week. And when it disappears, sir, it disappear 2 weeks after the delivery. डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद HCG गायब हो जाता है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. HCG doubles every 48 hours. Number 1 MCQ. When is a peak of HCG? 10 weeks. Plateau of HCG? 16 weeks. And when your HCG is disappearing from the circulation, sir, it is your 2 weeks after the delivery. Now let's talk about what ultrasound. There is two type of ultrasound are there, and this is your repeated MCQ question. Transvaginal and transabdominal ultrasonogram. I'll make it very simple for you guys. See what you have to see on which week you will see what on the ultrasound. This is question repeatedly asked. Gestational sac, yolk sac, embryo sac, GYM ऐसे याद कर लो. जिम क्या याद कर लो? जिम. Gestational sac, yolk sac, embryo sac. Gestational sac, yolk sac, embryo. Gestational yolk embryo. Gestational yolk embryo. Gestational yolk and embryo. Guys, remember gestational sac mnemonic is 4 week, 5 weeks, 6 weeks. Transvaginal sonogram, the mnemonic is 4 week, 5 weeks, 6 weeks. 4 week, 5 weeks, 6 weeks. 4 weeks, 5 weeks and 6 weeks. 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks. Gestational sac, yolk sac, embryo sac. Gestational sac, yolk sac, embryo sac. And trans abdominal का निमोनिक क्या है? 5 week, 7 week, 8 week. 5 week, 7 week, 8. 578 is a mnemonic for trans abdominal sonogram and 456 a mnemonic for transvaginal sonogram. Done. Best USG parameter would be crowned rump length. Best USG parameter would be crown rump length. It would be crown rump length. And best sign of pregnancy would be visualization of activity by ultrasound. Best sign of pregnancy would be visualization of the activity by ultrasound. Gestational sac, yolk sac, embryo sac. तीनों sac कब कब देखने मिलते हैं? In the transvaginal and the transabdominal. You are very good with this. Done. Let's talk about the changes in the pregnancy, sir. The next topic is changes in the pregnancy. Guys, remember on face there is a brown black pigmentation known as melasma due to increase in melanin. It is due to increase in melanin. Dermatology chanting, we have discussed it very briefly. याद आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में चेंज क्या होती है? मुंह पे क्या चेंज होती है? ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन फोरहेड, चीक ड्यू टू melanin, increase in melanin, and this is known as melasma. This is known as melasma. Now ब्रेस्ट में क्या होता है दोस्तों? प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है. ये घबराने की बात है? नहीं घबराने की बात है. अगर प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल सेइंग कि डॉक्टर साहब मेरी ब्रेस्ट बहुत बड़ी हो रही है, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग. ब्रेस्ट इज एनलार्ज. क्या है? ब्रेस्ट इज एनलार्ज. सेकेंडरी एरियोला विल बी मोर बिग. निपल के आसपास की जो स्पेस होती है दैट विल बिकम मोर बिग. व्हाई इट इज बिकमिंग मोर बिग? दैट इज बिकमिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेलानिन. तो प्रेगनेंसी में मेलानिन बढ़ता है कि कम होता है? यस सर, प्रेगनेंसी के अंदर मेलानिन बढ़ता है. नेक्स्ट इज मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स. इट इज हाइपरट्रॉफिड सेबेशियस ग्लैंड. अगर ये तुम्हारा निप्पल है, इसके आसपास में छोटे छोटे सैटेलाइट लीजन यू विल सी. दिस इज नोन एज मोंटोगमेरी ट्यूबरकल. दिस इज नोन एज मोंटोगमेरी ट्यूबरकल एंड दिस इज फॉर्मिंग ड्यू टू हाइपरट्रॉफिड सेबेशियस ग्लैंड. Hypertrophied sebaceous gland. Then coming to the colostrum. Sir, colostrum is a yellow milk. It can be secreted 12 week onwards on squeezing the breast. It can be secreted 12 weeks onwards on squeezing the breast. ब्रेस्ट को प्रेस करोगे 12 वीक ऑनवर्ड्स प्रेगनेंसी के अंदर, वहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मिल्क निकलेगा. बट इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट एंड यू विल प्रेस द ब्रेस्ट, विल मिल्क कम और नॉट कम? नो, मिल्क विल नॉट कम, मे बी लव विल कम. ठीक है, चलो डन डन. ठीक है जी. तो क्या क्या चेंजेस हुई ब्रेस्ट में? एनलार्जमेंट हुई, सेकेंडरी एरियोला बड़ा हो गया, मोंटोगमेरी ट्यूबरकल आए, कोलेस्ट्रम आया. डन डन.
Let's talk about something which you have seen. Xiphisternum to the pubic symphysis. Sir, there is a black line, brownish black line from xiphisternum to the pubic pubic symphysis, and this black line is known as what? Linea nigra. This black line is known as what? Linea nigra. Okay, linea nigra from xiphisternum to the pubic symphysis. Now there are curvy linear lines. There are curvy linear lines starting from the lateral side coming to the medial side. This is known as stria gravidum. In the pregnancy, they are of red color. They are of red color. But after the delivery, these curvilinear line will turn into white color. Will turn into white color, and now white color is known as stria albicans. After pregnancy, these are known as stria albicans, and during the pregnancy, these curvilinear lines are known as stria gravidum. And what about the central line? According to my buttons, you can see it is your linea nigra. It is your linea nigra. Dandana, 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 done. ठीक है जी. चलो उसके बाद क्या है? वजाइना. वजाइना के अंदर क्या चेंजेस आती है? वजाइना कैसा हो जाता है? वॉयलेट कलर का, ब्लूइश वॉयलेट कलर का वजाइना. विच साइन इज दिस? Bluish discoloration. Which line is this? Which sign is this? Can you tell me? This is known as Jacquemus or Chadwick sign. तो प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइना कैसा होता है? नीला नीला. और दोस्तों याद रखना, प्रेगनेंसी में वेजाइना का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है. मतलब प्रेगनेंसी में वेजाइना क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है. इसीलिए प्रेगनेंसी में वेजाइना से दूर रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेजाइना जहरीला हो जाता है. जहरीले वेजाइना से तुमको दूर रहना है. अगर तुम वेजाइना के पास जाओगे, जहरीले वेजाइना के पास जाओगे प्रेगनेंसी में, हो सकता है जल जाओ, सड़ जाओ. इसलिए जल के नहीं रहना है, दूर रहना है. कैसे रहना है? थोड़ा सा दूर रहना है. समझ में आ गया भाई? नहीं जाना है पास प्रेगनेंसी में वेजाइना के. डंडना 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 डन. कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. फंडल हाइट असेसमेंट. इट इज योर फंडल हाइट असेसमेंट. ठीक है, हाँ जला के रख देगा भाई, दूर रहना. ठीक है, समझ गए बात को? बिल्कुल 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 बिल्कुल. कहते हैं सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है. दोस्तों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है. सपने के लिए बिना मेहनत के सोना पड़ता है. सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत. लक्ष्य के लिए क्या है? बिना नींद के मेहनत चाहिए. समझ में आ गया? तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अब की बार 200 पार, आई विल पास. अब मेहनत के साथ बिना नींद की मेहनत चाहिए. नींद कम से कम 5 से 6 घंटे फॉर द नेक्स्ट 6 डेज, और छठे दिन पे मारना है छक्का. इस छक्के को मारने के लिए क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सब तैयार हो इस छक्के को मारने के लिए? 4 तारीख को 6 हिट करके आना है सबने, क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ छक्का चाहिए अब. और यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड टू हिट द 6, एंड यू ऑल आर गोइंग टू पास. यू ऑल आर गोइंग टू पास. यू ऑल आर गोइंग टू पास. ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है. ये खत्म हो जाएगा 6 साढ़े 6 बजे तक. आराम से इसको 2x पे भी देखना है. ऑल द थिंग्स यू विल बी एबल टू रिकॉल. ठीक है, एंड इन इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लो, please, I am always available on my Instagram account. You can send me messages there. Guys, this is my official and only account on Instagram. Anytime you can send me requests, anything you want to share, you want to talk. Most probably I prefer to talk on text only. ठीक है, taking call is not like feasible for me, because if I give 10 minutes to 50-60 call, it will take around 6 hours. So 6 hours I will talk with someone when I can teach. समझ रहे हो बात को? इसीलिए द मेन मुद्दा इज कि बात करो, टेक्स्ट छोड़ दो. वेन एवर आई विल बी फ्री, आई विल बी रिप्लाइंग यू गाइज फॉर श्योर. कसम पर ये देखो, बाई गॉड की कसम, पक्का रिप्लाई करूंगा. ठीक है, डन डना डन. ठीक है जी, क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? All of my friends on board right now with me. ठीक है, no complaints, just let's do it with the flow. Fundal height assessment, best clinical method for the assessment of clinical age. सर इसको जरा याद कर लेना प्लीज. ठीक है, एक सबको रिप्लाई करते हैं. हाँ सबको रिप्लाई करता हूँ भाई. नो जेंडर प्रीडिस्पोजिशन, इट इज ओपन, इट इज लाइक अ ओपन एंगल ग्लूकोमा, मेल एंड फीमेल बोथ. ठीक है जी,
Best clinical method of assessment of clinical age would be, you have to start from the pubic symphysis and you have to go out till the ziphus sternum. How you have to remember, let me tell you. अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक हाइट होगी तो मतलब 12 वीक्स पुरानी प्रेगनेंसी क्या है, 12 वीक्स पुरानी प्रेगनेंसी है. देन अगर 16 वीक में होगा, 16 वीक में देखो कैसे याद करना है, इट इज मोर नियर टू प्यूबिक सिम्फाइसिस और इट इज मिडवे. It is actually midway between the pubic symphysis and the lower border of the umbilicus. अगर तुम्हारी हाइट इज बिटवीन मिडवे बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द अम्बिलिकस के बीचों बीच है, देन योर आंसर इज 16 वीक. तो पहला है 12 वीक, प्यूबिक सिम्फाइसिस 12 वीक, midway between the pubic symphysis and umbilicus, that would be your 16 week, lower border of the umbilicus would be 20 weeks, and upper border of the umbilicus would be your 24 weeks, would be your 24 week. सर्जन सुश्रुत आ चुके हैं, यहाँ पे पधार चुके हैं, वेलकम जी. उसके बाद मोर नियर टू अम्बिलिकस एंड अवे फ्रॉम द जिफिस्टर्नम, द हाइट इज 28 वीक्स. मोर नियर टू जिफिस्टर्नम अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस, हाइट इज 32 वीक्स. एट जिफिस्टर्नम इट इज 36 वीक्स. Now at 32 weeks your head is floating and palpable. If your height is at ना अवे फ्रॉम हेयर, इधर से वापस लटक के आती है तो 40 वीक्स हो जाता है और 40 वीक्स में हेड इज फिक्स्ड. भाई सुना है ये कज़्म वफा है, रा 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 रा, ला रा 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 रा. तो दोस्तों सुनो मेरी बात प्यार से. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज जवाब. मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हो यार तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते. हैं, सर्जरी कब करवाओगे यार? एक ही बंदा हूं मैं, और मतलब हैदराबाद आ जाओ, वहां करा दूंगा यार, है ना. यार कंटिन्यू करने दो प्लीज, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ना, प्लीज प्लीज पढ़ाने दो ना यार, प्लीज मत हंसाओ ना यार, ही मत कराओ ना यार. दोस्तों प्यूबिक सिम्फाइसिस पे हाइट होगी तो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है? 12 वीक्स. अगर मिडवे होगा, अगर मिडवे होगा अम्बिलिकल के लोअर बॉर्डर से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, देन योर आंसर इज 16 वीक. सर अगर लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बिलिकस होगा तो 20 वीक्स, अगर अपर बॉर्डर ऑफ द अम्बिलिकस होगा तो 24 वीक्स. इफ इट इज मोर नियर टू द अम्बिलिकस एंड अवे फ्रॉम द जिफिस्टर्नम, सर योर आंसर इज 28 वीक्स. and if it is more near to ziphisternum away from the umbilicus, your answer is 32 weeks. Ziphisternum 36 and away from the ziphisternum it will be 40 weeks. दोबारा से क्या क्या शुरू करा हमने? 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. डन डना डन डना डन. याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए यार, अभी एग्जाम आ रहा है पास में, तुरंत हो जाना चाहिए याद. ठीक है. ओवरऑल बेस्ट मेथड, सर overall best method for the gestational age assessment would be your ultrasonogram, would be ultrasono. ये देखो 36 है, 36, ठीक है. उसके बाद क्या है? ट्रू पेल्विस होता है, इनलेट, मिड पेल्विस एंड आउटलेट. ठीक है. ये वाला टॉपिक आई सजेस्ट यू, वेरी कंफ्यूजिंग है, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, बट इसमें एक दो चीजें याद कर लेना, दैट कैन बी योर क्वेश्चन इन द एग्जाम. डायगोनल कॉन्जुगेट इट इज 12 सेंटीमीटर. डायगोनल कॉन्जुगेट कितना होता है? 12 सेंटीमीटर, यूज्ड इन द क्लिनिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड. ठीक है. इसमें क्या करो, 32 और 36 में कंफ्यूजन है. क्यों कंफ्यूजन है भाई? 32 में क्या होता है? हेड इज फ्लोटिंग एंड पाल्पेबल. 36 में हाइट पहुंच जाती है जिफिस्टर्नम में. फिर 40 वीक्स में जब हाइट पहुंचती है ना, जब 40 वीक्स में प्रेगनेंसी पहुंचती है, हेड इज फिक्स्ड हो जाता है. यही डिफरेंस होता है. 32 वीक्स में हेड इज पाल्पेबल and 40 weeks में your head is what? Fixed. 40 weeks में your head is fixed. Done done. Now if you want you can leave this topic, क्योंकि मेरे को खुद को बहुत कंफ्यूजन होती है, ना आई वुड सजेस्ट यू कि याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इनलेट्स यू कैन एक्चुअली इग्नोर. ठीक है. कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई,
एक क्वेश्चन गलती से आ भी गया, उसके चक्कर में इतना टाइम वेस्ट करो, कंफ्यूज हो जाओ, तो आई वुड रेदर सजेस्ट दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच कि छोड़ देना इसको। इसमें अगर कोई याद भी रखना होगा तो ये याद कर लेना बस, ये क्वेश्चन मार्क ऐड करा मैंने। देन द लार्जेस्ट वुड बी योर ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर, then your smallest diameter would be transverse of mid pelvis, that is 10 centimeter। ठीक है, बस इतना याद कर लो। then let me teach you something known as Cardwell-Molly classification। I will teach you what? Cardwell-Molly classification, classification of pelvis on the basis of shape of inlet, on the basis of shape of inlet, sir। Sir, remember Cardwell-Molly classification is based on the shape of inlet, sir। Number one, gynecoid pelvis। gynecoid pelvis कैसा है? गोल गोल। गायनेकॉइड में क्या है? गोल गोल, सब गोल गोल। राउंड इनलेट क्या है? राउंड इनलेट। एंड गायनेकॉइड इज द मोस्ट कॉमन टाइप, and the gynecoid is a most common type। gynecoid is a most common, gynecoid pelvis round round कैसा है? round round, and it is a most common type, sir। it is the most common type, सर। नाउ कमिंग टू द एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पे पता क्या करते हैं लोग? ऐसे फोन लेते हैं, एंड्रॉइड फोन लिया, फिर उसमें ना एक इमोजी होता है लाल लाल कलर का, है ना, ग्लूटियल रीजन जैसा दिखता है, जो दिल होता है। फिर वो क्या करते हैं? बार बार दिल भेजते रहते हैं, सबको सबको क्या करते हैं? दिल भेजते रहते हैं। और क्या बोलते हैं? देखो दिल देखो मेरा, क्या देखते हैं? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत देखो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। तो एक हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों की जान, हमारे काले कपड़े पहन के आए हुए हमारे मेहमान, हमारे मेंटर और सेक्सी बॉय और सब कुछ बोल सकते हैं। क्या था गायनी आज बिल्कुल वजाइना के अंदर अंदर, आज बिल्कुल अंदर अंदर भाई, गायनी खत्म, अब शुरू कर दी। और है ना, दिल कहते हैं एंड्रॉइड फोन, है ना, सर ने रखा एंड्रॉइड फोन और सबको दिल भेजते रहते हैं इससे। तो एंड्रॉइड में कौन सा? हार्ट शेप पेल्विस। कौन सा है? हार्ट शेप्ड पेल्विस। क्या है? हार्ट शेप पेल्विस। ठीक है, हार्ट शेप पेल्विस। और हार्ट सर ऐसा नहीं लगता आपको वो ग्लूटियल रीजन जैसा भी दिखता है? हो सकता है, क्या देखा नहीं कभी ग्लूटियल रीजन या हार्ट? दोस्तों एंथ्रोपॉइड आगे पीछे से लंबा है। एंथ्रोपॉइड क्या है? एंथ्रो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, इट इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, एंड इट इज एप लाइक। अंगूठा होता है ऐसे, एप लाइक, एप लाइक इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस। देन कमिंग टू प्लेटेप्लॉइड, प्लेट जैसा। प्लेट जैसा कैसे बनेगा? व्हेन ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। समझ में आ गई बात? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। Sir, contracted pelvis, if any major diameter what you have left behind, if any of those diameter is less than 0.5 centimeter, is if any of that diameter is less than 0.5 centimeter, sir, then that pelvis is known as contracted pelvis. That pelvis is known as contracted pelvis, and the diagnosis, most confirmatory diagnosis will be MRI. But if someone asks you, most common used is USG. In obgyn gynae, most commonly used is USG. MRI we avoid because pregnancy में MRI is not a good option. But for the cases like contracted pelvis, anyhow in some books it is given what contracted pelvis. ठीक है जी? And management of contracted pelvis, nothing but your cesarean section. Always whenever there is a case of contracted pelvis, straight away your answer should be cesarean section. Done, done. Congenital contracted pelvis, sir, this is something which has been asked in the exam. Would be very simple for you guys. Nagel's pelvis. Nagels मतलब one. Nagle, one nagle, one ella of sacrum is absent. नहीं है, एक नहीं है, one is absent तो nagle. One is absent तो nagle. One girl is absent. Nagle. One girl is absent. Nagle. Both ella are absent. If both the ella, both Roberts क्या है? Robert. So Robert में both ella absent and Nagel में one ella absent. Now coming to the acquired contracted pelvis, means both ellas are absent. Acquired में both absent,
कंजेनाइटल कॉन्ट्रैक्ट में 2, नैगल्स एंड रॉबर्ट, नॉगल में 1 और रॉबर्ट में 2। नाउ बच्चों के अंदर जो एक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्टेड, एक्वायर्ड मींस समथिंग व्हिच इज हैपनिंग आफ्टर द बर्थ, व्हिच इज हैपनिंग आफ्टर द बर्थ। In children, previous year MCQ, it is their bean shaped pelvis. In children, it is bean shaped pelvis, and adult, it is tri-radiate pelvis. In adult, it is tri-radiate pelvis. So now coming to the next PYQ, cephalopelvic disproportion. This is known as CPD. क्या है? CPD, 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 CPD. Guys, remember disproportion between the fetal head and pelvis. Disproportion between the fetal head and the pelvis is known as CPD. फीटल का हेड और पेल्विस के बीच में अब की जुबार जो है ना, मेल अच्छे से नहीं हुआ। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, पेल्विस, एंड फीटल हेड शुड बी इन द सेंटर, देन ओनली डिलीवरी इज पॉसिबल। इफ फीटल हेड इज स्लाइटली लाइक दिस, slightly deviated from the normal hole, then this is known as cephalopelvic disproportion. This is known as cephalopelvic disproportion. And guys, diagnosis will be MRI, and the clinical diagnosis is by the trial of labor. You will do a trial of labor and you will see आपका सर जो है वो इधर निकलता नहीं है, साइड पे फंस जाता है। अब इसके लिए तुम ट्रीटमेंट क्या दोगे? अगर छोटा मोटा फंसा हुआ होगा तो हिलाने से निकल जाता है, छोटी मोटी जगह फंसा होगा तो क्या है, हिलाने से निकल जाता है। दैट इज व्हाई माइल्ड सीपीडी ट्रीटमेंट, माइल्ड सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ट्रीटमेंट इज कोशिश करना ट्रायल ऑफ लेबर। डायग्नोसिस भी ट्रायल ऑफ लेबर है एंड माइल्ड सीपीडी का ट्रीटमेंट भी ट्रायल ऑफ लेबर। बट अगर बहुत ज्यादा साइड पे चला गया सर तो क्या करना है, काट दो। मॉडरेट टू सीवियर सर योर ट्रीटमेंट विल बी, ठीक है सर का। ऑल ऑफ यू ओके? यस, break is over, I'll again go back to the class. I Yes. hope you all doing well. Yes. OBG is a very important subject. बैठे हुए ठीक है, सुबह से 40, बेचारे। yes, you are इतने really से लोग ही great. बैठे हुए हैं बेचारे ये सुबह। 400 बच्चे तो पक्का पास हो रहे हैं, Yes, yes, और जो yes. बाद में देखेंगे उनको भी पास भी होने पास के लिए हो रहे हैं, बेस्ट हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, विल जॉइन लेटर। ओके सर जो है फार्मा की क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन, तो बीच में आते रहेंगे हमें मोटिवेट करने, ठीक है। सबका ख्याल रखना जरूरी है, आपका सबका, ठीक है। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ओके जी, so most common presentation, if I talk about, this is your cephalic presentation. The most common presentation would be cephalic. Most common presenting part would be your vertex. Most common presenting part will be your vertex, and most common denominator, if I talk about, that is your occiput. And most common attitude, अब देखो एक चीज बोलनी है तुमने अपने अपने, ठीक है, थोड़ा सा साइड, अपनी जीभ पकड़नी है और फिर बोलना है एटीट्यूड। एक बार बोल के दिखाओ जरा अपनी अपनी जगह पे, अपनी जीभ पकड़ के बोलो। एक बार अपनी जीभ पकड़ के एटीट्यूड बोलो जोर जोर से। मोस्ट कॉमन फ्लेक्शन, मोस्ट कॉमन एटीट्यूड विल बी most most common attitude will be flexion, will be flexion. दोस्तों most common presentation most common presentation is cephalic. Most common presenting part would be your vertex, and most common denominator will be your occiput, and most common attitude would be your flexion. Most common attitude will be your done. Then coming to the station, it is not a New Delhi railway station or a Jharkhand railway station or a Gujarat railway station or a Punjab railway station or a Jammu Kashmir railway station. This station is somewhere in the pelvis, ठीक है। फ्लाइंग चप्पल रिसीव, हेमंत को चप्पल पड़ गई भाई वहां पे। ये एटीट्यूड हमें अच्छा नहीं लगा, ये एटीट्यूड से हम खफा है, चप्पल पड़ गई दोस्त को, इतनी जोर से बोला उसने घर पे। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द ischial spine, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द ischial spine के बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों? इफ योर प्रेजेंटिंग पार्ट इज द एट द ischial spine, द स्टेशन इज जीरो, द स्टेशन इज जीरो, ठीक है। स्टेशन इज जीरो, ठीक है। इंस्टीट्यूट भी बोलेंगे, अभी बाद में बोलेंगे। स्टेशन इज जीरो। इफ इट इज अबव द ischial spine, योर स्टेशन इज -1. इफ इट इज बिलो
the ischial spine, your station is +1. Sir, station is very important. It is a relationship between the presenting part and the ischial spine. If the station is at ischial spine, if the baby's presenting part is as the ischial spine, station is 0. If it is above the ischial spine, sir, your station it is -1. If it is below the ischial spine, sir, your station is +1. This station is +1. Done, 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 done. Let's talk about the position relation between the denominator and the pelvis. Position की बात करेंगे तो क्या है, लोटा. क्या डिमोनिक है, लोटा. LOT, लेफ्ट occiput transverse and lower left occiput anterior. लोटा क्या है, लोटा. LOT. This is your previous year MCQ. Position is a relationship between the denominator and the pelvis. Most common it is low, and second most common would be lower. Then coming to the transverse engaging diameter, then will be transverse engaging diameter, sir. And the most, now these diameters are important. यहाँ वाले अपने सर वाले diameter है guys, remember. हाँ सर, पार्टोग्राम भी पढ़ाएंगे साहिल, डोंट वरी, पार्टोग्राम अभी आएगा मेरी जान, टेंशन मत क्यों ले रहा है, अभी मैंने खत्म थोड़ी करा, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ. ट्रांसवर्स एंगेजिंग डायमीटर, द मोस्ट कॉमन डायमीटर विल बी बायपैराइटल. सर कौन सा डायमीटर है, बायपैराइटल डायमीटर. एंड सर व्हाट इज अ व्हाट इज अ लेंथ ऑफ बायपैराइटल डायमीटर. सर योर वेरी मच करेक्ट आंसर इज 9.5 सेंटीमीटर. What is the length, sir? 9.5 centimeters. By mastoid, this is your mastoid surface. कान के पीछे क्या होता है, mastoid area होता है. By mastoid diameter will be the 7.5 centimeter, and this is the least diameter. We are talking about the transverse diameter. आगे पीछे इस तरीके से. Transverse is this thing. Transverse is this thing. Biparietal would be 9.5, bimastoid will be 7.5, bitemporal, sir, bitemporal will be 8 centimeter. Bitemporal will be 8 centimeter. Now longitudinal ऐसे, longitudinal मतलब इस तरीके से. एक होता है सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक, सर इट इज योर 9.5 सेंटीमीटर. एक होता है लार्जेस्ट, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, लार्जेस्ट इट इज मेंटो वर्टिकल, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड कमिंग टू हेयर. यहां से यहां तक का होता है. दिस इज नोन एज मेंटो वर्टिकल. दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड. रिमेंबर दिस इज योर 14 सेंटीमीटर. दिस इज योर 14 सेंटीमीटर. प्लीज रिमेंबर इट विद मी बिकॉज इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. Most common would be biparietal diameter 9.5 centimeter. Then coming bimastoid 7.5 centimeter, bitemporal 8 centimeter. Least diameter would be bimastoid, that is 7.5. लॉन्गिट्यूडनल में दो है, एक है सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक 9.5, एक है लार्जेस्ट दैट इज योर मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर. डन डना डन डना डन. यहां तक क्लियर हो गया सबको. इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेजेस ऑफ लेबर. हाँ जी, चाय पी लें. चाय पी ले, चाय, चाय पीनी है या 5 बजे पीनी है. चाय अभी पीनी है कि 5 बजे पीनी है, जैसा बताओ तुम लोग. यू वॉन्ट टू हैव टी नाउ और एट 5 PM? चलो, चलो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 5, सो विल कीप एट 5. ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस. 5 बजे का बोल रहे हैं सब लोग. ठीक है, 5 बजे, 5 बजे पीते हैं. कोई लोग तो उठ के चले भी गए चाय पीने, बेशरम कहीं के. मैंने बोला ये तो 25-30 लोग उठ के चले भी गए. पूछना ही बेकार है. अभी पढ़ लेते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर. अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं. लो, 4:45 पे वापस आओ. 4:45 PM पे वापस आओ. इट इज टी ब्रेक नाउ. टी ब्रेक, ठीक है, टी ब्रेक. ठीक है, टी ब्रेक फ्रॉम पी जामवाल 7. चलो, मैं भी टी पीऊंगा, तुम भी टी पियोगे. ठीक है, चलो जल्दी से. अतुल्य,
Welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor, Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year questions by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image-based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best. Keep on saying, I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor, Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year questions by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7.
We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical-based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is an introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical-based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience.
So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the Team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar.
A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid. Welcome back, ladies and gentlemen, on board with me right now. And we are going to start with the topic of obstetrics. And today we are done with the biggest subject in the history of your FMG exam, that is known as Queen of FMG, Hamari Pyari Obs and Gynae. Din 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 din. Everyone is back. Everyone is back and everyone is so energetic. And whether the rest of the people, क्या वो चाय में डुबो के ढोकला खा रहे हैं कि उसमें इडली डोसा डाल रहे हैं कि उनको वापस आना मुश्किल हो गया है, कि चाय पीते पीते वो कहीं दूर चले गए हैं क्योंकि घर के आसपास सिगरेट नहीं पी सकते हैं, इसीलिए वो दूर नाले पे चले गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब उनको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज भागते भागते वापस आ जाएं, क्योंकि 6 दिन के बाद तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम ऋषिकेश जा सकते हो, तुम हरिद्वार जा सकते हो, तुम कन्याकुमारी जा सकते हो, तुम मालदीव जा सकते हो, पर अभी तुमको कहीं जाने की इजाजत नहीं है। अभी तुमको मेरे को झेलना पड़ेगा 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 पड़ेगा। थाईलैंड जाना चाहता है कोई, कोई गोवा जाना चाहता है। क्या तुम्हें संस्कार नहीं है? कोई वैष्णो देवी की बातें करो, कोई हरिद्वार की बातें करो, केदारनाथ की बातें करो, मक्का मदीना की बातें करो, कोई अमृतसर में गुरुद्वारे की बात करो। बदतमीजो, तुम जाओगे गोवा? तुम्हारी उम्र देखो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, गोवा जाओगे, थाईलैंड जाओगे, हरकतें देख रहे हो अपनी हैं? दिल्ली आएंगे मिलने, हाँ मेरा भाई, ये लव यू देखा, दिल्ली आएंगे मिलने। ये कुछ कुछ बेचारे संस्कारी, हम जैसे गरीबों का ख्याल है, ये नहीं कि सर आप बताओ कहाँ चल रहे हैं, चलो साथ में प्लान बनाते हैं। ना ना ना, थाईलैंड जाएंगे, केले जाके दिखाओ थाईलैंड, फ्लाइट से टांग नहीं खींच के ले आऊं तुम्हारी वापस में है। Wow, 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 wow. Very good, very good, very good. So I think most of them are back right now, and we can start with the topic, that is stages of labor, sir. Stages of labor are divided into 4 parts. Stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Sir, stage 1 is from true uterine contraction to the complete cervical dilatation. And cervix कहाँ तक dilate होता है? 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 10 kilometer? No, no, no. It is your 10 centimeters, sir. कितना सर्विक्स डायलेट हो सकता है? 10 कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर। इट इज योर 10 सेंटीमीटर। कुछ लोग फेरिस व्हील पे बैठ के आ रहे हैं, अलग अलग मजे, अलग अलग मजे हैं, ठीक है दोस्तों। देन कमिंग टू द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, कमिंग टू द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज फ्रॉम द कंप्लीट सर्विकल डायलेटेशन टू द डिलीवरी ऑफ बेबी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सुबह 12 बजे से हम बैठे थे, अब हमारा जाके बच्चा पैदा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा बच्चा पैदा हो चुका है। हम सब लोग बन चुके हैं अपनी अपनी नजरों में पापा, मम्मी, चाचा, फूफा, लप्पा, लसन, जो भी है। Second is from the complete cervical dilation to the delivery of baby, to the delivery of baby. Wow, congratulations to me, to you, all of you guys. Such a nice delivery of baby. और चाय पीते ही बच्चा पैदा। तूने कहा बच्चा पैसा कैसे हुआ? बोले चाय पी के। बोला भाई ये बच्चा कैसे बच्चा कैसे पैदा हो? लीजिए चाय पीने के बाद बच्चा पैदा। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। बड़े नटोरियस लोग हो आप सब लोग, बहुत नटोरियस हो, सच में बहुत नटोरियस। मतलब सबसे रंगीन लोग हैं हमारे एफएमजी। आई एम सो प्राउड कि आई एम एफएमजी यार। राज कह रहा है चाय ने प्रेशर बनाया होगा और बच्चा पैदा
माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह। अरे सुनो ना, स्टेज वन क्या है लेबर की? फ्रॉम ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू द कंप्लीट सर्विकल डायलिटेशन, दैट इज अप टू 10 सेंटीमीटर। स्टेज टू क्या हमारी? कंप्लीट सर्विकल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ बेबी। एंड स्टेज थ्री इज एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। And what is stage 4, sir? It is 1 hour observation after the placental expulsion. क्या ऑब्जर्व करोगे? फिजियोलॉजिकल चिल्स, physiological chill, physiological chills. So stage 1 is from the true uterine contraction to the complete cervical dilatation. Stage 2 is from the complete cervical dilatation to the delivery of baby. Stage 3 is the expulsion of placenta. Stage 3 is express expulsion of placenta, and stage 4 is 1 hour observation after the placental expulsion. Dun 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 dun. अभिमन्यु अभी भी जो है जी पकड़ के एटीट्यूड बोल रहा घर पे और हंसता जा रहा, केले केले, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा एक बार ये करते हैं, एक बार एक और, ठीक है? जोर से बोलना है, जी पकड़ो और बोलो इंस्टीट्यूट। जी पकड़ो और बोलो जोर से इंस्टीट्यूट बोलो, और बोल के बताना क्या बोला। Then stage 1 is, we have to discuss all the stages one by one. Stage 1, latent phase and active phase. Stage दोस्तों, stage 1 is latent phase and active phase. Latent phase, please correct this, up to 4 centimeter dilation. Stage latent phase of stage 1 would be up to 4 centimeter dilatation, and active phase is from 4 centimeter onwards to 10 centimeter dilation. 10 सेंटीमीटर डायलेशन, ठीक है? 10 सेंटीमीटर डायलेशन, ठीक है भाई? तैयार है? कुछ लोग बोलते जवान संभाल के रखना, तो जवान संभाल के रखना ऐसे बोलना है, एटीट्यूड इंस्टीट्यूट। अरे हेमंत को फिर से चप्पल पड़ती हुई, उड़ती हुई चप्पल सीधा हेमंत, डॉक्टर हेमंत के ऑरिकुलर रीजन से टकराती हुई, ब्रूजिंग करवाती हुई, वहां पे बैटल साइन का आते हुए और डॉक्टर हेमंत आउट। latent phase and active phase. Latent phase and active phase. Latent phase is up to 4 centimeter dilation, and active phase it is from 4 to 10 centimeter dilation. Management of delay in the latent phase, sir, it is your therapeutic rest. Management is therapeutic rest. Management is therapeutic rest. And active phase, if it is arrested, sir, straight away, recent NEET PG exam question, you will go for the cesarean section. You will go for the cesarean section. एक मेरे ड्रैगन बॉल आए हैं मेरे भाई, वो पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं उसे, ये बहुत है कि नहीं है? अब मुझे ये बता, चल ठीक है मैं बोलूं बहुत नहीं है, एक काम कर, पूरा 100 घंटे का ऑब्स गाइनी देख ले, 4 तारीख को पेपर है। कोई सेंस है कि इस क्वेश्चन में नहीं है ना? एंड ही नहीं है, कैसी बातें करते हो? बहुत है और क्या है, बहुत ही है। अब तुम कैसे अप्लाई करते हो तुम्हारे ऊपर है ना दोस्त, है ना? maximum delay in the latent phase. Management of delay in the latent phase would be your therapeutic rest, and management of arrest in the active phase would be your cesarean section, would be your cesarean section. Now partogram, मेरे भाई का partogram, best method to assess the progress of labor. How to assess the progress of labor, sir? It is done with the help of partogram. It is done with the help of partogram. And sir, remember, if alert line is crossed, that means it is prolonged labor. If alert line is crossed, that means this is a case of prolonged labor. And if action line is crossed, that means you have to do immediate cesarean section. You have to do what? Immediate cesarean section. इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। डन डना डन डना डन डना डन, ठीक है जी? तो याद रखना, अलर्ट लाइन इज क्रॉस, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। एंड इफ एक्शन लाइन इज क्रॉस, सर अब बड़ी बुरी चीज है, एक्शन लाइन क्रॉस हो गई, अब तो भाई सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, सीधी सी बात। अलर्ट लाइन प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एक्शन लाइन इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन।
Now sir, the time interval between the alert line and action line, normally it should be 4 hours. If it is crossed, that mean your prolonged labor. ठीक है, done, done, done. Let's talk about the second stage of labor, cardinal movements. It is known as not enlargement. The first step is engagement. प्लीज करेक्ट इट इन योर नोट्स. द फर्स्ट थिंग इज एंगेजमेंट. एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ? डिसेंट हुआ. एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ? डिसेंट हुआ. डिसेंट के बाद हुआ इंटरनल रोटेशन. सबसे पहले क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनना. सबसे पहले क्या है? एंगेजमेंट हुई. सबसे पहले क्या हुई? एंगेजमेंट हुई. एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ? डिसेंट हुआ. एंगेजमेंट का डिसेंट हुआ. डिसेंट के बाद इंटरनल रोटेशन हुई. उसके बाद क्या हुई? क्राउनिंग. द फोर्थ स्टेप इज क्राउनिंग. तो 4 स्टेप पहले रिपीट करो. एंगेजमेंट, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन एंड योर क्राउनिंग. अब क्राउनिंग होने के बाद बंदा चौड़ में आ गया, उसके सर पे क्राउन आ गया, तो क्या हुआ? एक्सटेंशन. क्या हुआ? एक्सटेंशन. तो नंबर 5th पॉइंट विल बी एक्सटेंशन. अब वो चौड़ में आके रेस्ट करने लग गया. नंबर 6 पॉइंट वुड बी योर रेस्टिट्यूशन. अब जब वो रेस्ट कर रहा था तो एक्सटर्नल रोटेशन हो गई. क्या हो गई? एक्सटर्नल रोटेशन हो गई. और 7th पॉइंट इज योर एक्सपल्शन ऑफ फीटस बाय द लेटरल फ्लेक्शन. एक्सपल्शन ऑफ फीटस बाय द लेटरल फ्लेक्शन. डन डना डन डना डन. ठीक है. अब कैसे होगा इंटरनल रोटेशन? मतलब अंदर से बच्चा घूम गया. इंटरनल रोटेशन दोस्त अब मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा दोस्त, मेरे पास टाइम लिमिटेड है. जस्ट रिवीजन वी आर डूइंग. चैंटिंग इज मीन रिवीजन ओनली. ठीक है. दिस इज नॉन ऑब्स गाइनी का प्रोफेसर. आई एम टीचिंग यू फुल ऑफ द ऑब्स गाइनी. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कंटेंट विद द बेस्ट निमोनिक, बेस्ट ट्रिक्स एंड बेस्ट सिंप्लिसिटी. ठीक है जी. डन डना डन. दोस्तों सबसे पहले एंगेजमेंट हुई. सबसे पहले क्या हुआ? एंगेजमेंट हुई. एंगेजमेंट के बाद डिसेंट हुआ, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग के बाद बंदा चौड़ में आया तो क्या हुआ? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के बाद रेस्टिट्यूशन के बाद एक्सपल्शन ऑफ फीटस बाय द लैटरल फ्लेक्शन. तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो डन. Now what if there is arrest in the second stage of labor, sir? Remember, two things are here, primigravida and multigravida. ठीक है. multigravida. Primigravida में if second stage of labor is arrested from more than, if it is taking more than 3 hours, then we consider is at arrest. For in multigravida जिसके बार बार बच्चे पैदा हो चुके हैं, अगर उसमें 2 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है ना बच्चा बाहर आने में, that means now your second stage of labor is arrest. No matter what, the सीधा treatment, recent NEET PG exam question, your treatment is cesarean section. Second stage of labor, if it is arrested, your treatment is cesarean section. Primigravida 3 hours, multigravida 2 hours. प्राइमी जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसमें 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है. दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल. बट इन द multigravida it can take more than 2 hours. Then it is arrest of second stage of labor 3 and 2. प्राइमरी के अंदर 3, मल्टी के अंदर 2. एंड यू हैव टू डू व्हाट? सिजेरियन सेक्शन. यू हैव टू डू व्हाट? सिजेरियन सेक्शन. डन डना डन डना डन. थर्ड स्टेज क्या थी हमारी? प्लेसेंटल एक्सपल्शन, मतलब प्लेसेंटा का बाहर आना. इसके लिए मैनेजमेंट में व्हाट यू विल गिव सर? ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट. ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर. ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? इट प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन. ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन कराना. अब एक बार बच्चा बाहर आ गया, अब तुम्हें प्लेसेंटा को भी बाहर निकालना है, तो तुम क्या कराओगे? कॉन्ट्रैक्शन कराओगे. और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इफ आई आस्क यू सर, योर आंसर इज ऑक्सीटोसिन. क्या देना है? ऑक्सीटोसिन. एंड ऑल्सो यू कैन डू व्हाट? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग 1 to 3 minutes, that is delayed cord clamping. What are the signs of placenta separation? How you will come to know? Now sir, ठीक है, how you will, अरे करिश्मा अभी मैं करिश्मा करूंगा, अभी से सवाल पूछ लोगी, अभी मुझे करिश्मा करने दो ना, अभी 10 मिनट रुक जाओ, फिर मैं करिश्मा दिखाता हूं तुम्हें, डंकन और शुल्ट्ज का भी दिखाता हूं. टेंशन नहीं लेनी. जब डॉक्टर पारस बैठे हैं तो सारे के सारे मैजिक होंगे, बिकॉज मैजिशियन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. अभी मैंने शो खत्म नहीं करा है, अभी मैंने पर्दा गिराया नहीं है, अभी पर्दे के अंदर ही रहने दो मेरे को, करने दो मेरा जादू. टेंशन मत लो, तुम साथ है रे, क्यों टेंशन लेती है? सुनो मेरी बात, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त.
जरा कामयाब तो होने दो दोस्त मुझे, फिर मेरे दिन बदल जाएंगे, फिर मेरे दिन बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते थे, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते थे, अब वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। बोलो तारा रा 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 रा। वाह वाह वाह, समझ गया ना? दिल की बातें समझा करो गाइस, रिमेंबर, ठीक है? तो थर्ड स्टेज इज प्लेसेंटल एक्सपेल्शन। मैनेजमेंट इज ऑक्सीटोसिन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग 1 to 3 minutes। साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, एब्डोमिनल साइन एंड वेजाइनल साइन। कैसे पता चलेगा कि अब तुम्हारा प्लेसेंटा जुदा हुआ कि नहीं हुआ? जुदा हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ द यूट्रस। और यूट्रस कैसा दिखेगा? क्रिकेट बॉल जैसा। यूट्रस के अंदर तुम हाथ रखोगे तो क्या होगा? क्रिकेट बॉल जैसा यूट्रस देखने मिलेगा। अगर क्रिकेट बॉल जैसा यूट्रस का फील आएगा वहां पे हाथ रखने के बाद, दैट मींस प्लेसेंटा इज जुदा। प्लेसेंटा के जुदा होते ही तुम चिपक जाओ, है कि नहीं? फिर वेजाइनल साइड में क्या देखने में? वेजाइनल साइन यू विल सी व्हाट? गश ऑफ ब्लड पर वेजाइना। एंड रिमेंबर, एकदम से खून का छींटा बाहर, मतलब प्लेसेंटा जुदा। परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। डन डना डन डना डन। तो दोस्तों समझ गए? एब्डोमिनल साइन में क्या होगा? क्रिकेट बॉल लाइक फील। क्रिकेट बॉल लाइक फील, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये कब देखने मिलती है? जब तुम्हारा प्लेसेंटा क्या हो जाता है? जुदा। जब प्लेसेंटा क्या होता है? जुदा। तो क्या बोलता है? जब थी मुझे तेरी जरूरत तू हो गई जुदा। जब थी मुझे तेरी जरूरत तू हो गई जुदा। अब मैं हूं जब पारस भैया की चैंटिंग में खुश। अब मैं जब हूं डॉक्टर पारस की चैंटिंग में खुश, तू अपने सब्जेक्ट पे ध्यान लगा। अरे भाई साहब। और फोर्थ स्टेज क्या है? ऑब्जर्वेशन आफ्टर द प्लेसेंटल एक्सपल्शन फॉर द फिजियोलॉजिकल चिल्स। इट इज फॉर द फिजियोलॉजिकल चिल्स। इट इज फॉर द फिजियोलॉजिकल चिल। ये दल्ला आ गया दोबारा, इसको उठा के फेंको। हमारी एक ही जो है। तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आई नो दैट थिंग। गंदे बच्चे हैं। then then stages of uterine inversion। जब तक मैं तुम्हें यूट्राइन इन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ, प्लीज इस कूड़े को बाहर निकाल दो प्लीज यहाँ से। मैं इसको देखना नहीं चाहता, इसकी शक्ल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इंटर्न देखो, यूट्राइन इन्वर्जन की बात करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनल ऑस, ठीक है? डिम्पलिंग एट फंडस ओनली। डिम्पलिंग एट फंडस ओनली। डिम्पलिंग सिर्फ फंडस पे हो रही है, मीन स्टेज 1। अगर डिम्पलिंग सिर्फ फंडस पे हो रही है, स्टेज 1 ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन। अगर इंटरनल ऑस तक मामला आ चुका है, स्टेज 2। अगर एक्सटर्नल ऑस तक आ चुका है, स्टेज 3। अगर पूरा यूट्रस बाहर आ गया है तो स्टेज 4। वेरी सिंपल, कुछ मत रीड करो, जस्ट भावनाओं के साथ देखो। Only if there is a dimpling at the fundus, that means this is stage 1 of uterine inversion. If it is reaching till internal os, it is stage 2. If it is reaching till external os, it is stage 3. And if complete uterus is out, that means it is stage 4. That means it is stage 4, stage 4, stage 4, stage 4. ठीक है दोस्तों? Now management of uterine inversion is very very important. Immediate resuscitation. Please remember, once you go in the hospital and a case of uterine inversion is coming, remember the number one thing you have to do is immediate resuscitation. क्या करना है? Immediate resuscitation. You have to give the IV fluid. You have to give the IV fluid. IV fluid. ठीक है? चलो, class start in Chennai, sir. Guys, not Chennai, we are starting in Calicut. NLC Calicut we are starting, ठीक है? So you guys can join there. NLC Calicut is soon going to start, ठीक है? So all the guys from the down south, you can go to NLC Calicut for the next, from the 5th of July we are starting classes there. So don't worry, ठीक है? Then हम कैलिकट में आके चैंटिंग करा करेंगे, नारियल का पानी पीते पीते।
फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, सर व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इन्वर्शन। यूट्रस बाहर आ गया है, सबसे पहले रिसस्टिटेट करा और मैंने फोन करा एक बंदे को, उसका नाम है जॉनी सिंस। तो सबसे पहले मेथड कौन सा है मैनेजमेंट में, जॉनी सिंस मेथड, इट इज नोन एज जॉनसन्स मेथड। अब जॉनी सिंस ने क्या करा, जॉनी सिंस ने मैनुअल रिपोजिशनिंग ऑफ द यूट्रस, जॉनी सिंस भाई ने अपने हाथ से यूट्रस को अंदर डाला। अब जॉनी सिंस भाई हो गए फेल, जॉनी सिंस भाई फेल हो गए तो तुम किसको बुलाओगे, ओ सुलेमान भाई को। किसको बुलाओगे, सुलेमान भाई को बुलाओगे, ओ सुलियान हाइड्रोस्टैटिक मेथड। अब ना जॉनी सिंस से काम बना ना सुलेमान भाई से काम बना, तो तुम किसको बुलाओगे, हमारे सर्जरी की फैकल्टी डॉक्टर नितिन भगत सर को। और नितिन भगत सर क्या करेंगे, हंटिंगटन मेथड, क्या करेंगे, हंटिंगटन मेथड, हंटिंगटन मेथड क्या करेंगे, हंटिंगटन, हंटिंगटन बोलो, हंटिंगटन। तो कैसे मैनेजमेंट करा, याद हुआ कि नहीं हुआ, बेस्ट तरीके से याद हो गया। कैसे याद करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, यूट्राइन इन्वर्जन हो गई तुम्हें, 4 स्टेजेस ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन इज वेरी मच क्लियर टू यू। इज ओनली फंडस पे डिम्पलिंग होगी तो स्टेज 1, इंटरनल ऑस तक आएगा स्टेज 2, एक्सटर्नल ऑस तक आएगा स्टेज 3 और पूरा बार आएगा स्टेज 4। Immediately if patient of uterine inversion is coming to you, what is the first step you have to do, you have to go for the resuscitation. In resuscitation you have to give the IV fluids, since that is Johnson's method, manual repositioning of the uterus. If Johnson's method fails, if your Johnson method fails, sir, then you will go for the O-Sulian hydrostatic method. If O-Sulian fails, you will go for the surgery, and in surgery what you will do, Huntington method. क्या है, हंटिंगटन मेथड, प्लेसेंटल सेपरेशन। सर रिमेंबर नाउ, वो कहां गई हमारी देवी, देखो अब मेरा करिश्मा देखो, प्लेसेंटल सेपरेशन के मेथड पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। वॉइस ब्रेक कह रहे हैं ये लोग, हार्ट ब्रेक ना हो जाए, बस वॉइस ब्रेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज लॉग इट आउट एंड लॉग इन, लॉग आउट लॉग इन। ठीक है, प्लेस प्लेसेंटल, प्लेसेंटल, चलो जी। मोस्ट कॉमन मैथड वुड बी योर शुल्ट्स मैथड, मोस्ट कॉमन मैथड वुड बी शुल्ट्स मैथड। और शुल्ट याद रखना, सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, ऐसे शुल्ट, ऐसे शुल्ट, शुल्ट शुल्ट शुल्ट, सी 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 सी, प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, शुल्ट क्या है, सेंटर, शुल्ट क्या है, सेंटर। लखनऊ में अभी आ रहा हूं, लखनऊ में अभी आ रहा हूं, अभी शाम को मोहम्मद, अभी शाम को जो है लखनऊ आ रहा हूं मैं, है ना, अभी चैंटिंग कराते ही लखनऊ आ जाऊं, वही कल सेंटर खोल देंगे दोनों भाई मिलके, है ना, ठीक है। शुल्ट्स मेथड क्या है, प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, शुल्ट्स सेंटर एंड रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट इज फॉर्म। शुल्ट मेथड में क्या बनता है, रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट। अब डंकन से क्या याद रखना है, धक्का, डंकन से क्या याद रखना है, ढंका। और धक्का कैसे देते हो, साइड से, धक्का कैसे देते हो, साइड से देते हो। तो प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द मार्जिन, सो ब्लीडिंग पर वजाइना इज देयर। और धक्का दोगे किसी को तो खून बहुत निकलेगा भाई, तो क्या है, डंकन मेथड, क्या है, डंकन मेथड, क्या है, डंकन मेथड। नेहा वर्मा, वॉइस ब्रेकिंग, नेहा वर्मा मेरी बात सुनो, इसको लॉग आउट करो और फिर लॉग इन करो प्लीज, लॉग इन करो और लॉग आउट करो प्लीज प्लीज प्लीज, आपको आवाज आएगी। मैं बोल रहा हूं मेरे पास डिवाइस पड़े हुए हैं, टेक्निकल टीम बैठी है हु इज कॉन्टिन्यूसली चेकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड, इट इज यू गाइज हु आर हैविंग प्रॉब्लम। सो लॉग इट आउट देन अगेन लॉग इन, मींस यू रीस्टार्ट द लिंक, मींस व्हाट, यू रीस्टार्ट द लिंक सर, ठीक है। नेहा ऐसा मत बोलो, मेरा दिल टूट रहा है, मेरी वॉइस ठीक आ रही है, तुम उसको तोड़ती हुई बता रही हो। आवाज तो सेक्सी आ रही, देख दे दीक्षित अपना लौंडा क्या करे, आवाज सेक्सी आ रही है, लता मंगेशकर बन जाऊं मैं, सारे गा मा पा धा नी सा,
सब ठीक है? अच्छा, दोबारा से बाहर गए, अब दोबारा से इन अंदर आएंगे ये। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, ये शाम दीवानी, ये रंग सितारा, ये रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में धुल लूं मैं, मेरे हर बात बन जानी। हुआ? ठीक हुआ? पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं? चले गए सारे? कहाँ चले गए? आ जाओ वापस आ जाओ। तो दो मेथड थे, शुल्ट्ज मेथड एंड डंकन मेथड। शुल्ट्ज मेथड मतलब प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, सो रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट इज फॉर्म। डंकन मतलब साइड से धक्का दिया तो प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द मार्जिन, सो ब्लीडिंग पर वेजाइना इज प्रेजेंट। डन डना डन डना डन। ठीक है जी। फिर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी सर, in the first stage of labor, if I open your closed eyes, the contraction is 40 to 50 mmHg. Sir, your contraction is 40 to 50 mmHg. If I talk about second to third stage of labor, sir, it is 100 to 120 mmHg. सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी वुड बी योर 100 टू 120 mmHg, 120 टू 100 mmHg। ठीक है जी। ये सोच रहे बाद में देखेंगे 2x में, है ना? लाइव इतनी लंबी करूंगा कि 2x में तुम देख ही ना पाओ उसको, इतना टाइम लग जाए उसमें। लाइव में जो मजा है, लाइव अलग ही स्वाद आता है। लाइव चीज लाइव करने में बहुत मजा आता है। Uterine contraction intensity, first stage is 40 to 50 mmHg, sir, and second to third stage is 100 to 120 mmHg. Now let me teach you Montevideo units. सर Montevideo units जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या होते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस रिमेंबर, नॉर्मली 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन होती है, सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वुड बी 3 पर 10 मिनट्स। ठीक है। Montevideo यूनिट का फॉर्मूला देखना, इट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन in 10 minutes means 3 contraction हो रही है into uterine contraction intensity, and we know in the first trimester the contraction intensity would be 40 to 50 mmHg. Second to third trimester your contraction intensity would be 100 to 120 mmHg। ठीक है जी। अब मेरे को सिखाने दो समथिंग समथिंग समथिंग। Montevideo unit in the first trimester, so 3 into 40 to 50 would be 120 to 150. Montevideo units in the second and third stage would be 3 into 100 to 120, that will be 300 to 360. Everyone, 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 डन है? डन है? समझ में आ गई Montevideo यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 मिनट में 3 होती है कॉन्ट्रैक्शन, और किस इंटेंसिटी से होती है तुमको पता है। फर्स्ट स्टेज में होती है 40 टू 50, फर्स्ट स्टेज में 40 टू 50 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Montevideo यूनिट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर वुड बी योर 120 टू 150। फिर Montevideo यूनिट इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वुड बी योर 300 टू 360। डन डना डन डना डन डना डन। Let's talk about something known as preterm labor, sir. Let's talk about the preterm labor. Preterm labor means something less than 37 weeks. Preterm labor means something which is happening, a labor happening before 37 weeks. Sir, अभी तो दिक्कत है। तो most common risk factor of preterm labor would be previous preterm labor, would be previous preterm labor, and second most common cause would be infectious cause. And I have made a very famous mnemonic for all of you, that is your GCS. Sir, preterm labor, remember, most common risk factor would be history of previous preterm labor. Second most common would be infectious, and the infection के अंदर है GCS, गार्डनरेला वेजाइना, तो तुम्हारा बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज कर रहा था। फिर उसके बाद से क्लैमाइडिया एंड एस स्टेप्टोकोकाई, एस स्टेप्टोकोकाई। ठीक है।
हाँ बिल्कुल नायरा, आज सब ऑब्स गाइनी हो जाएगा क्योंकि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है ऑब्स गाइनी के अंदर, सारे टॉपिक कवर करें, सारे के सारे टॉपिक। ओनली इंटेंशन दैट अकेले करना मुश्किल है, अगर ऐसे हंसते खेलते करते रहेंगे तो शाम तक आई गारंटी यू 80-90% ऑब्स गाइनी वुड बी ऑन योर टिप्स। सर नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस पार्ट, सर्विकल लेंथ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, कैसे पता चलेगा प्रीटर्म लेबर है कि नहीं है? You will see a cervical length more than 2.5 centimeter, internal os diameter more than 2, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर तुम्हारी सर्विकल लेंथ होगी। हरियाणा आके करवाओ, आ जाएंगे भाई, कहाँ पे, वहां क्या कहते हैं हरियाणा में, कौन सी जगह में आके करवाई जाए चैंटिंग? क्या नाम है उसके, कौन सा ढाबा है वो, अमरीक सुखदेव ढाबा कुछ तो है। यू शेप्ड मेम्ब्रेन एंड फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। सर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, fetal fibronectin protein is a main thing you have to remember in the preterm labor. Preterm labor means something which is happening before 37 weeks. Most common cause, most common risk factor would be history of previous preterm labor, and second most common would be infection. And infection, the mnemonic is GCS, Gardnerella, Chlamydia and Streptococcus. Gardnerella, Chlamydia and स्टेप्टोकोकाई, ठीक है, डन डना डन डना डन। मैनेजमेंट, dexamethasone for the lung maturity, and what is the dose of dexamethasone sir here? 24 mg. Remember the treatment of preterm labor, management of preterm labor is very very important. Then you will give the tocolytics. Why we are giving? To stop the contraction. Tocolytics, why we are giving? To stop the contraction. And drug of choice would be nifedipine. Which tocolytic you will give? Sir, your answer is nifedipine. Drug of choice for the heart disease patient, which tocolytic would you? Etosiban. And drug of choice to prevent the neurological deficit, sir, you will give magnesium sulfate. You will give what? Magnesium sulfate. Now, preterm labor treatment is divided on the weeks of pregnancy and the weeks of onset. If preterm labor is happening before 34 weeks, then treatment is separate. If it is happening after 34 weeks, then treatment is separate, sir. Before 34 weeks, sir, remember the treatment would be steroids. Why steroid we are giving? For the lung maturity. देन टोकोलिटिक्स, वाई वी आर गिविंग निफिडिपिन जैसे ड्रग क्यों दे रहे हैं? ताकि कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो सके। एंड मैग्नीशियम सल्फेट, वाई वी आर गिविंग सर? टू प्रिवेंट द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। 34 वीक से पहले ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। नाउ 34 वीक के बाद अगर प्रीटर्म लेबर होता है 37 वीक से पहले पहले, देन व्हाट यू विल डू? You will do what? Wait and watch plus steroid. You will do what? Wait and watch plus you will give what? A steroid. What you will got? What? Steroid. So sir, remember, if it is less than for 34 weeks, it is steroid, tocolytic and MgSO4. If it is more than 34 weeks, you will wait and watch and steroid. Done, 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 done. चलो जी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीटर्म लेबर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रीटर्म लेबर को एक बार ही समराइज कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आते हैं। बिफोर 37 वीक इफ द लेबर इज हैपनिंग, हाय पटियाले से इनविटेशन आ चुका है, मैं आ रहा हूँ पटियाला दोस्तों, चैंटिंग छोड़ के वहां जा रहा हूँ। देखो इनके घर पे ही चैंटिंग का इंतजाम है। वाओ नाइस। बस बुक करता हूँ अभी या फिर अपनी गाड़ी लेके आ जाता हूँ, कुछ तो करता ही हूँ। फ्लाइट जाएगी तो फ्लाइट से आ जाऊंगा, चॉपर ले लेता हूँ, है ना। यस यस यस, कनिष्ठ तिवारी डेक्सा भी देना होगा भाई, पहले में देना ही है। दोस्तों सुनो, मेरी बात सुनो, प्रीटर्म लेबर में क्या पढ़ा? बिफोर 37 अगर लेबर होगी तो प्रीटर्म लेबर। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? प्रीवियस प्रीटर्म लेबर। और सेकंड मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या है हमारा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का क्या निमोनिया? जीसीएस। क्या निमोनिया? जी गार्डनर कमांडर स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद डायग्नोसिस के अंदर मैंने एक ही चीज याद करने बोला, फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या दे सकते हो तुम? डेक्सा दे सकते हो, डेक्सामेथासोन दे सकते हो फॉर द लंग मैच्योरिटी, टोकोलिटिक टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन एंड टू प्रिवेंट द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यू विल गिव अ ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन लेस देन 34 और मोर देन 34। लेस देन 34 में you will give what? Steroid, tocolytic and MgSO4. More than 34 what will you do? Wait and watch plus you will give what? Steroid. Wait and watch plus you will do what? Steroid, steroid, steroid. ठीक है, चलो डन डना डन डना डन। Then let's talk about the premature rupture of the membrane, sir. If the membrane is rupture even before the onset of labor, labor से पहले अगर तुम्हारी membrane rupture हो गई, this is known as something premature rupture of the membrane, PROM. This is known as PROM, and the most common cause of PROM would be Gardnerella. Important question.
Most common cause of PROM would be your Gardnerella and other causes might be polyhydramnions, क्योंकि इतना ज्यादा एमनोटिक फ्लूइड होगा 2000 से ज्यादा वी हैव कंसीडर्ड इट एज अ पॉलीहाइड्रोमनियंस। ठीक है, अगर इतना ज्यादा फ्लूइड होगा तो प्रेशर की वजह से नीचे वाटर बैग जल्दी ब्रेक हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो। अनदर थिंग इज मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ एक्सेस वेट दैट मेम्ब्रेन कैन रप्चर इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर। तो मोस्ट कॉमन कॉजेस infection which causes there, that is your Gardnerella. Other causes it is polyhydramnions and multifetal pregnancy, that is your multifetal। ये पत्था आया है जशवंत पाथा, जशवंत पाथा कहते हैं सर्जरी पढ़ा दो। ये अभी मैं ऑब्ज़गाइनी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं वेजाइना के अंदर जब खुश हूं तो मैं सर्जरी में एनल कनाल में क्यों जाऊं? जब मुझे वेजाइना के अंदर ज्यादा खुशी मिल रही है तो मैं एनल कनाल में क्यों जाऊं? मुझे ये बताया जाए, है ना, कोई मुझे जवाब दो प्लीज। Other causes would be polyhydramnion and multifetal pregnancy. Now coming to the diagnosis part, sir. कैसे पता चलेगा कि amniotic fluid है कि कोई और fluid है? How you will come to know? You have to perform a test. You have to perform a test. Nitrazine or litmus paper test. Sir, whenever you will see a discharge coming out from the vagina, है ना, and you will check, you will see now the red color litmus paper is turning into blue color. That means what? It is your amniotic fluid. That means it is your amniotic fluid. Now another thing, I have taken this cervicovaginal, चलो, taking cervicovaginal discharge and we do for furning, we check what furning, amniotic fluid लिया, amniotic fluid को हमने स्लाइड में रखा and we see a furning pattern, we see a furning pattern. If furning pattern is present, that means that is a confirmed diagnosis कि amniotic fluid बाहर आ रहा है। And why we are worried कि amniotic fluid बाहर आ रहा है? Because labor has not started, still there is a rupture of membrane. It is highly matter of worry. Now treatment again depend on 34 weeks. Less than 44 another treatment, more than 34 another week treatment. Sir, less than 34 mein what you will give? Again steroid, tocolytic, MgSO4. But now most common cause is infectious, that is Gardnerella. That is why you have to give the antibiotic also. Which antibiotic? Again that is a matter of worry, another thing, but you have to give what? Antibiotic. More than 34 week if it happened, that means by 34 week you will get the lung maturity. ठीक है, after 34 weeks you have to give the labor, or you have to do give the antibiotics and you have to induce the labor. तो प्री टर्म रप्चर अगर मेम्ब्रेन हुआ पहले ही, अगर तुम्हारी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, कारण चाहे इन्फेक्शियस हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियंस हो सकते हैं, या फिर मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो सकती है। तुमने चेक कर लिया, तुम्हारा लिटमस पेपर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तुम्हारा फर्निंग टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, फिर तुम्हें ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। दोस्तों अगर 34 वीक से पहले है तो तब तुम्हें इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराना है, स्टेरॉइड देने हैं, टोकोलिटिक देने हैं, MgSO4 देना है, एंटीबायोटिक देना है। बेस्ट ट्रीटमेंट ये है। अगर 34 वीक एक्सीड कर जाते हैं देन यू विल गिव द एंटीबायोटिक एंड देन यू विल स्टार्ट द इंडक्शन ऑफ लेबर। बट प्री टर्म लेबर के अंदर अगर 34 वीक से ऊपर हो जाते थे उसमें क्या करते थे? वेट एंड वॉच। क्या देते थे? क्या करते थे? वेट एंड, स्टेरॉइड के साथ साथ वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। डन डना डन डना डन डना डन। क्लियर हो गया जी? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Preterm rupture of membrane is clear to all of you. Preterm labor is clear to all of you. Treatment is clear to all of you. Simple crisp and clear treatment तुम्हारे सामने है। कंडीशन भी पता चल जाएगी एग्जाम के अंदर आएगी तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड पार्टोग्राम। एंड यू नो प्रोलॉन्ग्ड पार्टोग्राम क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सॉरी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर किस वजह से चलता है? जब अलर्ट लाइन इज, कैसे पता चलता है? बाय द अलर्ट लाइन इज क्रॉस्ड। When alert line is crossed, then it is known as what? Your prolonged labor. And guys remember, it is due to power deficit, yet mean less uterine contraction intensity. इसका कारण एक ही हो सकता है कि लेबर बहुत लंबी चल रही है, तुम्हारा क्या है? पावर बहुत कम लगाई जा रही है, या तो रास्ता छोटा है, या तो पावर डेफिशिट है, या तो पैसेज डेफिशिट है। पावर डेफिशिट मतलब ऊपर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, एंड पैसेज डेफिशिट मतलब ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो रही है पर नीचे से रास्ता छोटा है। नीचे से रास्ता क्या है? छोटा है। अलर्ट लाइन क्या होती है? ये देखो, कैसे दिखाऊं? ये देखो, ये मेरे माथे पे एक लाइन है, इसको बोलते हैं अलर्ट लाइन,
है ना, इसको बताते हैं अलर्ट लाइन। यहाँ क्या दिखा, ALERT लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ALERT, दिखा कि नहीं दिखा, ये अलर्ट लाइन होती है। अरे पार्टोग्राम में क्या होता है, एक अलर्ट लाइन होती है, एक एक्शन लाइन होती है। पार्टोग्राम में अलर्ट लाइन दिखाती है प्रोलॉन्ग लेबर, एक्शन लाइन क्रॉस हो जाए तो मतलब काम खराब हो चुका है, सीधा सिजेरियन सेक्शन करना है। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 4 आवर्स का। कितना होता है डिफरेंस, 4 आवर्स का होता है। क्लियर हो गया फंडा, अब पता चल गया व्हाट इज अलर्ट लाइन। ये देखो, ये देख, नहीं तो मुंह में भी दिखा, आ अलर्ट लाइन देखो, ठीक है। कॉज क्या है, ड्यू टू पावर डेफिशिएंट एंड ड्यू टू पैसेज डेफिशिएंट। एंड मैनेजमेंट क्या होगा, इंटेंसिटी नहीं हो रही, अगर इंटेंसिटी अच्छी नहीं है तो मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या था, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर भी क्या दोगे तुम, ऑक्सीटोसिन दोगे, प्लस आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या कराओगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह क्या निकला, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराना। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। सर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में रिमेंबर की पंच लाइन इज योर पैथोलॉजिकल रिंग, that is your Bandel's ring. Pathological ring is your Bandel's ring and it is present at the upper segment of the uterus. Sir, obstructed labor में you will see what Bandel's ring. Bad मतलब B से Bandel, B से bad. Bad मतलब something pathology is there. तो Bandel's ring is a pathological ring and it is seen in the obstructed labor. पहली बात। दूसरा नंबर, obstructed labor female will be presenting with the hematuria. उसके यूरिन में क्या आएगा, ब्लड आएगा। उसके बाद उसका वेजाइना कैसा होगा, गर्म और सूखा। इंग्लिश में बोलो तो हॉट ड्राई वेजाइना। कैसा वेजाइना है, हॉट ड्राई वेजाइना। उसके बाद माइल्ड ब्लीडिंग पर वेजाइना। और पेशेंट कैसी होगी, एग्जॉस्टेड, नीचे वेजाइना हॉट ड्राई हो रखा है, ऊपर से एग्जॉशन हो रही है। सीधा डायग्नोसिस क्या बन गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। सीधा डायग्नोसिस क्या बन गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और इसमें कौन सी रिंग होती है दोस्तों, बैंडल्स रिंग। कौन सी रिंग है ये, Bandel's ring, pathological ring present at the upper segment of the uterus. It is present at the upper segment of the uterus. So Bandel's ring is a pathological ring. It is seen in the obstructed labor, then hematuria, hot dry vagina, mild bleeding per vagina, exhausted patient. Now coming sir, we will treat this obstructed labor with the help of oxytocin. We will treat this obstructed labor with the help of oxytocin क्योंकि हमें contraction करानी है। Now due to overuse or you can say indigenous use of the oxytocin, वहां पे एक physiological ring बन के आएगी and that physiological ring is known as Schroeder's ring. That is known as Schroeder's ring. That is also a construction ring. बैड रिंग कौन सी थी, पैथोलॉजिकल। बैंडल्स रिंग बोलती थी पैथोलॉजिकल रिंग, और तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, शॉर्डर्स रिंग इज अ कंस्ट्रक्शन रिंग। दिस इज फिजियोलॉजिकल, दिस इज फिजियोलॉजिकल एंड दिस इज ड्यू टू इंडिजियस यूज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। इट इज फॉर्म्ड एट द अपर लोअर यूट्राइन सेगमेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, ऑक्सीटोसिन अगर ज्यादा यूज कर दिया तो यूट्रस में एक फिजियोलॉजिकल रिंग बन के आती है, उस रिंग का नाम है शॉर्डर्स रिंग। उस रिंग का नाम क्या है, शॉर्डर्स रिंग। क्या नाम है उस रिंग का, शॉर्डर्स रिंग। डन डना डन डना डन। एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर सर, अ स्ट्रेट मैनेजमेंट ऑफ योर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वुड बी सिजेरियन सेक्शन, वुड बी योर सिजेरियन सेक्शन। क्रिस्प क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई फीमेल आती है सूखा ड्राई वेजाइना लेके, सूखा हुआ गर्म वेजाइना लेके ऊपर से क्या होता है, एग्जॉस्टेड होती है, बैंडल्स रिंग होती है वहां पे, सीधा डायग्नोसिस है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की ट्रीटमेंट में शुरू में तुमने क्या करा, ऑक्सीटोसिन देने की कोशिश करी, ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा दे दिया, इस चक्कर में वहां पे एक फिजियोलॉजिकल रिंग बन गई। उस फिजियोलॉजिकल रिंग का क्या नाम था, श्योडर्स रिंग। क्या नाम था, श्योडर्स रिंग। एंड द मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन, मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन। देन कमिंग टू द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, फिर प्री टर्म लेबर, फिर तुम्हारा प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Everything is clear to all of you or not? Crisp and clear. Then coming to the post-term pregnancy, sir. Any pregnancy which is exceeding your 42 weeks, it is known as what? Post-term pregnancy. This is known as what? Post-term pregnancy. अर्जुन बुरा तो नहीं माना मेरे भाई, मजाक कर रहा था तेरे साथ, पूछना भूल गया। अर्जुन एवरीथिंग इज फाइन मेरे भाई, वो वाली बात का बुरा मत मानना यार, ठीक है। अर्जुन आई वॉन्ट योर रिप्लाई माई भाई। कहते हैं दोस्तों पोस्ट टर्म से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए। नहीं 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 माना मेरे भाई ने, लव यू भाई, सॉरी, ठीक है। जो दूसरे को इज्जत देता है, कहते हैं जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है। जो दूसरे को इज्जत देता है वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरे को वही देता है, इंसान दूसरे को वही देता है जो उसके खुद के पास होता है। जो लोग दूसरों को इज्जत नहीं देते मतलब उनके खुद के पास भी इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास नॉलेज है तुम्हें देने के लिए तो मैं तुम्हें नॉलेज ही दे सकता हूं, समझ में आया। मेरे पास इज्जत है तुम्हें देने के लिए तो तुम्हें इज्जत ही दे सकता हूं। इसी तरीके से चलता है काम, डन डना डन डना डन डना डन, ठीक है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या है दोस्तों? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ये अर्जुन ने कैसा इमोजी भेजा है, वल्गर लड़के, शर्म नहीं है तेरे को? ये क्या भेज दिया, ये क्या भेज दिया तूने? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, इट इज इक्वल टू और मोर देन 42 वीक्स एंड सर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। एल्बो है, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा। अच्छा एल्बो है भाई एल्बो है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही भेज दिया भाई ने, मैं तो डर गया था, मैं तो डर गई नाइस नाइस नाइस। मिस्टेकन डेट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वुड बी योर मिस्टेकन डेट। भाभी जी ने जो हिस्ट्री बताई थी मेनोपॉज की वो गलत बताई। अब इसमें क्या करना है, भाभी जी को 2 बादाम देने हाथ में, भाभी जी ये खाओ, याद करो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ था। आस्क हर टू रिवाइज द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की? एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन, मतलब बच्चा अगर अंदर होगा तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। पोस्टनेटल मतलब पैदा होने के बाद निमोनिया हो सकता है, उसको क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है, ठीक है भाई। तो याद रखना क्या तुम्हारा एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन इज मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन वुड बी निमोनिया, इट विल बी योर निमोनिया। एंड management of your post term pregnancy will be induction of labor। and sir अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है how you will do the induction of labor, how you will do the induction of labor। you can do use what oxytocin and also you can go for the artificial rupture of the membrane, जहां से प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। डंडना 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 डन। लेट्स टॉक अबाउट द इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडिकेशन क्या क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर की? सर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, फीटल डेथ, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, एक्लेम्सिया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इन सब केसेस में नहीं करानी है इंडक्शन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तुमने पहले ही पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वुड बी सिजेरियन सेक्शन। फिर सीपीडी, सीपीडी का ट्रीटमेंट तुमने माइल्ड का क्या पढ़ा था? माइल्ड का पढ़ा था ट्रायल ऑफ लेबर, और मॉडरेट टू सीवियर का पढ़ा था सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। फिर इस केस में भी नहीं कराना ट्रांसवर्स ब्रो या मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन में। एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, इन दैट केस ऑल्सो सर never do the induction of labor। now what are the methods, what are the methods sir? Number one method I want to discuss is a surgical method sir। what is a surgical method for the induction of labor? हाँ नीट पीजी का क्वेश्चन है, आई नो।
What is the method for the induction of labor, sir? Remember, sweeping and stripping of the membrane which will release the prostaglandin. मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम रगड़ोगे ना यूट्राइन की सेगमेंट को, अगर तुम रगड़ोगे ना अंदर से, there will be intense release of the prostaglandin which will produce what? Contraction. Which will produce what? Contraction. Now medical management is something which has been asked in the exam. So sir, medical management drug of choice would be your dinoproston, PGE2 analog, your dinoproston. So medical method for the induction of labor would be dinoproston. क्या है? डीनो. क्या है ये? डीनो. डीनो. डीनो क्या है? डीनो. मेडिकल मेथड में क्या याद करोगे? डीनो. 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 डीनोप्रोस्टॉन क्या है? डीनोप्रोस्टॉन एंड ए एक्ट ऑन सर्विक्स ओनली. Now coming to the misoprostol, they are the second best choice. First best, if I say drug of choice for the medical management of the induction of labor, that would be your dinoproston. That would be your dinoproston. That would be your dinoproston. ठीक है, डाइनोप्रोस्टोन. ये निकिता नारा ने शताब्दी के आगे आग लगा दी. ये क्या भाई, क्या तरीका है ये? शताब्दी के आगे आग लगा दी इसने, बहुत गलत बात है ये. ठीक है, देन सेकंड बेस्ट आंसर इज योर प्रोस्टो मिसोप्रोस्टोन. इट इज योर मिसोप्रोस्टोल. Now sir, augmentation of labor. The topic is augmentation of labor means speeding the process of labor. Augmentation of labor means speeding the process of labor. Speeding the process of labor, sir. Sir, remember, management, surgical management is artificial rupture of membrane. Again, artificial or rupture of membrane क्या रिलीज करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे. और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन कराना. क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन कराना. पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल मेथड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीहाइड्रोमनियन, HIV, हर्पीस एंड इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस. इस केस में तुमको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं कराना है. ठीक है, यू विल गो फॉर द मेडिकल मेथड. नाउ मेडिकल मेथड फॉर द अगमेंटेशन ऑफ लेबर, द ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी ऑक्सीटोसिन. एंड सर, कितना ऑक्सीटोसिन दोगे? 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट IV रूट से दोगे. कैसे दोगे? IV रूट से दोगे. तो मेडिकल मैनेजमेंट, द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑक्सीटोसिन फॉर द अगमेंटेशन ऑफ द लेबर. फॉर द अगमेंटेशन ऑफ द लेबर. ठीक है, चलो. Then coming to the next topic, and the next topic is ectopic pregnancy. Next topic is ectopic pregnancy. Implantation of the fertilized ovum outside the uterus. Sir, ectopic pregnancy is something, implantation of the fertilized ovum outside the uterus. Outside the uterus, and most common cause would be your PID. Most common cause would be your ectopic pregnancy का most common cause क्या है तुम्हारा? PID. And most common risk factor is history of previous ectopic pregnancy. Most common risk factor is previous ectopic pregnancy. Also contraceptive failure, smoking, endometriosis. Smoking and endometriosis. तो दोस्तों ध्यान देना, ectopic pregnancy किस पे ध्यान देना? Ectopic pregnancy is the implantation of fertilized ovum outside the uterus. Implantation of fertilized ovum outside the uterus, and the most common cause is PID. Most common cause is PID, and the most common risk factor would be previous ectopic pregnancy. Then most common site. Ectopic pregnancy की most common site would be ampulla of the fallopian tube. Why ampulla is there? Because fertilization occurs here. क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? एम्पुला पे होती है. इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहां ठहरेगी? एम्पुला. previous year question of the exam. This is previous year question of the exam. Then earliest site of tubal rupture. ये भी MCI का FMG एग्जाम क्वेश्चन. अर्लीस्ट साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर वुड बी इस्थमस. और कौन से वीक में? 6 वीक में. Most common site would be your ampulla. Earliest site of tubal rupture would be your isthmus, because isthmus is the narrowest part. Isthmus is your narrowest part. And most common symptom of तुम्हारा ectopic pregnancy would be lower abdominal pain. And most common cause of ectopic pregnancy would be your PID. और PID का भी most common क्या था? presentation sign क्या थी? lower symptom क्या था? lower abdominal pain. और कौन सी किट दी जाती है जरा बताओगे? कल ही सिखाया था. which kit is given in case of lower abdominal pain or PID?
Which kit is given, sir? Sir, it is your yellow kit. Yellow dirty fellow, yellow kit. It is your yellow kit. अब कैसे पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? जैसे ही तुमने अंदर मुंह डाला, तुमने देखा एम्प्टी यूट्रस एंड एडिनेक्सल मास इज प्रेजेंट। एडिनेक्सा पे मास प्रेजेंट था और अंदर यूट्रस खाली पड़ा हुआ था। बीटा एचसीजी डबल होता जा रहा है, बीटा एचसीजी डबल होता जा रहा है और तुम्हारा जो है यूट्रस खाली पड़ा है। दिमाग में सीधा आना चाहिए कि ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी केस। और कहां जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सबसे पहले तुम्हारे एम्पुला में जाती है, तो तुम इसको चेक भी करोगे। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वुड बी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राम प्लस बीटा एचसीजी कोरिलेशन। कैन यू टेल मी बीटा एचसीजी डबल कब होता है? कैन यू टेल मी बीटा एचसीजी डबल कब होता है? डबल कब होता है बीटा एचसीजी सर? इट डबल्स एवरी 48 आवर्स। इट डबल्स एवरी 48 आवर्स। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है? तुमको अंदर जाके देखना है, लैप्रोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? लैप्रोस्कोपी। और यहां पे एक साइन देखने मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट की पंच वर्ड टू सॉल्व अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बगेल साइन। क्या है? बगेल साइन। और कलर डॉपलर के ऊपर प्लीज वॉच द इमेज, watch the image please. If possible, please send this image on our Telegram integrated learning group. Please send the image there. That is highly important image. Color Doppler में you will see what? Ring of fire. Color Doppler में you will see what? Ring of fire. It is ring of fire. Bagel sign. Bandel's ring is a physiological ring or pathological ring? Bandel's ring, it is seen in obstructed labor and that is a bad ring, that is a pathological ring. Schroeder's ring is a physiological ring, that is because of indigenous use of the oxytocin. Now Bagel sign is something which is seen in the ectopic pregnancy. It is seen in the ectopic pregnancy and the most common cause of ectopic pregnancy would be your PID. And on color Doppler ऐसे लगेगा जैसे क्या? ring of fire. क्या है? Ring of fire. Done, 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 done. Now coming to the management of ectopic pregnancy, sir. Two type of management is there. Three type. Expectant management, medical management and surgical management. Expected management, medical management and surgical management. Expected management, sir, waiting for the spontaneous resolution. Expected management waiting for spontaneous resolution. स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन मतलब खुद में खुद वो खत्म हो जाए, नहीं खत्म होती है तो मेडिकल मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द बीटा एचसीजी कोरिलेशन. If sir your beta HCG is between 1000 to 5000, you will give a drug of choice, that is your methotrexate. MCQ. Medical management depends upon the beta HCG correlation. If beta HCG is 1000 to 5000, you will go for the medical management. If your beta HCG is more than 5000 and there is no response to the medical management, sir, then you will go for the surgical management. Then you will go for the surgical management. So remember, methotrexate is a drug of choice for ectopic pregnancy. Who is a drug of choice? What is a drug of choice for ectopic pregnancy, sir? Your answer is methotrexate. What is your answer? Sir, your answer is methotrexate. Methotrexate is a drug of choice for ectopic pregnancy. Ectopic प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट. क्या है उसके बाद? सर्जिकल मैनेजमेंट. इफ नो रिस्पॉन्स टू मेडिकल मैनेजमेंट, सर, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू मेडिकल मैनेजमेंट, you will see a beta HCG more than 5000 and you have checked cardinal activities present, then you will go for the surgical management. Surgical management is further divided onto two conditions. Number one is hemodynamically stable and hemodynamically unstable. If your baby is hemodynamic, no, if a person is hemodynamically stable, the treatment is linear salpingostomy. Linear salpingostomy. सीधा कट लगाया, ectopic pregnancy बाहर. Linear salpingostomy. If hemodynamically unstable plus there is a ruptured ectopic pregnancy, then you have to go inside with the help of laparotomy. You have to go the
do the laparoscopy, laparotomy plus salpingectomy. You have to do what? Salpingectomy. If hemodynamically stable, you will do the linear salpingostomy. If it is hemodynamically unstable and there is a rupture ectopic pregnancy, मतलब rupture हो गई है, and most common site of rupture would be your isthmus, वहां पे you have to do laparotomy, and in laparotomy which procedure you will perform? It is your salpingectomy. It is your salpingectomy. Now Bishop's score is also important. It is cervical scoring system before induction of labor. Cervical scoring system before the induction of labor is known as something Bishop score. It is known as Bishop score. और किस किस को दिया जाता है? देखो Bishop score किस किस को दिया जाता है? Dilatation, consistency, effacement, position, head. याद रखना बस इतनी बात. अगर बिशप स्कोर 9 से ज्यादा होगा then you can do induction of labor, otherwise you cannot do induction of labor. Otherwise you cannot do what? Induction of labor. Bishop score is for the cervical dilatation, it is for the cervix, and it is for the induction of labor. Max score is 15, and from what onwards you can start the induction of labor? It is more than 9, more than 9, more than 9. Now next topic would be antepartum hemorrhage. Dun dana dun dana dun dana dun. Sir, antepartum hemorrhage, bleeding per vagina after the age of bleeding per vagina after the age of viability and before the delivery of baby. Sir, can you tell me what is the age of viability in India? Can you tell me what is the age of viability in India? Age of viability in India. जल्दी से बताओ. I'm waiting for your answer. Hey lovelies. Hey sweetie pies. Cute, cute, good, good girls and boys. ठीक है. Soldier, soldier, मीठी बातें soldier. 28 weeks. In India, sir, it is 28 weeks. ठीक है. डिलीवरी ऑफ बेबी शुड बी डन एट 40 वीक्स. अगर इस दौरान अगर कोई ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग का नाम है एंटीपार्टम हिमरेज. तो 28 वीक से लेके 40 वीक तक अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है, दैट ब्लीडिंग शुड बी कंसिडर्ड एज antepartum hemorrhage. That is considered as antepartum hemorrhage. Sir, cause, the most common cause would be abruption placenta. The most common cause would be abruption placenta, or it is also known as abruptio placenta. Other cause could be placenta previa. You all know what is placenta previa. In the morning itself we have studied what? Placenta previa. Other causes को ignore कर दो. लो काट ही दिया तुम्हारे लिए. दो याद करने, abruptio placenta and placenta previa. It is the most common cause of your antepartum hemorrhage. Let's discuss one by one about the placenta previa and abruptio placenta. ठीक है जी. Placenta previa, you all know what is placenta previa. If your placenta is covering the internal os, that is known as placenta previa. देन इसकी एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज नोन एज डॉक्टर ब्राउनीज क्लासिफिकेशन. डॉक्टर ब्राउनी ने क्या कहा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. डॉक्टर्स ब्राउनी क्लासिफिकेशन फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया. डॉक्टर्स ब्राउनीज क्लासिफिकेशन फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया. अब इसके अंदर क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा. सबसे पहले क्या? लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल ऑस बट अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस. नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 2.5 सेंटीमीटर. 2 centimeter. Now it is within 2 centimeter. This is stage 1. Then it is reaching into internal os. It is stage 2. Incomplete central stage 3. Complete central stage 4. कैसे याद करा? अगर ये तुम्हारा देखो क्या है? यूट्रस. If this is your uterus, this is internal os. Internal os, और ये रहा तुम्हारा प्लेसेंटा. ये रहा तुम्हारा प्लेसेंटा. अगर प्लेसेंटा 2 सेंटीमीटर से कम की जगह में है, बट स्टिल इट इज अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस, दैट इज स्टेज 1. नियर टू इंटरनल ऑस, स्टेज 2. हाफ सेंट्रल, स्टेज 3. एंड फुल्ली कवरिंग, इट इज स्टेज 4. फुल्ली कवरिंग वुड बी योर स्टेज 4. दिस इज डॉक्टर ब्राउनीज क्लासिफिकेशन फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया. सर, योर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दिस स्टेजिंग. Type 1, this is your FMG exam question. Type 1 and type 2 anterior. Type 1 and type 2 anterior, sir, your answer is you will go for the vaginal delivery.
Type 1 and type 2 anterior, you will go for the vaginal delivery. Type 2 posterior, type 3 and type 4, you will do what? Cesarean section. Placenta previa का ट्रीटमेंट ध्यान से देख लेना, याद कर लो इसको बड़े प्यार से. Type 1, type 2 anterior, vaginal delivery. Type 2 posterior and type 3 and type 4, your answer is cesarean section. Sir, your answer is cesarean section. Type 1, type 2 anterior, vaginal delivery. Type 2 posterior and type 3 and type 4, sir, your answer is cesarean section. Done, done, done. Now, abruptio placenta, placenta previa पढ़ लिया हमने. एंटीपार्टम हेमोरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? अब्रप्शियो प्लेसेंटा. एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या था तुम्हारा? प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया वी हैव कंप्लीटेड. नाउ अलाउ मी टू स्टार्ट ठीक है, अलाउ मी टू स्टार्ट. ये मैंगो शेक बना के पी जाऊंगा मैं अभी, ठीक है. प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. दिस इज नोन एज अब्रप्शियो प्लेसेंटा. दिस इज नोन एज व्हाट? अब्रप्शियो प्लेसेंटा. Most common risk factors: history of previous abruption, trauma, hypertension, smoking, cocaine prone and retroplacental fibroid. इन सब की वजह से क्या होता है? abruptio placenta, मतलब premature separation of the placenta. प्लेसेंटा को वैसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर सेपरेट होना था दोस्तों. अब तुम्हारा प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो गया. तुम्हारा प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो गया. ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बुरी बात है. ये क्या है? बुरी बात है. पहले सेपरेट नहीं होना चाहिए. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मतलब बच्चे के डिलीवर होने के बाद नॉर्मली प्लेसेंटा को सेपरेट होना चाहिए था. और प्लेसेंटा सेपरेट के लिए तुमने पर एब्डोमिनल पढ़ा था क्रिकेट बॉल, और पर वेजाइनल पढ़ा था गश ऑफ ब्लड एंड परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द क्या कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है. अब यहाँ पे अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या हुआ? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है. रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं. मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अब्रप्शन. सर, नाउ द टाइप ऑफ अब्रप्शन इज कंसील्ड एंड रिवील्ड. Concealed and revealed type of conception. Guys, remember. उत्कर्ष भाई आए, हमने इंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा. सीढ़ी चढ़ के मजा नहीं आया. कूद कूद के मजे लेंगे अब यहाँ पे. कंसील्ड, वेलकम भाई, वेलकम. अब्रप्शन अकर्स इन सच अ वे दैट लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड. हेलो डियर, नियर आओ. तो गाइस, कंसील्ड abortion occur in such a way that lower edge of placenta is not separated. Lower edge of placenta is not separated, and remember this is a condition. This is known as concealed type of separation. Abruptio placenta we are studying. Separation of placenta we are studying. This is known as concealed type. This is known as concealed type. And if both the ends are removed, this is known as revealed type. This is known as revealed type. And management of abruptio placenta would be termination of pregnancy irrespective of gestational risk. Why? Because there is a risk of DIC, disseminated intravascular coagulation. तो ये था ट्रीटमेंट के साथ टाइप्स ऑफ एब्रप्शन. दो तरीके की एब्रप्शन होती है दोस्तों. एक होती है कंसील्ड टाइप की, कौन सी होती है? रिवील्ड टाइप की. कंसील्ड टाइप की जो है उसके अंदर लोअर मार्जिन इज नॉट सेपरेटेड, इट इज स्टिल इंटैक्ट. रिवील्ड टाइप में बोथ द मार्जिन आर सेपरेटेड. And the treatment of abruptio placenta is the termination of pregnancy irrespective of gestational age. Done, done. Next topic what we are going to start is abortion. चाय जब पीनी होगी बता देना, ब्रेक ले लेना, ठीक है? आराम से, कोई लोड नहीं है, आराम से पढ़ेंगे. Abortion, ठीक है? Most common type is a first trimester less than 8 weeks. Most common time would be first trimester, and sir it is less than 8 weeks. ठीक है? Less than 8 weeks. And most common cause of abortion would be aneuploidy, and most common trisomy 16. Previous year question. Most common cause of abortion would be trisomy 16. ठीक है? Trisomy 16. ठीक है? Trisomy 16. And most common cause of
रिकरेंट एबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वुड बी इडियोपैथिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन cause of abortion, it is trisomy 16. Most common cause of recurrent abortion in first trimester would be idiopathic, and most common cause of recurrent abortion in the second trimester is something very important. सेकेंड ट्राइमेस्टर में तुम्हारा बच्चे का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब अगर नीचे सर्विक्स इतना मजबूत ना हो कि वो उस साइज को बेयर कर सके, उस वजह से वो खुल जाता है और एबॉर्शन हो जाता है। सर दिस इज नोन एज सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, दिस इज नोन एज सर्विकल इनकॉम्पिटेंस। कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर सर्विकल इनकॉम्पिटेंस वुड बी अ रीजन बिहाइंड द एबॉर्शन? सर योर आंसर इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। किसके अंदर ट्राइसोमी? ओवरऑल मोस्ट कॉमन क्या है? ट्राइसोमी 16। मोस्ट कॉमन क्या है? ट्राइसोमी 16। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिकरेंट हो रहा है तो इडियोपैथिक, सेकंड में हो रहा है रिकरेंट तो सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ एबॉर्शन क्या पढ़ोगे? टाइप ऑफ एबॉर्शन दोस्तों, सबसे पहला एबॉर्शन है थ्रेटेंड एबॉर्शन। कौन सा एबॉर्शन है सबसे पहले? थ्रेटेंड एबॉर्शन। एंड याद रखना दोस्तों, थ्रेटेंड एबॉर्शन में स्पॉटिंग पर वजाइना इज सीन, spotting per vagina is seen, and guys remember in this case what is happening, your fundal height, इसको छोड़ दो, just remember internal os is closed, internal os is closed। थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर इंटरनल ऑस इज क्लोज एंड मैनेजमेंट इज बेड रेस्ट टू द मदर प्लस प्रोजेस्ट्रॉन टू द मदर। यू ऑल नो प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग, नाम सुना हुआ है? प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग, उसी तरीके से इस कंटेंट को भी तुम बाहर निकाल सकते हो थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर। थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर सम कंटेंट इज रिटेन्ड इनसाइड, इंटरनल ऑस इज क्लोज, इंटरनल ऑस इज क्लोज, एंड यू विल सजेस्ट अ मदर अ बेड रेस्ट एंड प्लस यू विल गिव अ प्रोजेस्ट्रॉन एंड यू विल डू व्हाट? प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग, प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग। ये माही आ गया, माही कहता है माही जांदा होया ले गया हासे की रोना मेरे वल पा गया, की रोना मेरे वल पा गया, छोटी जिंद लेके जावा केड़े पासे, ओ छोटी जिंद लेके जावा केड़े पासे, की रोना मेरे वल पा गया, की रोना मेरे वल पा गया, ओ माही जांदा होया ले गया हासे। ये माही आया और हासे लेके चला गया सबके। डॉक्टर साहब पहले तो थ्रेटेंड एबॉर्शन, सबसे पहले कौन सा एबॉर्शन है? थ्रेटेंड एबॉर्शन। ट्रांसलेशन बताता हूं, माही जांदा हुआ है, माई डियर हैज टेकन माई स्माइल, माही जांदा होया ले गया हासे, वाइल गोइंग बैक माही हैज टेकन माई स्माइल, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज क्राइंग, और रोना मेरे वल पा गया, और रोना मेरे वल पा गया, छोटी जिंद लेके स्मॉल लाइफ, a small life I should take where, ओ छोटी जिंद लेके जावा केड़े पासे, ओ छोटी जिंद लेके जावा केड़े पासे, and crying crying crying, for me what is left? only crying crying crying, और रोना मेरे वल पा गया। खुश हो जाओ भाई, मजे करो भाई, ठीक है। ट्रांसलेशन जरूरी भाई। देन सर inevitable abortion, मतलब content is just about to come outside, the content is just about to come outside, remember the fetus is just in the process of expulsion। अब internal os कैसी है दोस्तों? खुली है। खुली हुई internal os का ट्रीटमेंट होता है suction and evacuation। जब भी इंटरनल ऑस खुली हो सर, योर ट्रीटमेंट इज सक्शन एंड इवैक्यूएशन। फिर आया तुम्हारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में सम कंटेंट रिटेन इनसाइड, सम कंटेंट रिटेन इनसाइड, यहां पे इंटरनल ऑस ओपन है, और खुली हुई में ट्रीटमेंट क्या? सक्शन इवैक्यूएशन। अब आया चौथा वाला मिस्ड एबॉर्शन, इंटरनल ऑस क्या है? क्लोज। अगर इंटरनल ऑस क्लोज है तो क्या करोगे? डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, पहले खोलोगे और फिर निकल आओगे, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। उसके बाद ये कंप्लीट एबॉर्शन, सारी चीज हो चुकी है, सब कुछ बाहर आ चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? रीएश्योर, ट्रीटमेंट में क्या करोगे? रीएश्योर करोगे। डंडना 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 डन। नाउ वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक सर।
लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, वी डिजर्व अ स्मॉल ब्रेक. कब आओगे वापस? व्हेन यू विल कम बैक 6:20. 6:20 लेट्स कम बैक. फिर हमारा क्या रह गया? सारे के सारे एबॉर्शन, प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हाइपरटेंशन, फिर ब्रीच, सिफेलिक एंड ये देन मल्टीफिटल प्रेगनेंसी. ठीक है, हो जाएगा ये. मोस्टली वी आर एबल टू डू दिस बाय 8 o'clock तक विल बी फिनिशिंग. ठीक है, 8 o'clock तक हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस यार, लेट्स डू दिस, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक एट. ठीक है, अभी 23 पेजेस है, हो जाएंगे. ठीक है, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग. 6:20 लेट्स कम बैक एट 6:20. 6:30 यू वांट टू कम बैक? 6:30 फिर 9 बजे तक चल जाएगा रात को यार. हैं 6:20 ठीक है, 20 मिनट की ब्रेक बहुत होती. क्या करोगे? परांठे थोड़ी बनाने की, ढोकले चाय में चले जाओगे खुद ही. 6:30 कर दो यार. ठीक है, 6:30 कर लो. चलो 6:30 कर दी भाई. ना दोनों बीच की बात होगी. 6:20 इज फाइन. अरे 6:20 बोल दिया जब 6:20. चलो ज्यादा नहीं सुननी तुम्हारी, तुम बहक जाते हो. ज्यादा बार पूछ दो ना फिर ऐसे हो जाते हो बिल्कुल. Subject wise test, topic. Welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical-based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best.
keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the Team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for FMG and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December FMG exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7.
We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best. Keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is the introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year question session by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers.
For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is an introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year questions by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the given number, choose the best, keep on saying I will pass. So welcome to the next learning center. So here is an introduction to our mentor Dr. Ashish Kumar. So online and offline face-to-face courses offered for Fmge and next exam, our super special regular batch, vacation batch, special batch for next 2023 exam, rapid revision and chanting batch, test series, Q bank and hybrid batch. So we are soon going to start for the batches for December Fmge exam. So our hybrid batch is starting on 1st and 10th April. Our regular offline batch in Delhi, Hyderabad and Calicut is starting on 20th, 30th June. Then coming to the live interactive batch, it is starting on the 5th of June. So salient features of the NLC. All 19 subjects would be covered by renowned faculties. Systemic, subject-wise tests, topic-wise tests, monthly tests and weekly tests. A doubt clearing platform on Telegram with interaction with all the faculties. Free access to the NLC app with more than 10,000 questions. Chanting session by Dr. Paras and previous year questions by Dr. Sara. So we offer clinical case discussion, TNDs and rapid revision classes, 24/7 mentorship by Team NLC and Dr. Ashish Kumar. A study center will be available 24/7. We offer
cafe, mess inside the campus only. We are also having a hostel facility for the girls. So here we are throwing light on the NLC results. So for the offline classes, we offer 19 subjects by best faculties, 900 plus hours teaching, rapid revision sessions, chanting sessions, previous year question sessions, image based question sessions, clinical sessions, then your weekly and monthly tests along with your Q bank on NLC app. Also, for the live interactive online classes, we offer 900 plus teaching, regular course, rapid revision course, chanting, image-based questions, previous year questions, clinical based questions, and also videos will be available after watching the class. So here we are having view on the campus, our hostel, our classrooms. So we are having centers in the different cities. Now we are available for offline classes in Delhi, Hyderabad and Calicut. So this is all about our social media platform. Here we are having integrated learning YouTube channel, integrated learning Telegram group where we are providing free content for our doctors. Happy moment. So our super special faculty team along with the team NLC, the best faculty team available in the market with the best experience. So our MCA result for year 2021 are achievers. For admissions, contact on the जी ऑन है. मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी अलियों में मोहब्बत होगी मेरी दुनिया जो ये ला रा 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 ला रा 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 ला रा रा रा. हेलो जी, आगे पीली चाय है. अच्छा, पीली चाय आ गया स्वाद. नहीं कर लिए मजे हैं, खा लिए बिस्कुट है? ये थोड़ा सा प्लीज एक मिनट, स्ट्रीम थोड़ा आगे करना इसको. एमटीपी एक्ट की बात कर रहे थे दोस्तों. एमटीपी एक्ट जो है 0 to 24 वीक तक कर सकते हैं. मोर देन 24 वीक्स ऑल्सो वी कैन डू. मोर देन 24 वीक्स ऑल्सो वी कैन डू. 0 to 12 weeks we need one doctor and 12 to 24 weeks we need two doctors. Above 24 weeks it's only indicated in the special conditions. Above 24 weeks it is only indicated in the special conditions. Let's talk about the methods of abortion, the favorite topic of every FMG. Methods of abortion. First trimester is from 0 to 12 weeks sir. First trimester it is क्वेश्चन आया था भाई, आया था आई नो. First trimester, remember most common medical abortion it is best up to 7 weeks and best is suction and evacuation. Most commonly we use medical abortion. क्या ड्रग यूज करते हैं I will tell you, but the best treatment मतलब best to do the abortion is your surgical only, that is suction and evacuation by the Carmin's cannula. By the Carmin's cannula, and Carmin's cannula is your FMG exam question. Please watch the image based question of Carmin's cannula. The number of cannula is directly proportional to the age of gestation. Number of cannula is directly proportional to the age of gestational sir, and most common method in the first trimester would be the medical abortion. और medical abortion में day 1 में कौन सी टैबलेट दी जाती है? मिफीप्रिस्टोन. क्या दिया जाता है? मिफी. क्या दी जाती है? मिफी दी जाती है. तो फर्स्ट गो में क्या दिया जाता है? मिफी दी जाती है. फर्स्ट गो में क्या दिया जाता है? मिफी फर्स्ट. मी फर्स्ट क्या बोलती है? मी फर्स्ट. मी फर्स्ट देनी है ऊपर से. मी फर्स्ट देनी है ऊपर से. आफ्टर 48 आवर क्या देनी है? मीसो. मीसो कहां से देनी है? नीचे से.
मीसो नीचे से, मिफी ऊपर से. दिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, अ मेडिकल एबॉर्शन प्रोटोकॉल. मेडिकल एबॉर्शन प्रोटोकॉल. डे 1 मिफी. After 48 hour mesoprostol, and the best is your surgery, that is suction evacuation. Asan, evacuation. First trimester में कर दिया भाई, done, done. Let's come to the second trimester. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ चॉइस वुड बी प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और वहां पे क्या हो जाएगा, बेबी नीचे आ जाएगा. टैबलेट की बात करूं तो ड्रग ऑफ चॉइस would be your dinoprostol. Second trimester drug of choice would be your dinoprostol. Also you can use what, misoprostol. And the best always suction and evacuation. Now the next topic, recent NEET PG exam question is pregnancy induced hypertension. Sir, gestational hypertension and preeclampsia we are going to study. Normally in the pregnancy, increase in BP is very normal thing. B's after 20 weeks. After 20 weeks, increase in BP would be very normal thing. ठीक है, that is very normal thing. BP return to normal. BP increase start from 20 weeks and BP return to normal within 12 weeks after the delivery. Within 12 weeks after the delivery के 12 हफ्ते के अंदर तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाता है और प्रेगनेंसी के 20 वीक के अंदर तुम्हारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है. अब प्री एक्लम्सिया क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना. बीपी प्लस प्रोटीन यूरिया, ठीक है, BP plus proteinuria is preeclampsia. Now preeclampsia is divided into two, mild preeclampsia and severe preeclampsia. How you have to remember, first criteria is hypertension. Sir, systolic BP is between 140 to 160. It should be between 140 to 160, then it is your mild. Diastolic should be 90 to 100. 140 to 60 systolic upon 90 to 100 diastolic, that is mild preeclampsia. If it is systolic more than 160 and diastolic more than 110, that it is severe condition, severe preeclampsia. अब प्रोटीन यूरिया की बात कर लो. प्रोटीन यूरिया के लिए कहा गया है, इफ 5 ग्राम लेस देन 5 ग्राम प्रोटीन्स पर 24 आवर, 5 ग्राम से कम प्रोटीन निकलते हैं 24 घंटे के अंदर तो ये माइल्ड है. अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारा 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन निकलता है, दैट इज सीवियर प्रीएक्लेम्सिया. एक होता है डिपस्टिक टेस्ट. डिपस्टिक टेस्ट में अगर +1 to +3 आता है माइल्ड, इफ इट इज मोर देन +3 इट इज नोन एज सीवियर. इट इज नोन एज सीवियर. चलो दोबारा से मेरे साथ. प्रीएक्लेम्सिया का मतलब है इंक्रीज इन बीपी एंड प्रोटीन यूरिया. इंक्रीज इन बीपी एंड प्रोटीन यूरिया. माइल्ड के अंदर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी 140 to 160. सिस्टोलिक शुड बी 140 to 160. डायस्टोलिक शुड बी 90 to 110. 90 to 110. ठीक है. सीवियर मोर देन 60 अपॉन मोर देन 110. 160 110 से ज्यादा होगा तो सीवियर. प्रोटीन यूरिया लेस देन 5 ग्राम इन 24 आवर वुड बी माइल्ड. मोर देन 5 ग्राम इन 24 आवर वुड बी सीवियर. और डिपस्टिक टेस्ट में अगर +1 to +3 हुआ तो माइल्ड, मोर देन +3 हुआ देन यू विल कंसीडर इट एज अ सीवियर प्रीएक्लेम्सिया. नाउ व्हाट इज मोर important in preeclampsia? Hypertension is more important than proteinuria. ठीक है. Now because of preeclampsia there can be also end organ damage plus headache, decrease in vision, and recent NEET PG exam question came from the Chanting guys. It is your HELP syndrome. HELP syndrome was asked on 21st of May exam. It is a high chances that this can be repeated in your exam also. How you will diagnose a HELP syndrome, which is a complication of the preeclampsia? Guys, there is one criteria known as Tensi's criteria. The name of criteria is Tensi's criteria, and remember what exact options were given over there. Criteria for the diagnosis of HELP syndrome, guys: SGPT, SGOT more than 70 international unit. SGPT, SGOT more than 70 international unit per liter.
LDH more than 600 and platelet less than 1 lakh, this condition will directly suggest you of a HELP syndrome, 10 C's criteria: SGPT, SGOT more than 70, LDH more than 600 and platelet less than 1 lakh. Direct question came from the chanting note. Then coming to the management of preeclampsia, sir. Mild, you have to monitor the BP up to 37 week, doesn't matter. Severe, you have to give the steroids, sir, and your drug of choice is labetalol. Drug of choice is labetalol. Hypertension in pregnancy, drug of choice will be labetalol. Your preeclampsia also drug of choice would be your labetalol. What is the management of HELP syndrome, sir? जब HELP syndrome हो जाए तो फिर इसकी कोई help नहीं कर सकता. Immediate termination of pregnancy irrespective of the gestational age. Immediate removal of the immediate termination of the pregnancy irrespective of the gestational age. So drug of choice for pregnancy induced hypertension would be labetalol. Labetalol, labetalol, क्या है? Labetalol, क्या? Labetalol, labetalol. Drug of choice for chronic hypertension in emergency. What is the drug of choice for chronic hypertension in pregnancy? Again your answer is labetalol. और labetalol एग्जाम में आ रहा है 4 जून को. labetalol will be in your answer in your question paper. Now preeclampsia is over. Hypertension plus proteinuria is over. Now I will talk about the eclampsia. What is eclampsia? Severe preeclampsia means what? Hypertension plus proteinuria plus convulsion. Plus क्या हो गया? Convulsion. And drug of choice for eclampsia, MgSO4. And antidote is calcium gluconate. MgSO4 is an antidote for calcium gluconate poisoning. कैल्शियम ग्लूकोनेट की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट. एंड एक्लेम्पसिया आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मैग्नीशियम सल्फेट. द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मैग्नीशियम सल्फेट. रिमेंबर, pre-eclampsia drug of choice is labetalol. Eclampsia drug of choice is MgSO4. eclampsia में भी देते हैं labetalol क्योंकि यहां पे भी तो है pre-eclampsia. Done, done, done. So what is the management protocol of eclampsia? First, maintain the airway. Why? Because convulsions are present. Convulsion की वजह से पहले तुम्हें airway maintain करना है. Then you have to give a drug of choice for eclampsia, that is your MgSO4. Then you have to give drug of choice for pre-eclampsia, that is labetalol. Then you have to do what? Termination of pregnancy irrespective of gestational age. HELP syndrome का भी क्या treatment था? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज. एंड तुम्हारा एक्लेम्पसिया का भी ट्रीटमेंट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज. डन डना डन डना डन. Drug of choice for status eclampticus would be thiopentone. Drug of choice for status eclampticus would be thiopentone. And predictor of pregnancy induced hypertension, who will predict? It is your USG color Doppler of uterine artery. इससे पता चलेगा कि pregnancy induced hypertension होने वाला है कि नहीं होने वाला है. डंडना 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 डन. Let's talk about the next topic, sir. It is your malpresentation. And malpresentation was also a question in your exam. Most common would be your breach. Malpresentation मतलब खराब presentation. Most common is breach. सबसे पहले क्या? फ्रैंक. तो फ्रैंक लोगों की टांगे उठी हुई होती है, यस और नो? देखो फ्रैंक ब्रीच में भी बच्चे की टांगे क्या है? उठी हुई है. तो फ्रैंक लोग कैसे? मैं कहता मैं बड़ा फ्रैंक हूं या मैं बड़ी फ्रैंक हूं. तो भाई फ्रैंक लोगों की टांगे किसी उठी हुई. तो फ्रैंक ब्रीच में दोनों टांगे अप. तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा तुम्हारा? बटक्स एंड जेनिटिलिया. और थाई इज फ्लेक्स्ड, नी इज एक्सटेंडेड. थाई फ्लेक्स, नी एक्सटेंडेड, फ्रैंक ब्रीच. ये कौन सी ब्रीच है? फ्रैंक ब्रीच. उसके बाद है कंप्लीट ब्रीच. शर्मा गया. क्या है? शर्मा गया ऐसे करके. ठीक है, ऐसे शर्मा गया. थाइज फ्लेक्स, नी इज ऑल्सो फ्लेक्स. ठीक है. उसके बाद है तुम्हारा फुटलिंग ब्रीच. ये देखो पैर पहले बाहर आ रहा है. बोथ थाई एंड नी आर एक्सटेंडेड एंड प्रेजेंटिंग पार्ट वुड बी फ्री. ठीक है. डन डना डन डना डन. तो फ्रैंक ब्रीच में ऊपर टांगे उठ गई. दूसरे में शर्मा गया, उसका नाम क्या है? कंप्लीट ब्रीच. कंप्लीटली शर्मा गया तो कंप्लीट ब्रीच है. उसके बाद पैर बाहर आए तो फुटलिंग. डन डना डन डना डन. अब देखते हैं इसका. Assisted breech delivery can be tried in frank breech, extended breech and complete breech. ठीक है. Assisted breech मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं इन तीनों कंडीशन को. फ्रैंक या फिर कंप्लीट हो गया या फिर एक्सटेंडेड ब्रीच हो गया. ठीक है. या फुटलिंग ब्रीच बोल दो उसको. नाउ रिमेंबर, फॉर एक्सटेंडेड लेग्स इन द फ्रैंक ब्रीच,
फ्रैंक ब्रीच कैसी थी, दोनों टांगे उठी हुई थी। अब इस केस के अंदर तुम कौन सा वाला मैन्यूवर दोगे, दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन गाइस, रिमेंबर पिनार्ड मैन्यूवर इज द आंसर। पिनार्ड मैन्यूवर में व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस द popliteal fossa and bring the legs back. How you will do this, see with the example, help of example. This is pressing the popliteal fossa. popliteal fossa को प्रेस करके टांगों को नीचे लाना, पी से popliteal, पी से पिनार्ड मैन्यूवर, पी से popliteal, पी से पिनार्ड मैन्यूवर। और पिनाक के मारना के लोग फ्रैंक होते हैं, तो फ्रैंक ब्रीच का क्या ट्रीटमेंट है, पिनार्ड मैन्यूवर। क्या ट्रीटमेंट है, पिनार्ड मैन्यूवर। डंडना 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 डन। दोस्तों फॉर अपर लिम एक्सटेंडेड आर्म्स लाइक दिस, ओह माय गॉड मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, आई विल पास आई विल पास आई विल पास। शाहरुख खान के हाथ कैसे ऐसे खुले हुए, हाथ शाहरुख खान के हाथ कैसे खुले हुए हैं। इसमें एक मैन्यूवर यूज करना है, उसका नाम क्या, लव सेक्स मैन्यूवर। इसको या तुम बोल सकते हो लव सेक्स मैन्यूवर। तो लव सेक्स मैन्यूवर, एक्सिला को प्रेस करना है, दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। फॉर अपर लिम एक्सटेंडेड आर्म्स क्या करना है, लव सेक्स मैन्यूवर। डन 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 डन। तो याद रखना दोस्तों, लव सेक्स मैन्यूवर कौन सा मैन्यूवर है, लव सेक्स मैन्यूवर। आप सोचो आफ्टर कमिंग हेड, मतलब सारा शरीर बाहर आ गया और तुम्हारा सर अंदर रह गया, सारा शरीर बाहर आ गया, सर अंदर आ गया। दिस इज नोन एज आफ्टर कमिंग हेड। आफ्टर कमिंग हेड के लिए तुम्हें क्या करना है, बर्न मार्शल। क्या करना है, बर्न मार्शल टेक्निक। दोनों टांगों को उठाना है, फ्लेक्स करना है बॉडी की तरफ। What if still baby is not coming outside? Then you have to do something that is known as cesarean section. ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा, स्टार गैजर ब्रीज। स्टार गैजर ब्रीज में क्या होता है, बच्चे का हेड ऐसे एक्सटेंड होता है। बच्चे का हेड कैसे होता है, एक्सटेंड होता है। याद रखना, इन स्टार गेजर ब्रीज तारे देखता ऊपर, क्या देखता है, तारे देखता है ऊपर। तिल मिलाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, है ना, लाइक ए डायमंड। आगे मेरे को भूल गया। ट्रीटमेंट क्या है, सिजेरियन सेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है, सिजेरियन सेक्शन। और यहां पे आ चुके हैं टिंडर के हमारे स्पॉन्सर, इस चैंटिंग के फेक आईडी बना करके यहां पे सेल लगा दी है इन्होंने। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। Star geyser breed. Treatment is C-section. Treatment is cesarean section. Treatment is cesarean section. And if after coming head is entrapped, if after coming head is entrapped, guys, remember, if a preterm baby is there, preterm में क्या करना, दुष्यरन इंसिजन। अगर बर्न मार्शल करा आफ्टर कमिंग हेड में, अगर बर्न मार्शल करा तुमने आफ्टर कमिंग हेड में, दोस्तों याद रखना, बर्न मार्शल करा तुमने आफ्टर कमिंग हेड के अंदर करा, तो याद रखना नहीं हुआ अगर सक्सेसफुल, तो यू विल सी इफ इट इज प्री टर्म और टर्म। इफ द बेबी इज प्री टर्म, यू विल गो फॉर द दुष्यरन इंसिजन एट 10 o'clock 2 o'clock पोजीशन। अगर टर्म बेबी हुआ, सर अंदर फंस गया, बाहर नहीं आ रहा, जावा नेली, क्या करोगे, जावा नेली, उसको अंदर डालोगे पूरा का पूरा और सिजेरियन सेक्शन करोगे। दिस इज नोन एज जावा नेली मैन्यूवर। डंडना 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 डन। चलो आगे बढ़ेंगे। दिस इज जावा नेली। नाउ ट्रांसवर्स, मतलब बच्चा कैसा, ऐसे लेटा हुआ बच्चा है। बच्चा लेटा हुआ, तो मोटी मोटी बात सुनना मेरी, अगर बच्चा लेटा हुआ पैदा होता है, ऐसे ट्रांसवर्स ब्रीच में पैदा होता है, मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठंडा वाला, मोस्ट कॉमन पोजीशन वुड बी एक्रोमियन। मोस्ट कॉमन पोजीशन में डॉर्सो इंटीरियर, presenting part would be shoulder and denominator would be acromion and denominator would be acromion. Transverse position में most common position would be dorso anterior, presenting part will be shoulder and denominator will be acromion and denominator will be acromion. ये देखो बच्चा ऐसे लेटा हुआ है। अब 36 वीक ऑनवर्ड्स, 36 वीक ऑनवर्ड्स तुमको क्या करना है, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करना है, बच्चे को रोटेट करने का ट्राई करना है। बट अगर एट द टाइम ऑफ लेबर तुम कोशिश करोगे उसको घुमाने का, तो ये पाप है दोस्तों। एट द टाइम ऑफ लेबर योर ट्रीटमेंट इज सिजेरियन सेक्शन। सो ट्रांसवर्स ब्रीच अगर 36 वीक के ऊपर बच्चा हो जाता है बिफोर लेबर, यू विल डू एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, बट एट द टाइम ऑफ लेबर यू विल नॉट डू, यू विल डायरेक्टली गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, यू विल डायरेक्टली गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। डंडना डंडना डन। फिर अगर फेस या ब्रो बाहर आएगा, मैनेजमेंट ऑफ फेस ब्रो, अगर ब्रो बाहर आता है तो सिजेरियन सेक्शन, अगर मुखौटा बाहर आता है तो क्या करोगे, वेजाइनल डिलीवरी। ब्रो बाहर आए तो सिजेरियन, ब्रो का काटो,
ब्रोका काट दो, ब्रोका सिजेरियन, और फेस आया तो वाह, फेस बोलोगे वाह, वाह से वजाइना, वजाइनल डिलीवरी, डंडना डंडना डन. If a patient comes in occipito-posterior position, what is the next step, sir? Occipito-posterior, OPP position. OPP position की वजह से फटता भी बहुत जल्दी था. क्या हमारा फिस्टुला बनता था. इस वजह से क्या करना है? वेट एंड वॉच. क्या करना है? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच. डंडना 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 डन. Now, the next would be last slide for today's class would be multi-fetal pregnancy, sir. Sir, multi-fetal pregnancy, if you remember, most common is twins. दो तरीके के twins होते हैं. आओ तुम्हें रटवाता हूं दो तरीके के. मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है? एक स्पर्म एक ओवा मिलके क्या बनाया? एक जाइगोट. एक स्पर्म एक ओवा मिलके क्या बना है? एक जाइगोट. अब ये एक जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू टू जाइगोट. तो अब जो ये बच्चे बनेंगे एक ही जाइगोट से, ये एक जैसे दिखेंगे, यस और नो? इनका एक जैसा जेंडर होगा, यस और नो? यस, दैट इज व्हाई नोन एज आइडेंटिकल ट्विन. दिस इज नोन एज आइडेंटिकल ट्विन. दिस इज नोन एज आइडेंटिकल ट्विन. अब डाइजाइगोटिक है, दो स्पर्म दो ओवा, दो स्पर्म दो ओवा, तो दो जाइगोट बने. अब ये बच्चे सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट जेंडर के भी हो सकते हैं. दिस इज नोन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. सो आइडेंटिकल ट्विन किस में दिखेंगे? मोनोजाइगोटिक में. एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स आर सीन इन डाइजाइगोटिक. इट इज सीन इन डाइजाइगोटिक. फिर इसके अंदर क्या है, ये हमने ट्राई कर लिया. फिर हमारा क्या? टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक मतलब एक स्पर्म एक ओवा, एक स्पर्म एक ओवा. एक स्पर्म और एक ओवा ने डिवाइड करा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन करी, फिर डिवाइड हुए, आइडेंटिकल ट्विन पैदा हुए. अब कैसे कैसे क्या होता है? यहां पे बड़ा अच्छा निमोनिक है. क्या है? दीदी मोदी मोमो. दीदी दीदी मोदी मोमो. दीदी मोदी मोमो. दीदी मोदी मोमो. इफ डाइवर्जन अकर विद इन फर्स्ट 3 days, अगर पहले 3 दिनों के जाइगोट फॉर्मेशन होने के फर्स्ट 3 days के अंदर डाइवर्जन होता है, अगर डिवीजन होता है, तो निमोनिक इज दीदी. निमोनिक इज दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना. If a division occur within first 3 days, sir, it is your dichorionic and diamniotic. Dichorionic and diamniotic. If division occurs after 4 to 8 days, 4 to 8 days के बीच में होगा तो हमारा निमोनिक है मोदी. क्या है? मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी मित्रों. मोनोकोरियोनिक एंड डायमनियोटिक. मोनोकोरियोनिक एंड डायमनियोटिक. मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक. अगर 9 से 12 दिन में डिवीजन होती है तो निमोनिक क्या बन जाएगा? मोमो. भैया थोड़ी चटनी डालो, गरम वाले दो ना, ताजे मोमो दो ना, इसके अंदर चटनी, आप मेयोनीज दे दो, केचप दे दो. भैया ये इतने गरम क्यों नहीं है भैया, नीचे से निकाल के दो भैया, मेरे को मोमो खाने हैं भैया. इफ डिवीजन अगर 9 to 12 days, सर योर आंसर इज मोमो. मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक. मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक. तो दोस्तों याद रखना, if a division is occurring within first 3 days, your answer is dichorionic, diamniotic. If division is occurring within first 3 days, your answer is dichorionic, diamniotic. If a division is occurring between 4 to 8 days, division is occurring between 4 to 8 days, क्या? मोदी. First 3 days, 4 to 8 days, 9 to 12 days. दीदी मोदी मोमो, दीदी मोदी मोमो, दीदी मोदी मोमो, दीदी मोदी मोमो. डन 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 डन. What if, sir, if division is occurring after 12 days? अगर 12 दिन के बाद डिवीजन हो रही है, there will be complete splitting or partial splitting? Sir, there will be partial splitting and this is known as conjoint tendon. This is called as conjoint tendon. और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना. थोरैकोफेगस मतलब छाती जुड़ी हुई मोस्ट कॉमन है अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू द पैराफेगस. तो थोरैकोफेगस ट्विन्स आर मोर कॉमनली सीन इफ अ डिवीजन इज occurring after 13 days. If a division is occurring after the 13 days. Dun 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 dun. Now let's talk about the dichorionic and monochorionic pregnancy. Dichorionic means here see two placentas are there.
डायकोरियोनिक मीन 2 प्लेसेंटा, मोनोकोरियोनिक मीन 1 प्लेसेंटा। ये दोनों बच्चे अगर एक प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेते हैं, दिस इज नोन एज मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। अगर दोनों बच्चे डबल प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज नोन एज डायकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। डन डना डन डना डन। देन टी साइन और इन्वर्टेड टी साइन इज एग्जाम क्वेश्चन। T sign और inverted T sign is seen in mono T। मोनो क्या है? T। मोनो क्या है? T। मोना क्या पीती है? T पीती है। मोनोकोरियोनिक में T और इन्वर्टेड T। ठीक है, उसके बाद क्या है? डाइकोरियोनिक। डाइकोरियोनिक में क्या है? लैम्डा और ट्विन पीक साइन। डाइकोरियोनिक में लैम्डा और ट्विन। डाई में क्या? दो लोग, ट्विन पीक साइन और लैम्डा साइन। ट्विन पीक साइन और लैम्डा साइन। ट्विन पीक साइन और लैम्डा साइन। Most common neonatal complication in the twin pregnancy. If twin pregnancy is there, the most common complication would be your prematurity. The most common complication would be your prematurity. What if, sir, the most common complication of monochorionic and diamond? मोदी जो कि 4 दिन से 8 दिन में पाया जाता है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मतलब क्या है? एक प्लेसेंटा है, 2 एमनियोटिक सैक है। एक प्लेसेंटा, 2 एमनियोटिक सैक है। इस केस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वुड बी ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन कमिंग टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। ये क्या है? मोमो कब आता था तुम्हारे? 9 से 12 दिनों में। मोमो कब आता था? 9 से 12 दिनों में। नोमो क्या होगा? कॉर्ड एंटेंगलमेंट। एक ही प्लेसेंटा और एक ही तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूइड। इस केस में क्या होगा? देयर इज अ कॉर्ड एंटेंगलमेंट। क्या होगा? कॉर्ड एंटेंगलमेंट। पर अगर 2 एमनियोटिक सैक है, इस केस के अंदर क्या होगा? ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अगर एक ही जगह पे बच्चा है, एक ही जगह पे जो है एमनियोटिक फ्लूइड, एक ही सैक है, एक ही प्लेसेंटा, इस केस में क्या होगा? कॉर्ड एंटेंगलमेंट। And what is the length of umbilical cord? Can you all tell me what is the length of umbilical cord? In the morning also I have taught you. What is the length? Sir, your length is 30 to 100 centimeters. Your length is 30 to 100 centimeters. If everything is fine, sir, 200% exam question. Sir, it is 200% exam question, and the name of topic would be your postpartum hemorrhage. The name of topic would be your postpartum hemorrhage, sir. Excessive bleeding per vagina after the delivery. पहला नंबर तो ये देखो, नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है आफ्टर vaginal delivery. If 500 blood loss, 500 ml blood loss is there, that is normal degree. Normal, that is up to 500 ml. If after cesarean section up to 1000 ml blood is lost, that is also very normal. If twin pregnancy is there, twin delivery is happening, in that case 1000 ml blood loss is very much fine. Sir, if any of the value exceed these normal values, you will consider this as a postpartum hemorrhage. You will consider this as a postpartum hemorrhage. And let's learn about the types of postpartum hemorrhage. Sir, number 1 type is primary postpartum hemorrhage, and number 2 is secondary postpartum hemorrhage. 200% exam question. If any hemorrhage or any bleeding is happening before 24 hours, within the 24 hours of the delivery, sir, that is known as primary PPH. That is known as primary PPH. And the most common cause would be uterine atonic. There will be atonic uterus. मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर पहले 24 घंटे में ऐसा होता है, अगर पहले 24 घंटे में ऐसा होता है, दैट इज नोन एज एटॉनिक यूट्रस। दैट इज नोन एज व्हाट? एटॉनिक यूट्रस। और अगर if after 24 hours and before 12 weeks of delivery, after 24 hours and before 12 weeks of delivery it is happening, it is known as secondary PPH. It is known as what? Secondary PPH. So what is primary PPH? Within 24 hours. Within 24 hours if it is happening, it is known as primary PPH. If it is happening after 24 hours and before 12 weeks of delivery, it is known as secondary PPH. Now I'll tell you about the management of PPH, which is very, very important. Sir, management of PPH is very, very important. And what is the management of PPH? Number 1 step would be injection of tranexamic acid. Injection of tranexamic acid, that is 1 gram. Tranexamic acid injection is on the one go, that is 1 gram, plus simultaneously start the resuscitation. Number 1 step is injection of tranexamic acid to stop the bleeding.
drug of choice would be oxytocin and this time 40 international unit. कितना ऑक्सीटोसिन देना है? 40 इंटरनेशनल यूनिट. कितना है? 40 इंटरनेशनल यूनिट. डन है जी. उसके बाद सुनो, इफ नो रिस्पॉन्स बाय ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो तुम्हें कॉम्बिनेशन देना है ऑक्सीटोसिन प्लस यूट्राइन मसाज. क्या क्या देना है? ऑक्सीटोसिन प्लस यूट्राइन मसाज देनी है. अगर इससे भी फर्क नहीं लगता है तो क्या करोगे? बेस्ट ड्रग टू ट्रीट द पीपीएच वुड बी कार्बाप्रोस. वुड बी कार्बाप्रोस. ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी ऑक्सीटोसिन, but best drug if they are asking, your answer is carbaperos. Drug of choice would be oxytocin. कितना? 40 international unit. If oxytocin plus uterine massage is not working, then you will go for the best drug to treat the PPH. Sir, your answer is carbaperos. What if still the bleeding is not stopped? You will go for the bimanual uterine compression, because you learned in the ENT very first go you have to do what? The compression. दबाने से bleeding रुक जाती है. एक्सटर्नल एओर्टा का कंप्रेशन करोगे, बायमैनुअल यूट्राइन आर्टरी कंप्रेशन करोगे, एक्सटर्नल एओर्टा कंप्रेस करोगे और इसको पहनाओगे एमसीक्यू, मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट. क्या पढ़ाओगे? मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट पहनाओगे. तो सबसे पहले क्या करा? ट्रांसएमिक एसिड. सबसे पहले क्या करा? ट्रांसएमिक एसिड करा, रिसस्टिकेट करा. उसके बाद दिया ऑक्सीटोसिन. ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी ऑक्सीटोसिन 40 इंटरनेशनल यूनिट. अगर उससे अकेले से काम नहीं बना तो क्या करोगे? ऑक्सीटोसिन के साथ साथ में क्या करोगे? तुम मसाज दोगे. क्या करोगे? मसाज करोगे. अगर इससे भी काम नहीं चला तो क्या करोगे? बेस्ट ड्रग कार्बाप्रोस दोगे. क्या दोगे? बेस्ट ड्रग कार्बाप्रोस. अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो तुम क्या करोगे? यूट्राइन आर्टरी मसाज दोगे. यूट्राइन मसाज दोगे, एक्सटर्नल एओर्टा को क्या करोगे? कंप्रेस करने की कोशिश करोगे. इसके साथ साथ में क्या पहनाओगे? मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट. क्या पढ़ोगे? मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट. फिर उसके बाद अगर इससे भी रिस्पॉन्स, अगर मिलिट्री वालों से भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करोगे? बकरी बनाओगे और कॉन्डम लगाओगे. बकरी बैलून कैथेटर और कॉन्डम कैथेटर. 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 डन डना डन. अगर इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो चेक करोगे मल्टी पैरा है कि प्राइमी पैरा है. इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या चेक करोगे? मल्टी पैरा है या प्राइमी पैरा है. दोस्तों मल्टी पैरा के अंदर यू विल डू व्हाट? हिस्टेक्टमी. मल्टी पैरा में क्या करोगे? हिस्टेक्टमी. एंड प्राइमी पैरा में यू हैव टू डू व्हाट? प्राइमी पैरा मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको बचाना बनता है, उसको मरने नहीं देना है. कंप्रेशन, बी लिंच सूचर. बी लिंच सूचर लगाओगे और कंप्रेस करोगे यूट्रन आर्टरी को, ओवेरियन आर्टरी को. यूट्रन आर्टरी भी कंप्रेस कर ली सूचर लगा के, ओवेरियन आर्टरी भी कंप्रेस कर ली सूचर लगा के, तब भी नहीं रुक रही ब्लीडिंग तो क्या करोगे? हिस्टेक्टमी कर दोगे. हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस काट के बाहर फेंकोगे, बदले में अंदर क्या डालोगे? छाता डालोगे. अम्ब्रेला पैक और पैराशूट पैक. अम्ब्रेला पैक और पैराशूट पैक. अम्ब्रेला पैक और पैराशूट पैक. डन डना डन डना डन. अगेन रिवाइज along with me. 200% sure MCQ from the postpartum hemorrhage. Sir, postpartum hemorrhage means any normal value of the bleeding, if it is exceeded, that is known as postpartum hemorrhage. Sir, postpartum hemorrhage is of two types. Sir, primary and secondary. Primary within 24 hours, secondary after 24 hours. After 24 hours. Primary का most common cause is atonic uterus and secondary most common cause would be your रिटेन्ड प्लेसेंटा इनसाइड. नाउ ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या दिया था? ट्रांसएमिक एसिड 1 ग्राम प्लस साइमल्टेनियसली स्टार्ट द रिसस्टिकेशन. ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी ऑक्सीटोसिन और कितना देना है? 40 इंटरनेशनल यूनिट. उसके बाद नो रिस्पॉन्स का है ऑक्सीटोसिन तो क्या करोगे? मसाज करोगे. फिर ऑक्सीटोसिन और मसाज साथ में करोगे. फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कार्बाप्रोस दोगे. कार्बाप्रोस से भी बात नहीं बनी तो क्या करोगे? बायमैनुअल मैनुअल कंप्रेशन दोगे. उससे भी बात नहीं बनी तो पहनाओगे मिलिट्री एंटी शॉक गारमेंट. इससे भी बात नहीं बनी तो क्या करोगे? बकरी बैलून कैथेटर या फिर कॉन्डम कैथेटर लगाओगे. इससे भी बात नहीं बनी तो क्या है? मल्टी पैरा होगी तो हिस्टेक्टमी कर देनी है. प्राइमरी पैरा होगी तो क्या करना है? कंप्रेशन बाय बी लिंच सूचर या फिर यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन. यूट्रन आर्टरी भी लाइगेट कर दी, ओवेरियन आर्टरी भी लाइगेट कर दी और उसके बाद नहीं आया अगर आराम, हिस्टेक्टमी कर दो और उसके बाद क्या कर दो? अंदर डाल दो अम्ब्रेला पैक और पैराशूट पैक. डन डना डन डना डन डना डन. सर द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एपिसोड.
Episiotomy is very very important. Deliberate incision on posterior vaginal wall to increase the vulval output, to increase the vulval output, to increase the vulval output. ठीक है जी, vulval output, ठीक है. Deliberate incision on posterior vaginal wall to increase the vulval output. Sir, one incision is medial, one incision is medial incision. Medial incision is simple to give but not given. Why? बिकॉज सोचो, अगर तुम ऐसा इंसीजन लगा रहे हो, अगर तुम ऐसे इंसीजन लगा रहे हो, लगाते लगाते तुम्हें छींक आएगी, ऐसे कर दिया छींक, क्या फट जाएगा? अगर तुमने मीडियल इंसीजन, इफ यू आर पुटिंग अ मीडियल इंसीजन और लगाते लगाते छींक आएगी, एनल स्फिंक्टर के पास जाके तुमने छींक दिया और सारा स्फिंक्टर फाड़ दिया, तो क्या फाड़ दी तुमने? क्या फाड़ दिया तुमने? हिंदी में बोलो जरा, क्या फाड़ दिया? इसीलिए जो है, दिस इज मोस्ट सिंपल टू गिव बट नॉट गिवन बिकॉज देर इज ए हाई रिस्क ऑफ एनल स्फिंक्टर इंजरी, देर इज अ हाई रिस्क ऑफ एनल स्फिंक्टर इंजरी. नाउ दिस इज little difficult to give but most commonly preferred. Why? Because it is safe. So mediolateral incision is very much safe because it is also known as sphincter saving incision. It is also known as sphincter saving incision. इसलिए दोस्तों मीडियन वाला नहीं देना, वरना अच्छियां क्या हो जाएगा? अच्छियां. Then coming to the congenital malformation. Sir, congenital malformation can occur in the gestational diabetes. Can occur in the gestational diabetes. Never word को काट दो. Can occur in gestational diabetes. Most common malformation, congenital malformation, पीडिया में पढ़ा है VSD. क्या है? VSD. Most specific cardiac malformation would be sir TGA. क्या है? TGA. And most specific cardiac finding would be HOCM, hypertrophic cardiac myopathy. Sir, the best method to diagnose would be your congenital malformation will be your USG. And which scan you will do, sir? It is your TIFFA scan. It is your TIFFA scan. और कब करना है? congenital malformation को नापने के लिए क्या करना है? TIFFA scan करना है. और कब करना है तुम्हें? 16 से 20 वीक में करना है. 16 to 20 weeks, sir. And sir, remember, best method to predict the congenital malformation, HbA1c. एक होता है पंजा छक्का, 5.6 हुआ तो नॉर्मल, अगर छक्का पंजा हुआ 6.5 से ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल. कैसे है? पंजा छक्का, छक्का पंजा, पंजा छक्का, छक्का पंजा. ये जो एडवर्टीज करने आ रहे हैं, ये तुम्हें बहकाना चाह रहे हैं, पर तुम बहकोगे नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं. कोई इस पे क्लिक नहीं करेगा भाई, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? ये जो हमारे स्पॉन्सर है ना, टेंडर वाले आ रखे हैं यहाँ पे, है ना. Best method to prevent the congenital malformation will be folic acid and strict control of glucose. Best method to predict the malformation would be HbA1c. HbA1c किसके लिए करते हैं? शुगर के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं? शुगर के लिए करते हैं, ठीक है? शुगर है ना, शुगर, शुगर है कैसी? शुगर की बीमारी, डायबिटीज के लिए कौन सा? HbA1c. क्योंकि ये 3 महीने तक एक्यूरेसी देती है. कितने महीने तक? 3. इसमें क्या निमोनिक है? पंजा छक्का, छक्का पंजा. छक्का पंजा हुआ तो मतलब डायबिटीज है, पंजा छक्का हुआ तो डायबिटीज नहीं है. दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल. हाउ टू प्रिवेंट? Best method to prevent the congenital malformation, sir, would be your folic acid and strict control of the glucose. Management of shoulder dystocia, very important, sir. Management of shoulder dystocia, remember the clinical suspicion by the turtle sign. Turtle sign कैसा होता है? जैसे तुमने जोर लगाया, बच्चे का सर बाहर, जैसे जोर हटाया, बच्चे का सर अंदर. This is known as turtle sign. Management of shoulder dystocia, clinical suspicion by हेलो, 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 हेलो.
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नो साउंड। लता मंगेशकर की आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हेलो जी, एवरीथिंग फाइन फ्राई योर साइड? सब ठीक है? आवाज आई? सुना सुना है ये रस्म वफा है, रा 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 रा। कितनी मेहनत कर रहे हैं यार हम लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। मतलब माशाल्लाह क्या मेहनत लगी हुई है। मतलब सुबह से 12 बजे से बैठे हैं, 7 बजने को आ गए और मतलब हमारा जोश ठंडा नहीं हो रहा। कुछ तो कीड़ा होगा हम एफएमजीज में, जो 6 साल के कोर्स को 6 महीने में पढ़ डालते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर पारस नाम का सरफिरा आदमी आया, उसने 100 घंटे में नोट्स बना दिए जो बहुत काम आते हैं। मतलब अलग अलग है, कुछ तो अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं यार हम, मानो या ना मानो। दोस्तों लेट्स चलो। मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टॉर्शिया सर, क्लिनिकल सस्पिशन बाय द टर्टल साइन। जैसे सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाया तुम्हारा टर्टल बाहर, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाते ही टर्टल बाहर। फर्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट सर, फर्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट वुड बी मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। सर व्हाट इज मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर? देखो कई बार क्या होता था बचपन में हमें, जब क्रिकेट बॉल की इंजरी आती थी, क्रिकेट बॉल की इंजरी होती थी, तो हमारा दोस्त क्या करता था, सडनली हमारी टांगों को क्या करता था, छाती के पास फ्लेक्स करता था, ठीक है, और ऐसे जोर लगाता था। एबडक्शन ऑफ द लोअर लिम्ब क्या करते थे, सडन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, सडन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन। दिस इज रॉबर्ट्स मैन्यूवर, दिस इज रॉबर्ट्स मैन्यूवर। इसमें क्या ना, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। if Mac Roberts maneuver fails, then you will go for the another maneuver sir, and the name of maneuver, और माता करा तो दिया, शोल्डर डिस्टोशिया गेन ही तो है। शोल्डर डिस्टोशिया मीन शोल्डर फंस गया अंदर। शोल्डर फंस गया तो कैसे पता चलेगा, प्रेशर लगाओगे ऊपर से तो शोल्डर ऐसे बाहर आ जाएगा। जैसे तुम रिट्रैक्ट करते हो, शोल्डर तुम्हारा टर्टल बाहर आता है, ऐसी तरीके से शोल्डर बाहर आ जाएगा। बार बार शोल्डर बाहर अंदर, दैट इज टर्टल साइन, मतलब शोल्डर अंदर फंसा है। सर बाहर आ रहा है पर तुम्हारा शोल्डर अंदर ही फंसा हुआ है। सर बाहर आ गया मतलब शोल्डर अंदर ही फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब यही है क्या, कि तुम्हारा शोल्डर डिस्टोशिया है। तो सबसे पहले बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट कॉमनली रॉबर्ट्स मैन्यूवर। क्या है, रॉबर्ट्स मैन्यूवर। रॉबर्ट्स मैन्यूवर में क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे दोनों टांगे लेते हैं, दोनों टांगों को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, और क्या करते हैं, एबडक्शन। ऐसे दोनों, अब मैं करके दिखा नहीं सकता टेबल पे, फ्लेक्शन एंड एबडक्शन। ये देखो ये कर रही है ना हमारी दोस्त, ये लगी हुई है ना, देखो क्या कर रही है, ये एबडक्शन एंड फ्लेक्शन कर रही है सडन। दिस इज नोन एज मैक रॉबर्ट्स। अब मेरा रॉबर्ट अगर फेल हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कॉर स्क्रू, दैट इज वुड्स कॉर स्क्रू मैन्यूवर। अगर मेरा मैक रॉबर्ट फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, वुड्स कॉर स्क्रू मैन्यूवर सर। एंड वुड्स कॉर स्क्रू मैन्यूवर में क्या करना था, यू हैव टू रोटेट, घुमा घुमा के निकलना है। कैसे, घुमा घुमा के निकलना है। कैसे, घुमा घुमा के निकालना है, रोटेट द शोल्डर 180 डिग्री। अगर मैक रॉबर्ट भी फेल हो गया, वुड्स कॉर स्क्रू भी फेल हो गया, फिर तुम क्या करोगे, जावा नेली। और जावा नेली पता क्या होता है, सर को अंदर डालना है और सिजेरियन सेक्शन करके बच्चा बाहर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया इज पोस्टपार्टम हेमोरेज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया वुड बी postpartum hemorrhage, and most common neonatal complication of shoulder dystocia would be brachial plexus injury. Can you tell me which splint is used in the brachial plexus injury? कौन सी स्प्लिंट यूज करोगे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में, जल्दी से बताओ कौन सी स्प्लिंट यूज होती है, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन भी है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, विच स्प्लिंट इज यूज्ड, विच स्प्लिंट इज यूज्ड, जल्दी, विच स्प्लिंट इज यूज्ड, चलो जल्दी बताओ।
Aeroplane. Aeroplane. Then the next topic is forceps delivery. And the next topic is forceps delivery. Sir, prerequisite क्या है forceps delivery कराने से पहले? This is highly important topic. I want you, all of you, to pay attention. And before paying attention, चलो तुम्हें सुनाता हूँ प्यारी सी शायरी. नजर को बदल दो नजारे, नजर को बदलो तो नजारे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे अपने आप मिल जाते हैं। दुन 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 दुन। क्या बात है, क्या बात है। फोर्सेप्स डिलीवरी पूरे जोश के साथ पढ़ना है। जस्ट 6 days एंड वी आर गोइंग टू पास। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम हैं एफएमजी। 6 महीने में पूरी एमबीबीएस खत्म करने वाले एफएमजी। हमें अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, पास होकर दिखाना है और क्या बोलना है? आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। फोर्सेप्स डिलीवरी प्री रिक्विजिट क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेशन। स्टेशन तुमने पढ़ा था एट इस्चियल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इस्चियल स्पाइन के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज स्टेशन। और दोस्तों याद रखना प्री रिक्विजिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेशन शुड बी मोर देन +2, इक्वल टू और मोर देन +2, इक्वल टू और मोर देन +2, एंड membrane should be ruptured, and membrane should be ruptured, and there should be good uterine contraction and internal os diameter, internal os should be completely dilated. This is a prerequisite for the forceps delivery. This is a prerequisite for the forceps delivery, sir. Now indication of forceps delivery. प्रीरिक्विजिट तुम्हें पता चल गई, स्टेशन +2 होना चाहिए, मेम्ब्रेन शुड बी रप्चर्ड, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, इंटरनल ऑस शुड बी डायलेटेड कंप्लीटली, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इंडिकेशन की बात करेंगे, मैटरनल डिस्ट्रेस एंड फीटल डिस्ट्रेस। इंडिकेशन की क्या बात करेंगे? मैटरनल डिस्ट्रेस या फिर फीटल डिस्ट्रेस के केस में हम क्या करा सकते हैं? फोर्सेप्स डिलीवरी। सर traction force is very important and previous year question of your exam. Primi gravida means she is becoming now pregnant for the first time. Multi means she has delivered it many times. प्राइमी के अंदर फोर्स रिक्वायर्ड इज मोर एज कंपेयर टू मल्टी ग्रेविडा, क्योंकि मल्टी का अब ढीला हो चुका है, प्राइमरी में अभी थोड़ा फोर्स ज्यादा लगेगा। सो ट्रैक्शन फोर्स इन द प्राइमी ग्रेविडा वुड बी 18 to 20 kg एंड मल्टी ग्रेविडा इट विल बी 13 kg ओनली। Maximum pulls required will be 3 only. Sir, the maximum pull required will be 3 only. If it fails, then you will go for the cesarean section. If you fail, then you have to do cesarean. So forceps delivery is complete. Now coming to the vacuum delivery. Sir, vacuum delivery में ciliatic cup is a image based question. Ciliatic cup is the image based question. और ये कहां पे लगता है? यहां पे। कहां पे लगता है? यहां पे। applied on the sagittal suture 3 cm anterior to the posterior frontinal. ठीक है। तो याद रखना सक्शन प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल सक्शन प्रेशर इन द वैक्यूम डिलीवरी वुड बी 0.2 kg per square centimeter. But optimum suction pressure is 0.8 kg per square centimeter. The maximum pulls allowed is 3 only. Maximum pull allowed is 3. In the forceps delivery also, the maximum pull allowed was 3 only. And if you fail, then you will go for the cesarean section. You will go for the cesarean section. Now, what is the advantage of vacuum delivery? Let me take you on that topic. The advantage of vacuum delivery. ठीक है, सुनो अब मेरी बात। वहां पे जो तुम्हारी फोर्सेप्स डिलीवरी थी उसमें 10 सेंटीमीटर डायलेशन चाहिए था, बट अभी हमारे जो क्या कहते हैं उसे वैक्यूम डिलीवरी के अंदर लिखा हुआ है ओनली 6 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेटेशन इज इनफ। इसके अंदर लेस मैटरनल इंजरीज होती है, बट फोर्सेप्स के अंदर मोर मैटरनल एंड फीटल इंजरीज होती हैं। नो एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड फॉर द वैक्यूम इंजरी। दैट इज व्हाई 3 इडियट मूवी के अंदर है ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ला रा रा ला 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 ला।
ra ra la la ra 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 ra. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. ठीक है, तो क्या है डिसएडवांटेज, क्या क्या है, can't be used in the vertex, can be only used in the vertex, can't be used in the fetal distress. अगर फीटस डिस्ट्रेस होगा तो उसके सर में कप लगा के नहीं निकालने का, और इसमें फीटल इंजरीज ज्यादा होती हैं किसके अंदर, तुम्हारा वैक्यूम के अंदर। क्यों, क्योंकि तुम्हारे फीटस के सर के ऊपर लगा के निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज फीटल इंजरीज एंड कांट बी यूज्ड इन प्रीमेच्योरिटी। तो तुम्हारा वैक्यूम डिलीवरी नहीं हो सकता वर्टेक्स पोजीशन में। इट कांट बी यूज इन द फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस या मैटरनल डिस्ट्रेस की इंडिकेशन क्या थी, क्या इंडिकेशन थी, फॉरसेप्स डिलीवरी। क्या इंडिकेशन थी, फॉरसेप्स डिलीवरी। क्या थी, फॉरसेप्स डिलीवरी। डन डना डन डना डन डना डन। चलो काट दो इसको भाई। एब्डोमिनल इंसिजन की बात करेंगे। Most common incision, abdominal incision, has been asked in the exam. That is none other than phenistile incision. That is given 2 centimeter above the pubic symphysis. This is known as phenistile incision, and phenistile incision is an abdominal incision which is given above 2 centimeter of the pubic symphysis, and this is low transverse. This is what, low transverse. This is low transverse. ठीक है, then we are giving uterine incision, sir. Uterine incision, 2 incisions are given. What is upper segment cesarean section, one is lower segment. और lower segment में क्या है, most common कर incision. कौन सा incision है, कर incision. Lower segment में कर incision दिया जाता है। Uterine incision lower segment में कर incision दिया जाता है। कौन सा वाला है, कर incision। ये विपुल पटेल ने किसी के कपड़े खोल के भेज दिए हैं दोस्तों, मुझे नहीं पता किसके, जिसके भी हैं अच्छी बात है। Impending uterine, अगर यूट्राइन रप्चर होने वाला हो, impending का मतलब about to rupture, impending means it is about to rupture now, impending means it is about to rupture, then sir there will be fetal tachycardia। impending यूट्राइन रप्चर के अंदर क्या होगा, fetal tachycardia, and यूट्राइन रप्चर अगर हो गया तो then there is fetal bradycardia, then there is fetal bradycardia, fetal bradycardia। then management of uterine rupture is immediate laparotomy. If there is a uterine rupture, sir, you will go for the immediate laparotomy, you will go for the immediate laparotomy। then sir coming to the molar pregnancy, आने वाला है, अंत होने वाला। molar pregnancy, abnormal proliferation and degeneration of the chorionic tissue। molar pregnancy, molar pregnancy is of 2 types, complete mole and partial mole। complete mole we are going to talk about right now, and friends, complete mole, remember, or it is also known as hydatiform mole or vesicular mole। Sir, what is happening in complete mole, your empty ova is fertilized by a sperm, and karyotyping, please change, it is 46XX, 46XX is a karyotyping, 46XX is a karyotyping, and there are grape like vesicles। क्या है, grape like vesicles दोस्तों। and on USG what you will see, this is your MCA exam question, this is your snowstorm appearance। क्या है ये, snowstorm appearance, complete vesicular mole। किसकी बात कर रहे हैं, complete vesicular mole or hydatiform mole, or it is also known as vesicular mole, sir। the empty ova is fertilized by a sperm, and what is the karyotyping, you will see here, it is a 46XX, and there will be grape like vesicles। and beta HCG, if I ask you what is a beta HCG value, sir, your beta HCG would be more than 10 raised to power 5 international units per liter, more than 10 raised to power 5, snowstorm appearance 46XX, empty ova is fertilized by a sperm, complete mole। क्या है ये, complete mole। then coming to the partial mole, sir, partial mole क्या होता है, देखो partial mole what is happening, एक मिनट पानी पीने दो फिर पढ़ाता हूं। sir, what is partial mole, 1 ova plus 2 sperms are fertilized। एक ओवा को कितने स्पर्म ने फर्टिलाइज करा, 2 स्पर्म फर्टिलाइज, और जाइगोट बना तुम्हारा फेवरेट 69XXY। क्या बना, 69XXY। if 1 ova
प्लस 2 स्पर्म्स आर फर्टिलाइज, जाइगोट क्या बना 69XXY, 69XXY। सिम्टम क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग पर वेजाइना प्लस हाइपर एमेसिस, उल्टी यानी का मन बहुत ज्यादा करता है, एंड बीटा HCG इट इज 10 रेज़ टू पावर 5, लेस देन 10 रेज़ टू पावर 5। पार्शियल मोल बीटा HCG 10 रेज़ टू पावर 5 से कम होता है, कंप्लीट मोल में बीटा HCG इज मोर देन 10 रेज़ टू पावर 5। Sir, investigation of choice both in partial and complete would be your USG, and sir, investigation of choice for follow-up both in partial and complete would be your beta HCG, and gold standard investigation is always histopathology, is always your fit histopathology। मैनेजमेंट, इफ मल्टीपैरा हुई तो काट दो हिस्टेक्टमी, और अगर प्राइमी हुई तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन। हमेशा मल्टीपैरिटी नाम का क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर और पूछे क्या ट्रीटमेंट दोगे मल्टीपैरा में, सर 99.9% योर आंसर इज hysterectomy, total abdominal hysterectomy, but primary में you have to save the uterus, that is why you will do what, suction evacuation। done dana done dana done। Sir, then coming to the choriocarcinoma, investigation of choice will be beta HCG। choriocarcinoma, sir, investigation of choice will be beta HCG, and the most common symptom would be irregular bleeding। Choriocarcinoma staging is important। Number 1 stage, it is in the uterus, remember, see here, number 1 stage it is in the uterus, number 2 it is going to the fallopian tube, ovaries and vagina। Number 1 it is uterus, number 2 is fallopian tube, ovaries and vagina, number 3 it goes to lungs, number 3 it goes to lungs, then goes to brain or liver, then goes to brain। तो कोरियोकार्सिनोमा की मेटास्टेसिस कहां होती है, लंग में होती है, एंड इन द रेडियोलॉजी चैंटिंग आई हैव डिस्कस कि लंग में अगर कोई भी कैंसर मेटास्टाइज होके आता है, विच अपीयरेंस यू विल सी, सर यू कैन सी इमेज देयर, दैट इज योर कैनन बॉल अपीयरेंस, सर दैट इज योर कैनन बॉल अपीयरेंस। एक्सरे में क्या देखने मिलेगा, कैनन बॉल अपीयरेंस। एंड सर देयर इज अ स्कोरिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। Score, if it is less than 6, if score is less than 6, the drug of choice would be methotrexate, the drug of choice would be methotrexate, drug of choice will be methotrexate। and if score is more than 7, if score is more than 7, you will go for the Bagshaw regime। We are treating choriocarcinoma, score less than 6, you will go for the methotrexate, if score is equal to or more than 7, you will go for the Bagshaw regime, you will go for the Bagshaw regime, Bagshaw regime, ठीक है। सो गाइस रिमेंबर, बैगशॉ रिजीम क्या है, बैगशॉ रिजीम का निमोनिक है ई मैको, क्या निमोनिक है, ई मैको। ई से क्या है, एटोपिसाइड, एम से मेथोट्रेक्सेट, ए से एक्टिनोमाइसिन डी, सी से साइक्लोफॉस्फामाइड, एंड ओ से ऑक्सीटोसिन। सो बैगशॉ रिजीम का क्या निमोनिक है, ई मैको, क्या निमोनिक है, ई मैको। Then sir, it is a repeated question of, it is an integrated question and repeated question of obs-gynae and your pediatrics। hydrops fetalis, swollen yellow fetus, and what things you have to remember, pericardial effusion मतलब लंग्स के अंदर पानी, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन मतलब लंग्स में पानी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब हार्ट में पानी, एसाइटिस मतलब पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, और स्कैल्प एडिमा। इन चार में से अगर कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स आर प्रेजेंट, देन योर डायग्नोसिस इज हाइड्रोप्स फेटालिस, योर डायग्नोसिस इज हाइड्रोप्स फेटालिस। सर हाउ यू हैव टू मेक द डायग्नोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एसाइटिस या फिर स्कैल्प एडिमा। कैसे, छाती में पानी, हार्ट में पानी, पेरिटोनियल फ्लूइड में पानी या फिर सर में पानी। इन सारी चारों जगहों में से 2 या 2 से ज्यादा जगहों पे जहां पे भी पानी होगा, योर आंसर इज हाइड्रोप्स फेटालिस, हाइड्रोप्स फेटालिस। एंड फीटस वुड बी स्वॉलन येलो फीटस, कैसा होगा, स्वॉलन येलो फीटस। एंड अर्लिएस्ट साइन ऑफ हाइड्रोप्स वुड बी स्कैल्प एडिमा,
अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोफ विल बी स्कैल्प एडिमा एंड सर ऑन यूएसजी, इतना बड़ा सर है हमारे बुद्धा जी महाराज का, बुद्धा महाराज है, बुद्ध देव है, उनका है बुद्धा साइन, तो इसीलिए बुद्धा जी भी हमें क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। थैंक यू बुद्धा जी, हम सभी को पास करा दो प्लीज, हम 4 तारीख को पास होने वाले हैं, हमें आशीर्वाद दो। Earliest sign of hydros would be scalp edema. The earliest sign would be scalp edema and USG पे क्या देखने मिलेगा, बुद्धा साइन, क्या देखने मिलेगा, बुद्धा साइन। फिर एक टेस्ट होता है indirect Coombs and Coombs टेस्ट। Indirect and direct Coombs test is for the antibodies, RH antigen के लिए होता है, indirect is for the maternal antibodies and direct is for the fetal antibodies, and also for the hydros fetalis you will do for the कैल्यूअर-बट्टे और एसिड एल्यूशन टेस्ट, कैल्यूअर-बट्टे और एसिड एल्यूशन टेस्ट। सर देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, most probably it would be last topic, that is purpurium. Congratulations to all of you who all are there with me till this time. Remember me, रास्ता कठिन हो सकता है पर मंजिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली तुम सबकी। इमेजिन योरसेल्फ 4 तारीख के बाद, पास होने के बाद तुम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, सुबह मम्मी टिफिन पैक करके दे रही है, हॉस्पिटल में खाना खा रहे हो, पेशेंट्स को साथ डील कर रहे हो, इन किताबों से जो गेन करा है, इस चैंटिंग से जो गेन करा है, या अपनी कोचिंग से जो गेन करा है, उसको तुम वहां अप्लाई कर रहे हो। फिर वो पेशेंट जाके तुम्हारी तारीफ कर रहा है तुम्हारे एरिया में कि फलाना डॉक्टर कितना बढ़िया है, इस दिन को लाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर बनना आसान नहीं है, सच में आसान नहीं है, इतनी डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। यहां बैठना, बातें करना, दूर से कमेंट करना बहुत आसान है, क्या कर रहे हैं, अयाशी करके आए बाहर से, भैया हमने अयाशी करी, हम मानते हैं, पर हमने पढ़ाई जी तोड़ मारी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अयाशी की जगह अयाशी करी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई करी, हम हैं कलरफुल एफएमजी। परप्यूरियम क्या होता है दोस्तों, इसी खुशी के साथ परप्यूरियम स्टार्ट करेंगे, नया जोश, नया दिन, और आज कंप्लीट करेंगे ऑब्स एंड गाइन। Perpurium 6-week period after the delivery in which system or the organ return to the normal. System or organ return to the normal. The process of return is known as involution. The time period is known as perpurium, that is 6 weeks. Now, uterine height. Sir, your uterine height just after the delivery. See, uterine weight just after the delivery is 1000 grams. डिलीवरी में टाइम पे कितना होता है, 1000 ग्राम। क्या होता है, 1000 ग्राम। डिलीवरी पे 1000, 1 वीक के बाद 500 ग्राम का हो गया, 2 वीक के बाद 300, 3 वीक के बाद 100, और 6 वीक के बाद यूट्रस विल बिकम, दिस इज एफएमजी एग्जाम क्वेश्चन, after how many weeks the uterus will become a normal pelvic organ according to the weight. Sir, according to the weight it will become normal by 6 weeks. And what is the normal weight of the uterus? Sir, your answer is 60 to 70 grams. Your answer is 60 to 70 grams. Your answer is 60 to 70 grams. Now, uterine height after the delivery, remember 3.5 centimeter above the pubic symphysis. After 24 it becomes less. pelvic organ कब बनता है, after 10 to 12 days. कब बनेगा ये pelvic organ, after 10 to 12 days this will become your pelvic organ. This will become your pelvic organ. तो नवाने हाइट के हिसाब से 10 से 12 दिन में, बट वेट के हिसाब से यूट्रस 5 से 6 वीक में नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। डन डना डन डना डन। देन कमिंग टू द लोकिया, क्या है लोकिया? लोकिया क्या है? पोस्टपार्टम डिस्चार्ज अप टू 2 वीक्स। इट इज पोस्टपार्टम डिस्चार्ज अप टू 2 वीक्स। गाइस रिमेंबर 1 to 4 days, 5 to 9 days, and 10 to 15 days. 1 to 4 days, 5 to 9 days, and 10 to 15 days, and 10 to 15 days. 1 to 4 days RBC will come, and RBC किस कलर की होती है? रेड कलर की। That is why it is known as लुसोरा रुब्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लोकिया रुब्रा। क्या बोलते हैं? लोकिया रुब्रा। 5 to 9 days WBC will come, sir, and WBC is of what color? WBC is of yellow color. इसीलिए इसको क्या बोला? लोब्रा, अरे यार, एक लोकिया सिरोसा. It is known as लोकिया सिरोसा. Very sorry. 10 to 15 days decidua will come, and decidua is of white color. It is known as lochia alba. Lochia alba. The question has been asked from this
1 to 4 days आरबीसीज रेड कलर की होती है तो लोकिया रुब्रा। 5 to 9 days WBC येलो कलर की होती है तो लोकिया सिरोसा। 10 to 15 days decidua is there and white color discharge will come, that is known as लोकिया एल्बा। डन डना डन डना डन, खत्म। अगले वाले का बता रहा हूं करना क्या है। अगले वाले का, इसको सर्वाइकल कैंसर को क्या करना है तुम्हें, एक मिनट रुको। डॉक्टर पारस सिंह जामवाल, ये YouTube पे 5 मिनट्स की वीडियोस आई हैव मेड, वॉच देम सेपरेटली, प्लीज सब्सक्राइब दिस, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसके अंदर ये भी मिल जाएगी तुम्हें। नीचे जाओगे तो सर्वाइकल कैंसर, ये सारे बल्बल क्या सब मिल जाएगा इसमें। 2-3 कैंसर कराए हैं मैंने। डॉक्टर पारस सिंह जमवाल, ठीक है। एंड यू ऑल नो P Jamwal 7 फॉर एनी क्वेरीज एंड एनीथिंग। टुडे इज द लॉन्गेस्ट सेशन वी हैड, 7 hours 30 minutes, 7.5 घंटे लाइव आए हम लोग। ये जोश कभी कम नहीं होगा। ये जो मेरी मेहनत है इसको प्लीज वेस्ट मत करना। इस पैगाम को दूर तक लेके जाना है, सारे FMGs को पास कराना है और सबका मुंह बंद कराना है कि हमने अयाशी नहीं करी, हमने पढ़ाई करी है दोस्त। क्या करी है? पढ़ाई करी है, ठीक है। और बाकी दोस्तों, मोहब्बत किससे और कब हो जाए अंदाजा नहीं होता। मोहब्बत किससे और कब हो जाए अंदाजा नहीं होता। ये वो घर है जिसका दरवाजा नहीं होता। मोहब्बत किससे और कब हो जाए अंदाजा नहीं होता, और ये वो घर है जिसका दरवाजा नहीं होता। इस घर का कोई दरवाजा नहीं है, सबके लिए खुला हुआ, दिल सबके लिए खुला हुआ दोस्तों। बाकी अपना प्यार बरसाते रहिए। डू रिमेंबर मी इन द प्रेयर्स। हमारे इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करिए जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सपोर्ट अस। कोई भी आपका जूनियर अगर एडमिशन से रिलेटेड पूछना चाहता हो, प्लीज, दिस इज टीम NLC, ग्रेट फैकल्टीज, ग्रेट मेंटर्स, ऑल आर हेयर। प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो, किसी को देना हो, प्लीज विद द फोल्डेड हैंड्स हमारी जो है सेवा का मौका दिया जाए एक बार। हम सेवा करना चाहते हैं एंड रियली अ ट्रू विशर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये इतिहास आज जो हमने बनाया है इतने घंटे बैठ के, ये शायद ही हिस्ट्री ऑफ FMG में कभी नहीं हुआ है। वी आर वेरी लकी पीपल कि हमने ये साथ में करा है। और हम बोल सकते हैं कि हम तो YouTube पे 8-8 घंटे बैठा करते थे लाइव में। योर जूनियर्स विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू गाइस। बी इंस्पायर to the world, to the nation needs you very soon and you all are on the right path and you all are going to pass sir. love you all ट्रक भर के। इतना प्यार, ये आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सपोर्ट दिखाने के लिए, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, जल्दी डॉक्टर बनाए। और अगली बार तुम, जब मैं चैंटिंग ले रहा हूं दूसरे बच्चों के लिए, तो वहां पे आके तुम मुझे, जैसे अभी आते हैं ना बच्चे कि सर मैं पास हो गया, अभी भी देखो कितना प्यार है। दिस इज ऑल्सो फैमिली। ये मेरी और आपकी एक फैमिली क्रिएट हुई है चैंटिंग के जरिए। हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, आज हम एक दूसरे को जानते हैं। आज तुम जानते हो कि डॉक्टर पारस कौन है, मैं जानता हूं चैट के थ्रू। मुझे बड़े बड़े नाम, मेरे को मोटा मोटा सबके नाम पता है कि ये, और अभी भी याद आ जाता है ये लड़का या लड़की तब कमेंट किया करते थे जब हम तैयारी करा करते। ये हसीन पल, ये गाना, नाचना, ये सारे पार्ट ऑफ मेमोरीज हैं दोस्त, यही साथ रह जाएंगी। बाकी तो वी विल अर्न फॉर श्योर, और माँ बाप को हैप्पी करना है दोस्तों। सबको अलविदा बहुत बहुत, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द FMGs in the Hyderabad, you can come for the 3 days free offline chanting in NLC Hyderabad, ठीक है। So let's stop this stream right now, and on second and third I'll be taking again quick maha chanting, day 1 day 2, quick maha chanting for all of you. Love you all, चलो जी, डन। थैंक यू सो मच।